टाइम इज कम यार भाई. मतलब this has to be the day जहां things change for Chelsea. And I know I am late usual से भाई. मैं 15-20 मिनट लेट हूँ और उससे भी ज्यादा इनफैक्ट भाई. बट क्या करें भाई, that is life sometimes. As a Chelsea fan भाई, you have to be ready, but at the same time, there are something which kind of motivates you more, motivates you less. Or to be very honest भाई, YouTube YouTube मुझे बेसिकली प्रॉब्लम दे रही थी, इसलिए मैं लेट हूँ. क्या हुआ, आई वॉज ट्राइंग टू बेसिकली मेक श्योर कि नोटिफिकेशन आए आप लोग को, ठीक है. और नोटिफिकेशन मैंने देखा कि नहीं आई है, तो आई काइंड ऑफ डिलेड बाय 10 मिनट्स थिंकिंग कि अब नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन नहीं आई. तो अगेन अपॉलजीज फॉर दैट, लेकिन होपफुली आप लोग सब बने रहे. एंड एवरीवन हु जॉइन द स्ट्रीम, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग. भाई सब लोग जो भी यहाँ पर आए ना, यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं आई है बहुत लोगों को, मैंने सुना है इन द लास्ट 24 आवर्स. तो भाई होपफुली all you can do is you can just quickly like the stream as well as like my community post. मैंने community post भी डाला है मेरे community page में, तो if you can like it भाई, वही आपकी notification होगी यार, सब लोग के लिए होगी. Again much love to everyone, almighty fam. But yes, lineups मैं देख ही रहा था. Tiger Beach, this manager, I tell you Ankit, feels like breakup right now. So much support, so much efforts, investment, but the results, well, who on earth plays this lineup well? देखते हैं भाई. देखिए अब मैं थंबनेल में डाला हूँ सर्टेन काई हैवर्ट्स. यस, बहुत सारा क्वेश्चन मार्क है वहां पर, लेकिन भाई एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू सपोर्ट आवर टीम. एंड एट द एंड ऑफ द डे भाई, स्पर्स चेल्सी भाई, ये गेम में इफ पीपल आर नॉट मोटिवेटेड इन आवर टीम, देन व्हिच मैच और इवन अ मैनेजर, टू बी ऑनेस्ट. एंड यस, एब्सोल्युटली, लेट्स हैव इट. इवन न्यूट्रल्स, आई वुड लव टू नो योर रिएक्शन. अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीवन हियर भाई, जो भी लोग आए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अगेन. बट इफ आई कैन रिक्वेस्ट एवरीवन भाई, एक लाइक बटन दबा दीजिए. लाइक बटन है ऑन द स्ट्रीम एज वेल एज माय कम्युनिटी पेज एज वेल एज माय सोशल मीडिया, तो so that YouTube kind of promotes, क्योंकि notification नहीं आई. I really request you all, it's my humble request everyone, please like the stream and hit that like to the community post. Absolutely, Rupak, Tiger Beast, Gaurav, bhai, absolutely, Aditya, Subhajit, Derain, of course, Pudin, अनमोलदीप भाई, बहुत लोग आए हैं. अगेन मैं देख रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स है इन टर्म्स ऑफ द फॉर्मेशन. चलो देख ही लेते हैं इससे पहले कि बेसिकली मैं टाइम वेस्ट करूं. भाई लेट्स लुक एट इट एज इट इज. आई एम लेट बाय अ कपल ऑफ मिनट्स मोर. तो भाई दिस इज द लाइनअप. यस, एक्साइटमेंट, आई नो, डिसअपॉइंटमेंट. वेयर इज बाडेशिले? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन. वेयर इज बाडेशिले? और यहाँ पर देखिए, ही इज ऑन द बेंच. अब वो 3 द बैक, मे बी आप बोल सकते हो 3 द बैक के लिए कुलीबाली इट्स नॉट सूटेड, लेकिन इट्स नॉट 3 द बैक इधर. तो क्या कर रहे हैं भाई? इज इट समथिंग एल्स? हो सकता है दैट कुलीबाली फाइनली थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस किया है बैक टू बैक. दैट्स द ओनली थिंग आई कैन थिंक ऑफ. प्लस एक बिग गेम है, इट्स अ ह्यूज डर्बी, लेट्स बी रियल. अगर आज चेल्सी हारती है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, यस, यहाँ पॉटर को एश्योरेंस मिला है, बट द रियलिटी इज दैट वी हैव नॉट बीटन एनी टॉप 10 साइड, स्पेशली स्पर्स के साथ जो घर पे था 2-2. वी शुड हैव वन दैट गेम, एंड ऑफ कोर्स लंदन डर्बी, स्टफ लाइक दैट. मुझे लगता है विद द टेबल, और कल जो हुआ था एस्टन विला के साथ में, आप देखिए, और ऑन द राइट हैंड साइड, we can potentially go to bottom half. There is a possibility very soon. तो let's be real. और इसलिए शायद maybe he has gone with experience, और जो last week kind of better किए थे in terms of defense, I'm guessing that, इसलिए शायद कुलीबाली के साथ गए. Again मैं agree नहीं करता. जियश के साथ, well, again, हाँ, definitely मैं expect कर रहा था कि मुड्रिक स्टार्ट करेंगे, but अब जियश against Spurs has done well. Loftus-Cheek, well, again चेंज किया है with a Kovacic to a Loftus-Cheek. सिंपल बात है यार, लॉफ्टस-चीक थोड़ा फिजिकलिटी लाते हैं वर्सेस कोवाचिच, और ही इज अ कॉमन बॉय. तो भाई कहीं ना कहीं इट्स अबाउट स्पर्स चेल्सी वाला जो है ना, वहां पर आई थिंक इट काइंड ऑफ इज ओके. लाइक कम ऑन, लॉफ्टस-चीक इतने बुरे नहीं होने चाहिए माय ओपिनियन. यस, जकारिया मैं होप कर रहा था. अगेन मैं कमेंट लेने वाला हूं आप लोग के, मैं देख रहा हूं आपके भी कमेंट सेम है भाई. अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीवन, आई मीन लिटरली एवरीवन भाई, आई सिंसियरली रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के मैं ना, आई नो आई शुड बी डूइंग दिस, आई एम लिटरली रिक्वेस्टिंग ईच एंड एवरीवन, if everyone here on the stream, bhai, it's great to have 7,500 subscribers and I love you all absolutely, but everyone, it's a Chelsea match day yaar, it's a London derby, so if aaj nahi aayenge log, bhai kab aayenge support ke liye? To bhai sab log aa jaiye. wo kaise hoga? Everyone watching the stream, 1 second lagta hai yaar, it doesn't take a buck. All you need to do is hit that like button, and if you can share it in your WhatsApp groups, if you can basically retweet along with this link to the description, it'll be great yaar, it'll be absolutely fantastic. More importantly, agar aap community post ko like kar sakte ho, let me just take a quick look, because that is YouTube for me. So YouTube mere liye notification nahi di hai mere subscribers ko aaj, so that is why I'm requesting this way. So I hope everyone can understand the situation. So I hope that is really making sense to you all. Yes, I know the match is more important than anything, reactions are more important than anything, lekin main dekh raha hu bhai, again
आई कैन सी माय कम्युनिटी पोस्ट में 8 लाइक्स है, यहाँ पर 13 लोग देख रहे हैं. एवरीवन कैन टेक अ क्विक सेकंड, go to my community post on Almighty Blues FC and just like that community post, जो latest community post मैंने किया है, so that YouTube promote करे and tells that we are live as well and we talk Chelsea just for about 25 years. मैं तो speak करता हूँ, and of course on the channel I speak for about close to 2 years. Yes, we are getting close to 2 years very soon, but yes, absolutely भाई सब लोग हाँ, कुछ लोग का आई है अनमोल, कुछ लोग का नहीं आई है, वेरी स्ट्रेंज. रिमाइंडर नोटिफिकेशन में बोल रहा हूँ, पहले नहीं आई थी. बट यस, थॉट्स भाई, अगेन आई एम जस्ट गिविंग थॉट. लेट मी जस्ट सी ऑल आप लोग क्या बोल रहे हैं. कुलीबाली यार, व्हाई नॉट प्ले फफाना, ही वाज बीस्ट अगेंस्ट साउथहैम्पटन. वेरी गुड पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है. साउथहैम्पटन वाज वन ऑफ द फ्यू, सॉरी, साउथहैम्पटन में से फफाना वाज वन ऑफ द फ्यू पॉजिटिव्स from that game. So I am really surprised, if I'm being really honest about that. लेकिन again, बाडेशिले भी आप बोल सकते हो, but I think it's the other way around. I think it's about physicality versus Spurs. Again, मैं agree नहीं करता, लेकिन I'm just saying that Koulibaly physicality plus the fact that Koulibaly, finally has gotten थोड़ा सा form, आप बोल सकते हो, you can argue that. So maybe that is why he wants to continue that, to give him confidence. मैं बोल रहा हूँ again, अभी टाइम नहीं कॉन्फिडेंस देने का, अभी है टाइम टू काइंड ऑफ मेक श्योर दैट अ बेस्ट 11 प्लेज एंड डज वेल. बिकॉज यस, आई नो आप बोल सकते हो दैट कम ऑन, ईपीएल सीजन इज डन, लेकिन नहीं, अभी भी मैं बोलता हूँ विद लिवरपूल ड्रॉपिंग पॉइंट्स कल वापस से, आई थिंक देयर इज अ चांस टू गेट अ टॉप 6 एंड दैट्स द एब्सोल्यूट मिनिमम मेरे ख्याल से. आई डोंट नो, जीत जाए बस. एग्जैक्टली भाई, हुक क्रूक, दैट्स इंपॉर्टेंट. आरएलसी चेल्सी फैन को ले डूबेगा. धक धक हो रहा है, अरे भाई. I'll support Chelsea till they win UCL. Don't worry, Ankit. Anmoldeep, much love to you. I know that you're a Barca fan. Ankit, Ruben Loftus-Cheek as news of manager who says no. देखिए डरेन, विद रूबन लॉफ्टस-चीक मैं इतना नाखुश नहीं हूं, सच में बोलूं तो. यस, आई नो आई वांटेड जकारिया, मैंने खुद बोला था आज की सुबह के वीडियो में, लेकिन आई स्टिल फील दैट विद अ हॉयबर्ग, ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट सम फिजिकलिटी देयर. हाँ, वो फिजिकलिटी यूज नहीं करता अपना, लेकिन एटलीस्ट ही हैज दैट एबिलिटी. प्लस एक फैक्ट है कि ही नोज दिस Tottenham Chelsea वाला match more than maybe Zakaria is what I'm guessing. So I'm just trying to think. Potter के एंगल से एक बार सोच के देखते हैं. That might be one of the reasons. And again, जब Enzo Fernandez और Ruben Loftus-Cheek होता है in the middle of the park, कहीं ना कहीं Ruben Loftus-Cheek will get a lot of kind of responsibility to kind of take एक होता है एक नंबर 6 रोल, और Enzo Fernandez can do his job. Zakaria भी कर सकते हैं, don't get me wrong, लेकिन Zakaria और Kovacic they still drive with the ball. Ruben Loftus-Cheek को वो भी कर सकता है, लेकिन उसको आई थिंक बता सकते हैं that you have a job to do today and maybe that is the role that he's playing. I'm guessing. Again, आप आर्ग्यू कर सकते हैं then why not Madueke as well as Mudryk, but again Sterling impactful रहे थे लास्ट मैच में. yes, David Dato Fofana look better in my opinion लास्ट मैच में, लेकिन Havertz का थोड़ा सा इम्पैक्ट था, तो maybe that's why he's starting considering it's a big game. और Ziyech has done well against Spurs. तो ये सिंपल सा फंड है, और कुछ ज्यादा कुछ सोचने का नहीं उसमें. in terms of Spurs का लाइन on the other hand, well, I am surprised that Richarlison is starting again. सच में बोलता हूँ तो, because last match में I think Son came on and I think if I'm not wrong he scored. तो थोड़ा बहुत मैं surprised हूँ उससे, लेकिन again that is basically Conte who's not well apparently. उसका चॉइस है absolutely. लेकिन हमारा देखिए बेंच पर है, we have Aubameyang on the bench. तो ऐसा नहीं कि Aubameyang is totally out of the picture. Again वो थोड़ा सा क्या बोलता हूँ ज्यादा ही सरप्राइज है, बट अब देखिए Mudryk, Madueke, Aubameyang, Gallagher, Zakaria, Mount, Bardeshile, Wesley Fofana. Bhai, look at our bench, and even their bench, Perisic and Son, both are on the bench. Danjuma भी, तो भाई उनका भी bench बुरा नहीं है. They are going a little bit defensive like the last match. तो देखते क्या होता है उनकी तरफ से. Why not 3-4-3 formation? We would have won now. I'm not at all confident. I'm confident तो कोई भी नहीं, सच में बोलूं तो. What are the most common formation under Tuchel and Potter? So Tuchel के अंदर, when in Dortmund, PSG used to play 4-3-3, but in Chelsea used to play 3-4-2-1. But Potter, he plays 4-2-3-1 in Chelsea. Do you see Reece James as right centre back, Ziyech as right wing back? जैसे मैंने शुरू किया था, that could be a possibility of the 3 in the back system. Actually, Darren, you have a point, certainly. अगर like for like हमें दिख रहा है कि यार they are creating more space, or they are able to why have 2 men on 1, maybe we may go to like for like, and that's a very good point, Darren, का कि यार Ziyech has that ability क्योंकि वो ping करता है balls, और on the other hand Sterling can go in behind. So you have a point therein. उसको स्टार का रखते हैं, देखते हैं if it's true or not. No star for Mudryk, ये डिसअपॉइंटमेंट है मेरे लिए, सच में बोलता हूँ. आप अगर कोई बंदा एक बिग मनी साइनिंग है, he is not supposedly doing well, and let's be honest, he is not doing as per expectations. मैं कोई दो राय नहीं बोलूंगा, but at the same time you want to basically give him time, give him that support. I don't think he's getting that, सच में बोलूं. Even when he started वो hardly games complete किया है, तो
सरप्राइजिंग है, यस, उसने प्री सीजन नहीं किया था बिकॉज शाख्तार का सीजन काइंड ऑफ वाज अ ब्रेक, ऑन अ ब्रेक, तो लगता है देयर वाज एन इश्यू विद दैट, लेकिन जितना ज्यादा गेम टाइम मिलेगा उसके लिए अच्छा है, तो कहीं ना कहीं मुड्रिक को हम और प्रेशर डाल रहे हैं, सच में बोलो तो। नॉट सेटिस्फाइड स्टार्टिंग 11, यस आई नो, ओनली आइडिया हाउ कैन सेव फुटबॉल टुडे, मयंक विद उस पर आएंगे आफ्टर। राहुल बेगा ब्रो क्या हाल है? अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीवन, एंड आई मीन एवरीवन जो भी यहाँ जुड़ा है भाई, सबसे पहले लाइक बटन दबा दीजिए, एज वेल एज इफ यू कैन हिट दैट लाइक बटन, कम्युनिटी पोस्ट इट बी ग्रेट, बिकॉज आई बिलीव बहुत लोगों का नोटिफिकेशन नहीं आई है। एटलीस्ट शोभा बैक ऑन द बेंच, राहुल बोल रहे हैं यस एब्सोल्युटली, नो कोवाचिच नो मोड्रिक। भाई देखिए कोवाचिच का, एक सेकेंड भाई, कोवाचिच आई जस्ट रियलाइज कोवाचिच इज नॉट ऑन द बेंच आल्सो। भाई ये क्या हो गया? मुड्रिक इज देयर ऑन द बेंच, कोवाचिच बेंच पर भी नहीं है। भाई एनीवन कैन यू हेल्प मी आउट? क्या ट्विटर क्या बोल रहा है कोवाचिच के बारे में? Kovacic is not on the bench also. That is surprising for me. That is surprising. That is surprising, Sachin Bhutto. But anyway, it's basically Gallagher on the bench, Zakaria on the bench. I think every match he's just putting two people on the bench from midfield. Or Mason Mount can play that, you can argue. Still, Kovacic is not on the bench. Shocking, bro. Such me shocking. Anyway, thanks, yeah, Anmol Deep. Do you think Karius will redeem himself? We'll come to that, Fiery, absolutely, in halftime towards the end of the stream. Is Pedro Porro there in substitution? Felix versus Porro, मजा आएगा भाई। देखिए डेफिनेटली पेड्रो पोरो इज देयर। लेट मी एक्चुअली अगेन शो यू द बेंच अगेन पीपल। आप लोग भी बोलिएगा व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बेंच? आर यू शॉक्ड? भाई आई अंडरस्टैंड गैलेगर बीइंग देयर इन द लंदन डर्बी ऑन द बेंच एटलीस्ट, लेकिन इन फ्रंट ऑफ कोवाचिच रियली सरप्राइजिंग। लेकिन स्पर्स का देखिए, अगेन मैं मिस कर दिया होगा कुछ, कोवाचिच इज एक्चुअली नॉट ऑन द बेंच, ही इज नॉट देयर ब्रो। हाँ नहीं है, बाप रे। एनीवे, दांजुमा, सॉन, पेरिसिच, लूकस मोरा, पेड्रो पोरो, तो their bench is also not too bad आज। they also have people back, तो चलो it will be a good contest for sure. Okay, let's believe, yeah, that's the way to go, one way of the James and Chile, any good in back four? Yeah, absolutely, why not? अजिंक्य, remember हम सब भूल जाते हैं, Chilwell was actually bad under Tuchel for the first month. पहला महीने में it was Alonso and then Chilwell came. Why? Because वो एक back four से आ रहा था and going into back five, which was not his way of playing. Remember, Lampard के अंदर हम back four खेलते थे. He did well under that. Then Tuchel के अंदर first month में he kind of fought it through and then came back. वो आया टीम में वापस. तो Chilwell and Reece James basically दोनों ही back four पे ज्यादा खेले अपने करियर में, to be honest. And I'm talking about sub, you know, Chilwell के केस में Leicester भी, and James के केस में even Wigan Athletic, यार, absolutely. Today losing match means club statement coming. Well, there are chances, there are chances, इतना ही बोलूंगा भाई। अंशुल क्या हाल है भाई? अंशुल is not happy, absolutely not happy, but again भाई at the end of the day आपको समझना पड़ेगा। अगेन मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सपोर्ट कर रहा हूँ पॉटर को, what I'm saying is अभी मैच डे आ गया, तो अभी right now is not the time to kind of, you know, question Potter. Right now the time is to support the team. Just try and think what he's thinking and then maybe let's react later on. हाँ, मैं पॉटर से कन्विंस नहीं हूँ, मैं बोल रहा था 1 महीने पहले, 2 महीने पहले भी, और अभी भी सेम चीज बोलता हूँ, लेकिन अभी यार लेट्स अंडरस्टैंड ही हैज अ प्रॉब्लम। उसके पास बड़ा प्रॉब्लम क्या है? उसके पास बहुत बड़ा स्क्वाड है, बहुत बड़ा स्क्वाड है, तो उतने बड़े स्क्वाड से आप क्या करोगे भाई? ओके, यहाँ पर अगेन आई रिक्वेस्ट अंशुल, डेरेन भाई, स्पेशली द मेंबर्स, पुदिन ऑफ कोर्स, एंड ऑल द सब्सक्राइबर्स हियर जो भी है, फर्स्टली अगेन आई लव यू ऑल, थैंक्स फॉर कमिंग ऑन ब्रो। भाई it's a Chelsea match day, it's a Spurs versus Chelsea London derby here, it's a do or die match for us. By hopefully the 7,500 subscribers kind of, you know, they realize that we are live and, you know, try and support us, that we really need today. So hopefully वो कैसे होगा, क्योंकि यार आधे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आई है। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, हो सके तो इफ यू कैन शेयर द स्ट्रीम ऑन व्हाटएवर प्लेटफॉर्म दैट यू आर, as well as if you can like that community post जो मैंने डाला है plus this stream, it'll mean a lot. Really thanks for that in advance. लेकिन please consider doing that, क्योंकि YouTube promote ऐसे ही करेगी। For whatever reason they are not promoting to some people, I don't know, that's what I've heard. Anyway, what the hell Potter, when Chilwell plays Mudryk won't start, you are destroying a Hazard level player. Well, Hazard level तो नहीं बोलूंगा टाइगर प्लीज, लेकिन पोटेंशियल डेफिनेटली, बट आई हियर यू, बिल्कुल आई अंडरस्टैंड दैट मुड्रिक का कॉन्फिडेंस हैज टू बी बिल्ट राइट नाउ, लेकिन वही ये पॉटर सोच रहा है, इज इट द राइट टाइम टू बिल्ड हिज कॉन्फिडेंस इन अ डू और डाई गेम इन अ स्पर्स चेल्सी लंदन डर्बी? मे बी नॉट, आई एम गेसिंग दैट, आई एम जस्ट गेसिंग दैट, और क्या ही तो हो सकता है। RLC the most disappointing selection, he doesn't use his physicality, yes he doesn't use his physicality, लेकिन he has to use this today, इतना जरूर बोलूंगा। above Kovacic I still see a reason why he has been picked. टेक्निकल स्किल्स यस आई अंडरस्टैंड टोटली, लेकिन वही है ना अजिंक्य, मैं ज्यादा डिसअपॉइंट इससे हूँ
कि अगर आरएलसी नहीं चलता है इन द फर्स्ट से हाफ एन आवर और 45 मिनट्स, वी डोंट इवन हैव अ कोवाचिच ऑन द बेंच. हमें लाना पड़ेगा जकारिया, who's not too bad, but again, अगर आपको चाहिए where the game is not moving forward, in that point we need Kovacic. भाई as a substitute at least Kovacic should have been a must have आज. I am very very disappointed with that more. बेंच पर होना चाहिए Kovacic भाई, वो एक बॉल प्रोग्रेस करता है, and that is something that we'll miss today. Again, please tell me if anyone knows any news about Kovacic. I'm hoping he's not injured again भाई. I hope we'll go for 3-4-3 or 3-5-2. What is this? Koulibaly, why not Fofana? RLC, why not Zakaria? Ziyech, come on, he has to go. Well, Ziyech का again, I understand वो क्यों आ रहा है in a London derby. He's gone with experience versus Madueke, ठीक है. और प्लस जिएश ने अच्छा किया यार. लास्ट ईयर वी फॉरगेट वी बीट स्पर्स 4 टाइम्स, उसमें 2 मैच में जिएश ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था. तो कहीं ना कहीं देयर इज सम हिस्ट्री. आई एम गेसिंग, अगेन मैं टोटली अग्री नहीं करूंगा, लेकिन इसमें मैं डिसएग्री भी नहीं करता टोटली. आई वांटेड मोड्रिक सच में, नॉट इवन Madueke. और आरएलसी वर्सेस जकारिया, मैं भी जकारिया के लिए ज्यादा अंशुल. आई एम नॉट टू विजिबल. जकारिया वाज अ प्रेफरेंस, मैंने खुद बोला था आज के सुबह की वीडियो में. लेकिन अगेन अभी है तो भाई इट इज व्हाट इट इज. कुलीबाली, लेट्स जस्ट होप कि उसका जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस आए, बिल्ड्स ऑन दैट. बट अगेन वेस्ली फोफाना क्यों नहीं है पता नहीं. वेल आई डोंट थिंक सो डेरिन, आई डोंट थिंक सो. देखो काई हावर्ट्स हैज बीन वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग, आई अंडरस्टैंड टोटली. लेकिन अगेंस्ट साउथहैम्पटन ऑफ द बेंच थोड़ा सा इंपैक्ट लगा था, थोड़ा सा आई वुड से दैट. तो मे बी स्टर्लिंग एंड काई हावर्ट्स इसलिए आज शुरू कर रहे. लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर बोलता हूँ दैट दाविद द्वातर फोफाना होने चाहिए. अगेन ही इज नॉट इवन ऑन द बेंच. वही प्रॉब्लम है ना, आप 30 मेंबर स्क्वाड के साथ खेल रहे हो, आप कितने लोग को डाल सकते हो स्टार्टिंग में ऑन द बेंच, एंड दैट इज द बिग पॉइंट. Oban Sterling top 4-4-2 something of this sort we need. Well, अभी यार मेन थिंग है, इट्स एन अवे गेम. आई वुड से कीप अ स्ट्रक्चर एंड बिल्ड ऑन दैट. तो 4-4-2 तो मैं नहीं देखता था, लेकिन अगेन द प्लेयर्स ऑन बेंच शुड हैव बीन स्टार्टिंग एंड नॉट द वंस इन द लाइनअप. अंशुल, गुड वन दैट. टॉप 4 आज चेल्सी लूज अफोर्ड नहीं कर सकता है भाई. टॉप 4 तो भूल जाइए यार. मैं तो बोलता हूँ आज टॉप 6 भी चल जाएगा अगर वी लूज. सिंपल एज दैट. दैट्स द रियलिटी. I lose my mind. Everyone, Sterling runs into a deep defender while dribbling. Hope he steps up. Well, Sterling, in my opinion, he had an impact last game. I think Sterling to deserve करता था कहीं ना कहीं. But again, you can argue that why not Mudryk? I know Havertz is not good in finishing, but his interconnection with Felix is good, which is essential. Yes. Also, हम भूल रहे भाई, एवरीवन यहाँ पर हम भूल रहे, हावर्ट्स लाइक अ रूबन लॉफ्टस-चीक डज नॉट यूज उसका हाइट इनफ, लेकिन वो फैक्टर इज यूजफुल व्हेन इट कम्स टू बेसिकली अ लंदन डर्बी अगेंस्ट स्पर्स. आई थिंक वो इंपॉर्टेंट रहेगा. एंड इन द पास्ट, जैसे मैंने जिएश के बारे में बोला था, पीपल रिमेंबर हावर्ट्स ने भी गोल मारा है स्पर्स के साथ. तो कहीं ना कहीं बिग गेम प्लेयर. आई नो रिसेंटली कोई बिग गेम पे स्टैंड अप नहीं हुआ हावर्ट्स, बट आई एम जस्ट सेइंग that is what he's picked up. Again, I'm just hoping and praying वो correct आ जाए, नहीं तो he's gone. अच्छा, Kovacic illness है. Oh my God, finally got to know. This is bad. This is bad यार. भाई ये क्या हो रहा है यार? इतने सारे लोग आ जाते हैं, illness कैसे हो रहा है यार? Come on. Yesterday Zinchenko was captain because it's 1 year of Ukraine-Russia war. Okay. Yeah, respect for sure, Pudin. These are dark times. Suffer. Yeah, what happened to Chukwuemeka? Too many people in the squad. Too many midfield in the squad, Pudin. वही मैं बोल रहा था. चैंपियंस लीग स्क्वाड का मैंने एग्जांपल दिया था कि व्हाई डू वी हैव सो मेनी मिडफील्डर्स इन द चैंपियंस लीग स्क्वाड, व्हाई कुडंट वी हैव टेकन ओबामेयांग. चुकुमेका को इसलिए चांस नहीं मिल रहा है, सिंपल एज दैट. यस, आइडियली आप बोलोगे दैट ही कैन, बट अगेन चुकुमेका 4-2-3-1 में फिट ही नहीं देखता, सच में बोलता हूं. I don't see Chukwuemeka fitting in a 4-2-3-1, and I'm really being honest in that. He is a 4-3-3 player. So is in fact Gallagher. तो गैलेगर चुकुमेका मैं नहीं देखता 4-2-3-1 टू बी आइडियल प्लेयर्स वहां पर. इवन अ Mount, Chukwuemeka, Gallagher, I don't know why, they all three are there in the squad जब हम खेलते ही नहीं हो सिस्टम. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, हाँ कोवाचिच इलनेस में सुना हूँ, लेकिन फिर भी यार आई वुड हैव होप्ड that at least एक स्ट्राइकर पोजीशन में we had a David Fofana on the bench, क्योंकि ओबामेयांग वेल देखते क्या होता है. ओके भाई सायन, डीएम करिए, मैं बताता हूँ एब्सोल्युटली. It took Chilwell 2.3 months to settle back in back five system, including Reece. Yes, absolutely. He's actually originally a back four player. Ansh, kaise ho bhai? Nice to see you. Problem for Mudryk situation, Gaurav bol rahe is that Potter doesn't use him properly. His tactics are poor. Also, Mudryk is raw, hasn't played much, so needs time. I know he's also at fault. बिल्कुल Mudryk का बहुत kind of 1-2s वाला बहुत ज्यादा उसने ट्राई किया है. प्लस first touch has been bad, but at the time of getting in behind, वो फिर भी is one of the best players in our squad. ठीक है, absolutely, अभी भी मैं बोलता हूँ. एंड प्लस वो सेटल हो रहा है, तो आई थिंक बिट ऑफ वो डेफिनेटली है. लेकिन वही मैं बोलता हूँ ना, कहीं ना कहीं फ्रॉम द बेंच में देखता हूँ हिम कमिंग फॉर श्योर.
बैक फाइव सिस्टम, या यू कैन से दैट, बट लेट्स सी। भाई मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा क्योंकि दे आर नॉट स्पॉन्सरिंग मी ब्रो, आप मुझे डीएम करिए, मैं डेफिनेटली बताऊंगा सायन, कोई नहीं। अगेन, if any jersey company or any company wants to sponsor us, more than welcome bro, we are looking for it for sure. Not starting Zakaria, we are going to get run out in midfield, and Spurs are masters in counters, I can see. Oh bhai sahab, Aniket, that's not good. Some reports that the senior players said they didn't have a good preseason, our news, yeah yaar ye bhai, अभी ये देखिए, एज मच एज आई सेड आज सुबह की वीडियो, आई डोंट भाई कितने लोग यहाँ पर जिन्होंने बेल नोटिफिकेशन आइकन आइकन दबाया। रीजन आई एम सेइंग इज बिकॉज मैं शॉर्टर वीडियोस भी करता हूँ। यस, कल रात को मैंने रिकॉर्ड करके आज सुबह डाला था, तो उसमें मैंने बात किया था अबाउट सर्टेन थिंग्स। देखिए, वाइल आई टोटली गेट एंड आई टोटली से नो फॉर ऑनलाइन बुलिंग, ठीक है, नो फॉर ऑनलाइन बुलिंग बिग टाइम, डेफिनेटली। यहाँ पर जो हो रहा है अगेंस्ट पॉटर, मेसन माउंट एक्सेट्रा, गेटिंग डेथ थ्रेट, वो नहीं ऑन है। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल, एनी ह्यूमन बीइंग वर्ल्ड में। लेकिन साथ साथ में आप बेसिकली अभी जो बोल रहे हैं ना, इन अ वे आप टुकल को ब्लेम कर रहे हो। हाँ, ही डिडंट से दैट वे, पॉटर की गुड प्रीसीजन नहीं हुआ है, लेकिन अब वो सीनियर प्लेयर्स को ट्रस्ट कर रहे हैं क्या टोटली? अब आई डोंट नो, आई हैव माय क्वेश्चंस वहां पर। प्लेयर पावर इज एन इश्यू, अजिंक्य, दैट इज व्हाट इज एन इश्यू, वी ऑल नो दैट। Inter losing, okay, nice. I wanted to see Reese, Fofana, Silva and Badishile, Chilwell, okay, back three basically, got it. अंश बोल रहा है, would have preferred Sterling for Ziyech, okay, Mudryk in left, Mount for RLC, and Oba और David Fofana for Havertz. I think I almost agreed with you, अंश। आज सुबह के वीडियो में मैंने डाला था ये भी कि यार मेरा जो लाइनअप था, I would have expected maybe David Fofana to start, then maybe I expected Mudryk or Sterling to be my wingers और Felix, but I didn't see Mount to be honest. लेकिन हाँ, मैं तो बैक फोर के साथ ठीक हूँ यार, कोई नहीं। अरे निश्चित, क्या हाल है भाई? नाइस टू सी यू ऑलवेज भाई। अगेन आई नो देयर इज अ बिग गेम लेटर ऑन एज वेल। और हाँ, फॉर पीपल आस्किंग, वो वाला गेम कहाँ आएगा? कैराबो कप फाइनल, आई बिलीव फैन कोड में आएगा, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। I think every match is do or die, so we have to start Mudryk to get him in the mix before next season. Yeah, fair enough. Chalo, Kova has illness. Gaurav is confirmed as well. Chelsea pitch width is less compared to City or United. That's why midfield is crowded for free flowing football. हाँ, लेकिन like देखिए, bottom line ये है ना, whatever it is, we are playing basically यहाँ पर at Tottenham Hotspur, by the way. Yeah? So that's one more thing. It's not at Stamford Bridge. तो I think बहाने अब नहीं चलेंगे। वी कैन नॉट हैव एनी मोर एक्सक्यूजेस। यस, इट्स अ ह्यूज स्क्वाड, सो मेनी चेंजेस, बहुत सारी इंजरीज थे यहाँ पर। मैनेजर खुद सेटल हो रहा है वापस वर्ल्ड कप के बाद में, लेकिन द रियलिटी इज दैट भाई बाकी टीम्स कर रहे, तो वी हैव टू पुल अप आवर सॉक्स। इट्स हाई टाइम भाई। हम 10th है विद एस्टन विला इक्वल ऑन पॉइंट्स, एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल एज चेल्सी फुटबॉल क्लब, नो मैटर व्हाट। आई एम नॉट सरप्राइज बिकॉज कोवा एंड एंजो डिडंट वर्क। हाँ, लेकिन अगेन कोवा का इलनेस भी है पुदिन, लेकिन जकारिया व्हाई नॉट भाई? डज इट मीन कि हम जकारिया को नहीं रख रहे? दैट मुझे सिग्नल आ रही है कि कहीं ना कहीं जकारिया इवन आफ्टर बिकमिंग फिट इज नॉट प्लेइंग, इज एन इश्यू फॉर मी। आई थिंक वो एक आइडियल होता है नंबर 6 एनीवे इन दिस फॉर्मेशन। आई नो क्वालिटी थोड़ा और बेटर प्लेयर चाहिए, सच में बोलूं तो एज मच एज जकारिया अच्छा है, लेकिन आई थिंक ही इज अ बेटर फिट देन लॉफ्टस-चीक फॉर श्योर। I think Potter is confused regarding starting 11 having so much options. Yeah, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, आप चेंज ही क्यों कर रहे हो? देन गो फॉर पीपल हु आर डूइंग द जॉब एंड हु फिट्स द गेम प्ले। और उसमें मैं बोल रहा हूँ अगेन भाई, दाविद फफा ने क्या गुनाह कर दिया यार 45 मिनट्स में अगेंस्ट साउथहैम्पटन। दाविद फफाना हैड वन ऑफ द बेटर अपीयरेंसेस, बेंच पर भी नहीं बंदा। और यस, बट एंड टू एंड स्पोर्ट्स हैज अ पॉइंट कि यार इतना बड़ा स्क्वाड है तो इट्स एन इश्यू एब्सोल्युटली। व्हाई नॉट स्टार्ट बाडियाशिले, कम ऑन पॉटर, कुलिबाली इज एरर प्रोन। ट्रू। अच्छा, एक और चीज सब लोग भूल रहे हैं भाई, जो 2-2 हुआ था उसमें किसने स्कोर किया था? कुलिबाली। सो मे बी, आई डोंट नो, देखिए मैं अग्री नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं मे बी दिस इज लाइन ऑफ थिंकिंग, इट्स नो कोइंसिडेंस। देखिए, कुलिबाली स्टार्ट्स, जियेश स्टार्ट्स, काई हावर्ट्ज स्टार्ट्स, ठीक है? ये तीन लोग दे हैव हैड गुड मैचेस अगेंस्ट स्पर्स इन द लास्ट 4 मैच जो हम लोग खेले ना स्पर्स के साथ में, उन 4 मैचेस में से 3 मैच के हीरोज ये तीनों थे, काई हावर्ट्ज, जियेश और कुलिबाली। रिमेंबर, सो मे बी दैट इज द फैक्ट। Okay, Loudmouth Football, Uday in the house. Bhai, you were right about Bajcetic, and for tonight, your lineup looks solid attacking wise, but I feel despite the chances created, Tottenham might take this one. Might Emerson Royal versus Chilwell. Well, honestly, I was hoping Mudryk versus Emerson Royal हो जाता ना, वो interesting रहता काफी. But anyway,
This is relegation form. I'm almost done. I'm just waiting for Dortmund clash. नहीं यार, देखो होता है कभी भाई. You are one of the positive members in the subscribers. हमारे I'm sure about it. Yes, realistic भी होना पड़ता है, but at the same time I agree with you भाई. मैं भी यार आपके जैसे ही सोच रहा हूँ, लेकिन अभी किक ऑफ में 7 मिनट बाकी है, तो आई डोंट वांट टू हियर दिस. सच में बोलता हूँ तो नथिंग, इट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू. मच लव टू यू एज वेल एज एवरीवन यहाँ पर. लेकिन भाई अभी जब 7 मिनट बाकी है, इफ यू आर अ चेल्सी फैन भाई, वी नीड टू हियर पॉजिटिविटी. लेट्स गो फॉर इट. बहुत सारे क्वेश्चन मार्क करेंगे, हम क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन लेट देम परफॉर्म, गिव देम अ चांस. अभी 11 हैव बीन सिलेक्टेड, सो लेट्स गो विद दैट. नो मडुवेके जिएश ओवर में शॉकिंग. आई डोंट थिंक इट्स शॉकिंग. नहीं, अग्री करता हूं. देखिए, द रीजन इज यस, जिएश हैज बीन सो, लेकिन द फैक्ट इज आपको चाहिए इन अ लंडन डार्बी एक्सपीरियंस एज वेल. We cannot just have all the youngsters on the pitch. हमें चाहिए someone with character. Ziyech has that in fact. और again Spurs के साथ not just one. Last 5 मैचेस में 2 मैचेस में he played very well against Spurs for, and last season मुझे याद है 2 मैच for sure. So that is what it is. Inter Milan losing Ankur. Yes, thanks for the update. Angbai, do you think Ziyech को मैच शार्पनेस के लिए आज का मैच दिया? नहीं, I don't think it's about match sharpness. I think it's the do or die match, Darren. As much as Potter बोल रहे हैं कि मैं comfortable हूँ, मेरे में pressure नहीं है, I still feel it's important for him to win this match. याद रखिए, again, we haven't beaten a top 10 side this season. भाई वो shocking form है against big sides in Premier League. और Spurs के साथ we should have beaten the first leg. Spurs are a direct rival. हाँ, direct rival, not just in terms of history, in terms of geography, भाई even in terms of the Premier League table. और हमें चाहिए स्पर्स नीचे और हम ऊपर जाए यार. और वो कैसा रहेगा? आज we have to beat Spurs. We have to do that, and that is why maybe he has gone with the experience and not basically youngsters who looked good but not had the end product. Potato boy, Spurs fan in the house, bro. Much love to you and all the best. लेकिन you all know that मैं चाहता हूँ चेल्सी को जीतना. We are going to lose 3-0. 2 Dyer goals and Felix goal. Oh my god, own goals बोल रहे. London Derby and Carabao Cup, what a day. बिल्कुल, Evolution Gaming Lux. Nice to see you as always. Asad plays as well. Bhai, you also think Kai and Potter have an intimacy? Why does he keep getting selected? And नहीं, अंशुल तो again, I don't agree with this selection. मैंने खुद वीडियो में बताया था, I want David Atro Fofana. मैं ओबामयांग के लिए भी नहीं गया था. लेकिन for me, the only reason why I see Potter, getting him is one, because last match में थोड़ा सा impact him and Sterling did, so those two are starting. और like I said, Kai Havertz has had a history against Spurs. वो only reasoning है, और कुछ reasoning नहीं है. agree नहीं करता, लेकिन reasoning हो सकता है. That's what I'm saying. Okay, सोनी लिव पर भी है क्या? अरे भाई साहब, मैं तो अनसब्सक्राइब कर दिया. मैं सोचा साला आता नहीं तो मैं करता हूँ, वापस करता हूँ, कोई नहीं. हाँ, खिलवाड़ तो हुआ है ओबामयांग के साथ में. दैट आई एग्री विद दैट. भाई सब लोग, जाबिर भाई इन द बैक इज बैक एब्सोल्युटली. Real hero was N'Golo Kante actually. N'Golo Kante, Rudiger were big heroes in the Spurs games absolutely. मुझे याद है last season, but वो लोग तो अभी है नहीं यार. N'Golo Kante is not yet fit. Big up. I have I hear you already given up before kickoff. Please confirm. नहीं. Why have I already given up? No. Definitely not given up यार. Definitely मैं यहाँ prediction किया था draw का. अभी भाई, all the people out there, do let me know what do you all think about this bench जो ज्यादा strong लग रही है the lineup, and of course the lineup on this basis. भाई, it's time for a prediction. Just give me a second. और सब लोग like button दबा दीजिए. Do not forget to hit that subscribe अगर आपने नहीं किया subscribe अभी तक. But एक सेकंड मैं फोन लाता हूँ, यहीं पे बने रहना. Do let me know your thoughts about it. And again, like I said, let's get the likes up, and definitely community post में भी किया यार, तो वो भी like करेंगे तो better रहेगा. I'm just starting the match quickly. यहाँ पर literally 4 minutes left. So I would like to see the score predictions. तो सब लोग बोले कौन करेगा भाई, impact कौन करेगा आज, goals कौन करेगा. Again, मुझे लगता है the main battle that I'm looking forward to is actually that midfield battle. Enzo Fernandez against Højbjerg. या Loftus-Cheek against Højbjerg. अब वो जो जीतेगा ना, in my opinion, that might be the difference. लेकिन Spurs बहुत focus करते हैं wings पर. इसलिए obviously Reece James FC by everyone. Reece James, Ziyech का tuning, ना थोड़ा tuning है definitely. So that is something that मैं देखना चाहूंगा इस game में. And yes, absolutely, let's get to the likes. Like I said, and like Darren is putting there. ये क्या? I mean, come on. Hello यार संजीव, क्या हाल है? Yes, absolutely भाई. मैंने बताया था congratulations already, but yes, I know लंबा है ला लीगा अभी भी, लेकिन I still feel that Barca favorites. 2-0
Chelsea tie with goals. Okay, interesting that. Bhai, I am not so confident. Yes, मैं negative भी नहीं हूँ, लेकिन I certainly feel that we can probably do better in this game. Considering कि ये Spurs भी थोड़ा negative start कर रही है, solid तो रहेगी Spurs compared to usual. तो मैं बोल रहा हूँ हम goals ऐसे भी नहीं करते. तो actually I am going with a 1-all. लेकिन एक hard fought 1-all. मैं चाह रहा हूँ 2-1, लेकिन मुझे लगता नहीं 2 goals आएंगे. I feel that we can go with a 1-all. Yes, with Koulibaly being there in the back, मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, especially with Loftus-Cheek playing in midfield and not Zakaria या Kovacic. तो भाई मुझे लगता है I'm going with a 1-all is what I'm going. 2-all हो नहीं चाहिए, हमें चाहिए 2-1, क्योंकि इस बार you know we have to get 3 points. Remember, it's a direct 6-pointer in my personal opinion. Direct 6-pointer. भाई सब लोग if you can confirm, is it coming on in India? Is it coming on Star Sports Select 1 HD? Do let me know on that. I'll just put it up. हाँ उसमें आ रहा है शायद. एक सेकंड दीजिए मुझे. I'm just making sure. 3-0 Spurs win. Put in. Manav in the house. Enzo and Reese will drop a 9 out of 10. Sterling will score. Havertz will squander 2 chances. अरे भाई साहब इतना specific predictions भाई Manav. 1-all draw. But हाँ, at the end of the day, Manav has also gone for 1-all. But I would hope and pray that we win. Yeah, somehow we need that victory. हमें चाहिए एक booster. और Spurs के साथ pretty sure यहाँ पर भाई मौके पे चौका करते हैं चेल्सी प्लेयर्स. दे विल बी अप फॉर इट. आई थिंक दैट वी विल बी अप फॉर इट. आई डोंट थिंक इतना डिसअपॉइंटिंग होगा एज यूजुअल. अगेन हो सकता है इट माइट बी द अदर वे अराउंड टोटली, कंसीडरिंग हमारा जो मोरल रहा है और लैक ऑफ इट. ठीक है, लेकिन आई स्टिल फील दैट वी शुड बी डूइंग बेटर. देखते हैं भाई. एक सेकंड दीजिएगा मुझे, मैं आ रहा हूँ भाई. सब लोग ओके? आर यू सीरियस भाई? एवरीवन इन द चैट, हैव यू नॉट इवन गॉट टू 50 लाइक्स? भाई कम ऑन ब्रो, ऑलमाइटी फैम. देखिए यार, I love everyone here, absolutely, and I'm sure you guys are here because you guys love me as well. भाई लाइक बटन दबा दीजिए यार. I asked at least for 5-6 times in the stream already यार, इनफैक्ट ज्यादा ही बार. भाई सब लोग लाइक बटन दबा दीजिए. इट इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड, क्योंकि वो बैटरी है स्ट्रीम का यार. आई एम नॉट द बैटरी, बिकॉज मेरे पास ऐसा फेस नहीं है, मेरे पास इतना क्राउड पुल नहीं है कि यार लोग आ जाते. लेट्स बी ऑनेस्ट. और वो जरूरत है यार चैनल को. और यस आई नो यहाँ पर हम फैन है. वी आर डेफिनेटली डूइंग वॉच अलोंग यहाँ पर, and that is more important. I understand all that. Like at the end of the day, this is something that I've invested in with all your support and help, and you guys are part of the almighty fam. तो सब लोग यहाँ पर सबसे पहले लाइक बटन दबाइए. I cannot believe that we are not even there to 50 likes. I cannot even believe. यहाँ पर मैं एक डालता हूँ लाइक टारगेट for a reason यार, not for everyone to ignore. Come on, let's get there people. मुदित big up, क्या हाल है? Nice to see you as always bro. लेकिन मैं यहाँ पर देखता हूँ. Let me just start the टाइमर एंड भाई सब लोग सिंक कर देना साथ में. आई होप एंड प्रे वी विन ब्रो. आई एम कॉलिंग अ जाओ फिलिक्स गोल यार. आई एम कॉलिंग अ जाओ फिलिक्स गोल. लेट्स सी. आई सी दैट इम्पैक्ट रहेगा ऑफ द बेंच एज वेल, बिकॉज वी हैव अ स्ट्रॉन्ग बेंच. बट यस, वी हैव किक्ड ऑफ पीपल. वी हैव किक्ड ऑफ एंड यस अगेन मैं लूंगा बीच में से. अच्छा एक सेकंड दीजिएगा मुझे. लेट मी जस्ट ट्राई एंड हियर द कमेंट्री एज वेल थोड़ा बहुत, एंड देन वी कैन get settled. Okay, initial Felix with some nice position. Okay, Reece James getting the ball, looking for some control. Nice play. Chalo, at least initial लगा है कि यार we are trying of wanting to control the game, so that's a good sign. Nice through ball attempt, लेकिन नहीं. Foster के पास गया ball, easily collected. And remember, they have Foster, they don't have Loris. तो कैन वी टेस्ट हिम? हाइट तो है बंदे का, लेकिन अगेन देखते हैं. एक सेकंड दीजिएगा. आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट माय ईयरफोन सो दैट मैं थोड़ा सा कमेंट्री सुन लूं. ठीक है, साथ साथ में. और आप लोग बोलिए यार, इन केस यू कैन हियर द कमेंट्री एज वेल, बिकॉज दैट शुडंट बी हर्ड लाइव में. तो आई होप सो नॉट. लेट मी जस्ट पुट इट. या ओके, स्टर्लिंग विद द बॉल. मैन, इट्स अ पेनल्टी. कम ऑन. नहीं है. शाउट था, पता नहीं. जाओ फिलिक्स शॉट, लेकिन जस्ट वाइड. ओके भाई, पीपल शो द रिप्ले. भाई एक तो घेरते क्यों नहीं यार? चेल्सी प्लेयर घेर लो यार रेफरी को, नो मैटर व्हाट. सब लोग घेर लो, बस प्रॉपर घेर लो. स्टर्लिंग सॉफ्ट होता नहीं. डाइव तो नहीं, डाइव नहीं था. देयर वाज स्लाइट कांटेक्ट, लेकिन द फैक्ट इज वो बॉल को भी टच किया था ना, इसलिए मे बी वी डिडंट गेट इट. देयर वाज अ कांटेक्ट, इट वाजंट अ डाइव.
बहुत स्लाइट कॉन्टैक्ट था. रोमेरो वर्सेस एंजो इज व्हाट यू लुकिंग फॉरवर्ड टू. ओके, रोमेरो एक्चुअली बहुत अच्छा गेम था लास्ट गेम में. नहीं, तनेश डाइव नहीं था, आई डोंट अग्री. बट एनीवे, इट्स अबाउट ओपिनियंस. भाई अगेन सब लोग यहाँ पर डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द स्ट्रीम. भाई कैसे मैं पूछूंगा सब लोग को टू लाइक द स्ट्रीम एंड शेयर इट यार. आई डोंट नो, गिव मी सम आइडियाज अबाउट दैट. आज मैं अकेला है यार. यस, आई डोंट हैव एनी पैनल. द रीजन बीइंग बिकॉज इट्स अ स्पर्स चेल्सी मैच, तो मैं कमेंट्री सुनना चाहता था साथ साथ में. ओके पीपल, इफ यू कैन क्विकली कंफर्म. ओके, कुलीबाली बचा लिया. कुलीबाली नहीं यार, क्या क्लियरेंस, बैड क्लियरेंस में कुलीबाली. लॉफ्टस-चीक क्लियरिंग द बॉल. जॉ फिलिक्स, कम ऑन भाई, यहां पर हमें मुड्रिक चाहिए था यार. नो, come on man, Joao Felix got the ball. Bhai, that was, if Mudryk, that would have been a moment. Left side में Mudryk का pace, just imagine that अगर उस मोमेंट में Mudryk होता. नाइस प्रेसिंग यहां पर बाय हावर्ट्स, लेकिन टू नो अवेल. ओके, नाइस एंड टू एंड स्पोर्ट्स को डेफिनेटली शाउट आउट यार. व्हाट अ थ्रू बॉल स्पर्स का, लेकिन नाइसली रेड बाय केपा. कुलीबाली यार, बिल्कुल. भाई आई होप यू गाइस आर नॉट एबल टू हियर द कमेंट्री, राइट? अगर बाई चांस सुन रहा है तो बता देना यार. कॉपीराइट वापीराइट नहीं चाहिए अपने को. या स्लॉटरबैक डेफिनेटली यार, हमने देखा ही था मैच अगेंस्ट चेल्सी भी, वाज लाइक प्रॉपर कॉन्फिडेंस का खेल रहा था. समटाइम्स आई फॉरगेट. नहीं वो इंजर्ड था ना, असद प्लीज. यार लेकिन कम ऑन, जस्ट इमेजिन वो जो सिचुएशन था ना काउंटर में, लॉफ्टस-चीक गिविंग द बॉल टू फिलिक्स. फिलिक्स के साथ मुड्रिक होता तो इमेजिन द बर्स्ट ऑफ पेस, इट वुड हैव बिकम अ चांस यार. स्टर्लिंग भाग ही नहीं पाया. एक सेकंड, इतना गैप क्यों है दोनों सेंटर बैक के बीच में हमारे? बहुत ज्यादा गैप नहीं है भाई. चिलवेल इजीली बीटन बाय कुलुसेव्स्की, लेकिन कुलीबाली ओपी ब्रो. कुलीबाली ने बॉल जीता वापस. रिमेंबर, कुलीबाली वर्सेस कुलुसेव्स्की, दे हैव इवन प्लेड इन द सीरिया, तो कहीं ना कहीं हिस्ट्री है वहां पर. एंजो फर्नांडिस गिवन टू रीस जेम्स. रीस जेम्स जीएस का 1-2 होगा कि नहीं होगा? हाँ हुआ है, लेकिन नहीं, नॉट गुड इनफ. यहाँ पर कोई नहीं. एंजो फर्नांडिस हमारे सेफ्टी वेल्व है पीछे. फिलिक्स ड्रॉपिंग डीप. लेफ्ट साइड में चिलवेल कर भाई ओवरलैप टू स्टर्लिंग. हाँ, स्टर्लिंग विद रन, स्टर्लिंग विल ही बी एबल टू बीट? नहीं. गुड चैलेंज बाय स्पर्स. रोमेरो नहीं, एमरसन रॉयल था क्या, जो भी है. ओके, हैवर्ड ड्रॉपिंग दिस टाइम, इंटरेस्टिंग. भाई लग रहा है कि इट्स हैपनिंग एट स्टैमफोर्ड ब्रिज, बट नो, जस्ट टू करेक्ट, दिस इज हैपनिंग एट टॉटनहम हॉटस्पर स्टेडियम. अच्छा, फॉर व्हाटएवर रीजन पीपल हैव ड्रॉप्ड, आई डोंट नो, ऐसा क्या बोल दिया यार मैंने. कोई नहीं, होपफुली पीपल कम बैक. आई थिंक आई विल स्टॉप आस्किंग फॉर लाइक्स यार, सिंपल एज दैट. एनीवे, आपको अगर करना है तो करिए यार. मच लव फॉर पीपल हु आर सपोर्टिंग एंड ऑलवेज बीन देयर एंड विल बी देयर. आई नो दैट इट माइट कम अक्रॉस रूड, बट दैट्स हाउ इट इज, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है, ट्रस्ट मी ऑन दैट. और आई डोंट हैव एन आर्मी बिहाइंड मी, लेट्स बी ऑनेस्ट. यू गाइस आर माय आर्मी. हाँ, थोड़ा क्विक पासिंग चाहिए हमें. क्विक पासिंग डेफिनेटली चाहिए. बट यू नो व्हाट, आई डोंट माइंड दिस कंट्रोल. एटलीस्ट कंट्रोल में रहेंगे तो बेटर है यार. मतलब एटलीस्ट हैपेजार्ड नहीं रहता है. मतलब वी नो व्हाट यू आर डूइंग वाला चीज हो रहा है. चिलवेल क्या करेगा? Felix gives it to Loftus-Cheek. Loftus-Cheek to Enzo Fernandez with a nice through ball, and it should be a goal. No यार, अगेन एंजो फर्नांडिस जॉ फिलिक्स का कनेक्शन ब्रो. लास्ट अपना गोल वैसे ही आया था, याद है? डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट टेक्निक था फॉर हिम टू फिनिश, बट इट वाज अ ब्यूटीफुल बॉल बाय एंजो फर्नांडिस ब्रो. Yeah, Kanishk, I don't know how it matters, bro. If the answer is no, then what will be your reaction? If the answer is yes, what will be your reaction? But anyway, you can forward, you can follow me on Facebook, bro. All my professional experience, everything is there. It's a stream to react to Chelsea, but definitely we definitely talk here and there. Much love for you to come on, bro. If I say that no, I don't have, then आप लोग ज़्यादा support करोगे.
or if I say yes I have, तो you respect me more because I'm able to multitask. I don't know. I'm just wondering. What a tackle, man, on Joao Felix. भाई येलो कार्ड, भाई दैट इज व्हाट है, सी चेल्सी के साथ है ना, दिस वोंट गेट अ येलो कार्ड. हाँ नहीं, येलो कार्ड नहीं था, मैं ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ. तो चेल्सी इन मी केम आउट. लेकिन एरिक डायर यार भाई, यू नो ही कैन गेट डर्टी. नहीं नहीं, डेरेन येलो कार्ड तो नहीं था, लेकिन देखते हैं वो सेम चीज अगर चेल्सी को नहीं दिया तो ठीक है, लेकिन चेल्सी को दे तो आई हैव टू बी क्वेश्चन. फिलिक्स नहीं नहीं, इज फाइन, डोंट वरी, इज फाइन. थिंक एंजो. हाँ यार, आई डोंट सी दैट हैपनिंग यार, इतने सारे फॉरवर्ड्स हम खरीद लिए ना, बहुत मुश्किल है संजीव. एंजो सेस फैब्रिगास, बिल्कुल बिल्कुल, ही गिव्स मी वाइब्स ऑफ दैट. वी स्पोकन अबाउट दैट सो मेनी टाइम्स. रीस जेम्स इज फ्री किक, लेकिन भाई कोई है ही नहीं हेडर करने के लिए. एक सेकंड, टॉटनहम का प्लेयर गिर गया, क्या हुआ यार? रोमेरो इज डाउन. क्या जॉ जॉ टूट गया है क्या उसका? रोमेरो, व्हाट हैपेंड? डाइविंग, डेरिन बोल रहे. हुआ क्या यार, मैं तो देखा ही नहीं. डोंट अग्री विद दैट बट इट्स ओके. अगेन भाई पीपल, मैं देख रहा हूँ लाइक्स कितने हुए स्ट्रीम में, सब लोग. सर्टेनली हेल्प यार, वो बैटरी है स्ट्रीम की, वही का कैटलिस्ट होता है. एंड ऑफ कोर्स यू कैन लाइक माय कम्युनिटी पोस्ट, लाइक ऑलवेज से इट हेल्प्स. Okay, we have got just 54 likes. So first of all, thanks यार, हम लोग we are finally to 50 likes, which should have been ideally in the first 15 minutes. सच में बोलता हूँ तो, लेकिन much love for everyone to like the stream यार. Likes बढ़ा दीजिए, definitely helps. It's your channel more than mine. भाई ये फ्री की किस बात का दे दिया रेफरी स्टर्लिंग के अगेंस्ट? अरे यार, ओके. स्टर्लिंग हैज गॉट 4 goals अगेंस्ट टॉटनहम. तो भाई आज बेसिकली ही हैज गॉन फॉर सम हिस्ट्री. पॉटर. संजीव वही है, थोड़ा चेल्सी इन मी केम आउट, बट कोई नहीं. हर्ट पुलिसिक इज बैक इन ट्रेनिंग. वेल पुलिसिक और कांटे अभी जस्ट अबाउट आई थिंक आ रहे, तो आई डोंट थिंक दे विल बी प्लेइंग एनी टाइम सून. आई थिंक कम से कम 15 दिन और लगेगा यार दोनों को. क्या हाल है मटारी यूनाइटेड? ऑल द बेस्ट यार फॉर टुनाइट्स मैच. We'll come to that for sure. Do you think in this more Potter system reach doesn't overlap that much? यार देखिए 4 at the back है ना, so you have to be a little bit careful about that, about overlapping. But वहीं पर Enzo and the second DM would help. देखिए that's where we are missing a Kante, to be realistic. भाई पोजीशन 70% चेल्सी है, बट पोजीशन से क्या चार डालेंगे? कुछ नहीं. So we have to do more. Again, people, I request everyone here who are dropping, do stick around here. We are reacting, we are watching along together. भाई फिलिक्स, डेफिनेटली दैट वाज अ फ्री किक ब्रो, फेस पर लगा है उसके. व्हाट इज दिस? अगर ये गोल हुआ ना, आई स्वेयर मैन. रिचार्लिसन, थियागो सिल्वा डिफेंडिंग. भाई आई वुड लाइक टू सी द रिप्ले. व्हाट हैपेंड? फिलिक्स क्यों गिर गया? भाई लॉफ्टस चीक, यू शुड डू बेटर मैन. भाई बॉल बाहर डाल देता है एटलीस्ट. जीएश, आई लाइक दैट, लेकिन अगर येलो कार्ड दिया ना रेफरी तू. हाँ Ziyech, I like that from Ziyech. He's giving a free kick away unnecessarily, आप बोल सकते हो, against Richarlison. But I want some physicality to be shown हमारे साइड से भी. Why now Mudryk? I don't agree with the selection, Suryanshu, but मेरा लॉजिक यही है कि Sterling had an impact in the last game, और Sterling has had 4 goals against Spurs. ठीक है, और वो एक्सपीरियंस लाता है ऑफ डाबीज जनरली इन इंग्लैंड. एक सेकंड, ये वेल डन बाय थियागो सिल्वा. ऑलमोस्ट ब्रेक हो जाता भाई स्पर्स का. भाई अभी हमें ब्रेक करना है. जियेश पास करे फार में, मुड्रिक इज मिस्ड यार इस गेम में. डेफिनेटली मुड्रिक शुड हैव बीन देयर. हैवर्ट्स क्या करे, स्लोड द गेम गॉट डाउन. कोई नहीं, जियेश द बॉल, लेकिन नाइस क्लोजिंग डाउन बाय स्पर्स रादर इस बार. लेकिन लॉफ्टस चीक गेटिंग द बॉल बैक. हाँ, और जियेश सूर्यांशु इसलिए शुरू कर रहे हैं बिकॉज ही हैज हैड 2 ब्रिलियंट गेम्स इन लास्ट 1 year अगेंस्ट स्पर्स. मुझे वही लगता है लॉजिक, और अगेन एक्सपीरियंस. चश्मा क्यों? क्योंकि चश्मा है भाई मेरा. जीके क्या हाल है भाई? शाउट आउट आपको. एब्सोल्युटली चश्मा है मेरा. मैं स्क्रीन टाइम जज करता हूँ जनरली. I have been unwell. I don't know if you guys can make out. I have been unwell. So I'm guessing it's because of too much screen time. So one of those reasons. So I am putting specs for timing. And I do have a little bit power. थोड़ा है, ज्यादा नहीं है. सिल्वा बिल्कुल यार, सेफ्टी वाल्व.
सिल्वा एंड एंजो फर्नांडिस आर सेफ्टी वैल्व। भाई अगेन हमारा स्टॉप वॉच देखिए, आई होप यू गाइस आर इन सिंक। सब लोग कहाँ देख रहे हैं, टीवी पर? पीपल विल ओवर हाइप मोड्रिक व्हेन ही प्लेज, पीपल विल ट्रोल। हाँ लेकिन ही नीड्स टू गेट गेम्स यार, वी डोंट नीड टू केयर, ही जस्ट नीड्स टू गेट गेम्स। इस गेम में ऑलरेडी मुझे लग रहा है मोड्रिक हैज बीन मिस्ड। हमारा ब्रेक हो सकता था 2 बार और दोनों बार स्टर्लिंग कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा था मुझे। देखते हैं यार डेरेन, इट डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट ऑफ द मैच। अगर ये रिएक्शन लंबा चला देन पॉसिबल नहीं होगा, और ये रिएक्शन छोटा रहा देन आई विल सेट दैट अप एज वेल। वैसे भी नोटिफिकेशन तो आ नहीं रहा यार अपने। और आप लोग लाइक कर दो तो हेल्प करेगा सर्टेनली, यूट्यूब प्रमोट करेगा। दैट्स अ कम्युनिटी पोस्ट एज वेल एज माय स्ट्रीम। थैंक्स अ लॉट। कुलुसेव्स्की वॉकिंग पास चिलवेल, डजंट एग्जिस्ट भाई। चिलवेल बैडली डन, और वहां आई थिंक ब्रेक हो सकता है भाई साहब। दिस इज पैनिक टाइम्स। डेविस 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 टू कुलुसेव्स्की यहाँ पर। केन 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 शॉट ली नहीं यार, बचा लिया यार कुलीबाली। अरे भाई साहब, नो वे, व्हाट वाज दैट? चिलवेल, टेरिबल मोमेंट बाय चिलवेल, टेरिबल मोमेंट। Again, Reece James भी यार, he got beaten by Harry Kane like it doesn't exist. Not good defending by Chelsea. दोनों full backs doing badly. Thiago Silva, not Koulibaly. Thiago Silva, भाई उसको लगी भी है लगता है. I hope he's fine, bro. Thiago Silva. भाई अगर Thiago Silva इंजर्ड हो गया ना, तब तो भाई सीजन खत्म. सच में यार, मतलब he is a must have. I hope and pray that he's fine यार. This is bad. Again भाई, क्या बोलते हो अभी तक? क्या बोलते हो अभी तक मैच का? क्या लगता है, मतलब हु हैज बीन इंप्रेसिव? फॉर मी इट हैज बीन सो आई वुड नॉट से इतना इंप्रेसिव रहा है कोई भी। ब्रेक में वी हैव गॉटन बीटन ट्वाइस, दे हैव ऑलमोस्ट गॉटन बीटन ट्वाइस, लेकिन आई थिंक हमने मिस किया लेफ्ट विंग में मोड्रिक को, क्योंकि हमें चाहिए समवन हु कैन गेट इन बिहाइंड विद जीएश बीइंग देयर, एंड आई थिंक स्टर्लिंग इज नॉट दैट गाय अभी तक जो दिखा है। मे बी द फैक्ट इज स्टर्लिंग भी इंजरी के बाद बाहर बाद में आया, फर्स्ट स्टार्ट आफ्टर इंजरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मे बी दैट इज व्हाई ही इज नॉट रनिंग एज फास्ट। लेकिन हम सब जानते हैं मोड्रिक का पेस, with Ziyech being there, मुझे लगता है Mudryk would have worked better. But anyway, रोमेरो को मारने का मन करता है। रेफरी बहुत बेकार है भाई। नहीं, फ्री किक तो दिया होगा ना, आई एम होपिंग इज गिवन द फ्री किक। हैवर्ट्स नॉट वर्थ द स्ट्राइकर, हाँ डेफिनेटली ही इज नॉट। मैं दावेदार तो फफाना में चाहता था, लेकिन भाई बाडियाशिले ऑलरेडी वार्म अप कर रहे हैं, दैट्स नॉट गुड साइन। फफाना भी वार्म अप कर रहे हैं। हाँ तो गौरव वही है, दावेदार तो फफाना स्क्वाड में ही है फॉर वॉट एवर रीजन, वो पॉटर ही जानते। और अब अगर हैवर्ट्स और ओबामेयांग के बीच में सोचोगे तो मे बी हैवर्ट्स का लास्ट मैच थोड़ा सा इम्पैक्ट था, दैट्स व्हाट ही सीइंग, प्लस थोड़ा सा हिस्ट्री अगेंस्ट स्पर्स। आई नो ओबामेयांग का भी है, लेकिन आई थिंक हैवर्ट्स हैज हिस्ट्री विद चेल्सी अगेंस्ट स्पर्स ना। हाँ डेफिनेटली गौरव, थैंक्स फॉर दैट। नहीं वेदर चेंज के कारण हुआ था, एज वेल एज स्क्रीन टाइम, आई एम स्विमिंग इज बिट ऑफ बोथ। Romero Mina, most punchable face ever. Matata United trying to question the language of Derin, but कोई नहीं। एसपी को कैसे मारा लास्ट मैच में, ओनली येलो। वाओ भाई, वो तो आई डोंट नो व्हाट टू से यार, मतलब इज दिस सम रेफरी एंड रूल्स मैन। कुलुसेव्स्की विद द कॉर्नर, भाई पेरिसिच नहीं है, याद रखिए इन द स्टार्टिंग 11। ओ मैन, बॉल इन। चलो फ्री किक दिया गया है, तो चेल्सी के लिए अभी गोल किक है। नहीं, सिल्वा इज फाइन ब्रो, सिल्वा इज फाइन, टचवुड, क्रॉस योर फिंगर्स। रोमेरो इज डूइंग शिट हाउसरी लाइक रूडिगर। रोमेरो है यार, उसके उसमें है वो, वी ऑल नो दैट। नहीं यार गौरव, वो कब तक रहेगा, कहीं ना कहीं वो करना पड़ेगा ना, इज अ रोलर आफ्टर ऑल। लुक्स लाइक वी विल कंसीडर इन द ब्रेक। यार दैट इज वाई ऋषभ, बहुत लोग बोल रहे थे कि व्हाई डिडंट वी गो थ्री द बैक, आई थिंक आपने भी पूछा था शायद, तो थ्री द बैक वाज एन ऑप्शन, लेकिन वो ये इट्स अ मस्ट विन, इट्स नॉट अ मस्ट ड्रॉ, इट्स अ मस्ट विन। तो आई सी हम क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं फोर द बैक। हो सकता है जस्ट से यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे थे वी माइट हैव जीएस प्लेइंग विंग बैक, मे बी लॉफ्टर चीप प्लेइंग विंग बैक यार। अगर टू कर लेते तो इट माइट बी इन गेम मैनेजमेंट वाला मोमेंट। लेकिन हाँ, ब्रेक में खाली चेल्सी नहीं, मैं तो बोलता दोनों ही टीम्स थोड़ा वनरेबल लग रही है ऑन द ब्रेक। ओ शिट यार, सिल्वा इज गोइंग ऑफ, सिल्वा इज गोइंग ऑफ,
Fofana is coming on. Harry Kane bro. लेकिन उसकी गलती नहीं थी, he just went for the challenge और मोमेंटम था, तो आई कैन सी व्हाई दिस हैपेंड. लेकिन आई होप भाई सिल्वा अगर बाहर है ना, इमेजिन हिम बीइंग आउट फॉर डॉर्टमंड ब्रो. वी हैव लीड्स कमिंग अप बाय द वे, एक और राइवल क्लब. फिलिक्स भाई, फिलिक्स पास करता है. अरे यार नाइस शॉट, लेकिन फिलिक्स शुड हैव गॉट स्टर्लिंग इन. स्टर्लिंग वाज मेकिंग अ रन थ्रू द मिडल, गेट हिम इन ब्रो. थ्रू बॉल खेलो थोड़ा. पता नहीं यार डेरेन भाई, बैड लक ही मरा हुआ यार. कोई नहीं, पॉजिटिव विल ट्राई एंड थिंक पॉजिटिव. फोफाना के लिए इट्स अ गुड मोमेंट अगेन कमिंग ऑन अ सब्स्टिट्यूट, हो सकता है. भाई सिल्वा नीचे बैठ गया यार. आई डोंट थिंक ही कैन कंटिन्यू. दैट्स रियली बैड, रियली बैड. भाई मैं क्या बोलूं यार, मतलब आई हैव नो वर्ड्स टू से दिस. लक भाई, वेयर डू यू फाइंड लक यार? इतना बुरा लक, इज दिस अ कोइंसिडेंस? बार बार हमारे प्लेयर्स इंजर्ड. सिल्वा याद रखिए लास्ट वीक ही वाज अगेंस्ट साउथहैम्पटन रेस्टेड, इज कमिंग बैक. इंपैक्ट इंजरी है, सो आई एम होपिंग इट्स नॉट अ मेजर इंजरी, क्योंकि बंदा चल रहा है. लेकिन वी ऑल नो दैट इन द पास्ट आल्सो दिस हैपेंड और इट हैज बिकम वर्स. Terrible moment for Chelsea. Thiago Silva, our captain, as it is by our club captain Aspilicueta, he's out because of concussion. We all know that, and hope he gets well very soon. But who's the captain now? सब लोग बोलिए, who should be the captain on the team? Kai Havertz, Kepa, या Ziyech? इंटरेस्टिंग रहेगा. कैप्टन कौन? कैप्टन सामने रीस जेम्स, या रीस जेम्स आई गेस. देखो लॉन्जिविटी के हिसाब से तो होना चाहिए कौन? केपा होना चाहिए एक्चुअली ना, लॉन्जिविटी. भाई एनीवन नोज हु इज द कैप्टन नाउ? एनीवे डजंट मैटर नाउ, बट सिल्वा आई होप ही गेट्स वेल सून यार. रीस बोल रहे तनिष्क. ओके ओके, गुड मूवमेंट बाय स्पर्स. 1-2 खेला उन्होंने. फिलिक्स को ज्यादा क्लोज डाउन करना पड़ेगा. चिलवेल इज हैविंग अ बैड गेम. चिलवेल कैन नॉट हैंडल कुलुसेस्की यार. स्टर्लिंग ओके. रीस जेम्स है. ओ भाई शॉट. कुलुसेस्की एंड केन भाई ब्रिंगिंग इट ऑन. लॉफ्टस चिक, हाँ लॉन्जिविटी के हिसाब से लॉफ्टस चिक होना चाहिए. करेक्ट सॉरी, ऑब्वियसली. या लेकिन आई थिंक रीस जेम्स इंटरेस्टिंग रहेगा कैप्टन आर्मबैंड. लेकिन कौन रखा है? रिमेंबर इवन कॉन्टे इज नॉट ऑन द साइड लाइंस. अगेन आई होप ही गेट्स वेल सून पीपल. ओके भाई स्टर्लिंग कुछ कर दे यार. आई एम मिसिंग मोड्रिक यार. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. स्टर्लिंग इज डिसेंट एट बेस्ट. भाई हमें चाहिए स्टर्लिंग नॉट ऑन द विंग्स यार. आई नीड स्टर्लिंग टू काइंड ऑफ बी इन द फिनिशिंग स्पेस, सच में बोलो तो. एनीवे हैवर्ट्स, मैं सच में बोलूं हैवर्ट्स इज एट सम गुड रन्स एंड गुड पोजीशनिंग. थोड़ा सा स्लो बिल्डअप किया है, लेकिन आई थिंक हैंडबॉल अपील है हैवर्ट्स का, लेकिन नहीं मिलेगा. बहुत पास थी बॉल. रोमेरो भाई चल जा भाई, तू 5 साइड फुटबॉल खेल. तू गुस्सा दिला रहा है रोमेरो, आई स्वेयर. एनीवे कोई नहीं. नटमैग हैवर्ट्स हैड अ गुड मोमेंट बिफोर दैट, डजंट मैटर. व्हाई ऑन द वर्ल्ड यूवेंटस सोल्ड बेंटंकर एंड कुलुसेस्की? यार बिकॉज मनी. और क्या बोलो. बेंटंकर एक्चुअली ही डिडंट हैव सच अ गुड सीजन द लास्ट सीजन जस्ट बिफोर कमिंग. ही इज डन वेल यहां पर आकर. भाई एंजो फर्नांडेज लूजिंग द बॉल, वेरी कैजुअल, लेकिन वेल डन यहां पर बाय लॉफ्टस चीक इफ आई एम नॉट रॉन्ग. भाई ऑफसाइड. फिलिक्स शुडंट हैव बीन ऑफसाइड यार. तू देख रहा था अक्रॉस द लाइन. कोई नहीं, चलो भाई. एवरीवन इन द चैट, आई एम टेकिंग कमेंट्स यार. मैं पढ़ रहा हूं. आई एम हाइलाइटिंग अ फ्यू ऑफ देम फॉर श्योर. अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीवन, एंड आई मीन ईच एंड एवरीवन, भाई लाइक बटन ठोक दीजिए. इट सर्टेनली हेल्प्स. यस मेरा चेहरा बुरा है, मैं शेव भी नहीं किया, मेरी तबीयत खराब है. बट does all that really matter when here is the fan and we are watching together like an almighty fam? I don't think it should, right? I know it does, but that's the reality of life.
अगेन आई विश आई हैड मोर अट्रैक्टिंग पावर ब्रो. लेकिन होपफुली आप लोग बने रहे और गिव मी अ लॉट ऑफ सपोर्ट, नॉट जस्ट नाउ बट फॉरएवर. एंड अगेन मच लव फॉर एवरीवन हु सपोर्टिंग मी ब्रो, ट्रस्ट मी. चिलवेल हैज हैड द आई थिंक वेरी पुअर गेम. अभी तक मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ बाय चिलवेल, सच में बोलूं तो. चिलवेल शुड हैव डन मच बेटर. मतलब वो लग रहा है ना दैट वो स्ट्रांग नहीं लग रहा ऑन हिज फुट. ही इज नॉट लुकिंग स्ट्रांग. लाइक बहुत ही ये भी लग रहा है. एक सेकंड. वेस्ली फफाना गेटिंग प्रेस बाय रिचार्लिसन. प्रीटी श्योर ये फ्री फ्री किक है. अरे भाई बच गया, बच गया जस्ट अबाउट. सर प्लेयर्स थैंक्स ब्रो. टॉटनहम आर किलिंग आवर प्लेयर्स. बैक थ्री खेल रहे हैं क्या? पता नहीं यार, जो भी खेल रहे हैं अभी यार, फर्स्ट फ्यू मोमेंट से वी हैव रिग्रेस्ड. नहीं नहीं, बैक थ्री तो नहीं लग रहा, बैक फोर ही लग रहा है मुझे. भाई वेल डन बाय चिलवेल इन दैट मोमेंट. चिलवेल भाई. एमरसन रॉयल गेटिंग बैक. कोई नहीं. अरे Pudin, I don't claim to be that as well, Pudin, but anyway, thanks a lot, bro. Just that comment and support means a lot to me. And of course, at the end of the day, it's a set of friends watching the way I see it. How can Emerson Royal be so good? नहीं, वो confident moment में अभी. He is in a confident zone in the last couple of weeks. इसलिए पेड्रो पोरो नहीं खेल रहा, याद रखिए. कभी कभी ये भी होता है ना, when you get a new signing as right back, your old signing kind of does well. Remember Alonso, जब we had signed Chilwell, Alonso did well for the first few months. Ziyech, bad corner, bro. कोई नहीं. Sterling with a cross. Reece James to Sterling. Sterling क्या करेगा वापस? I think he'll win a. Well done. Well done by Sterling, bro. Richarlison, diver, bloody idiot. Richarlison ना. सच में मैं बोलना नहीं चाहता. Give me those vibes, bro. Give me those vibes. कोई नहीं. Last match Arsenal rejected guy was Prime Evra, now Mr. Royal. Shot on target. पता नहीं यार. It doesn't matter, GK. आता हूँ. We'll come to stats and all that in half time. Don't worry. चिलवेल को दो और गाली, he will do it. भाई चिलवेल, लेकिन apart from that one moment, he's had a shit game. भाई Loftus-Cheek. भाई तेरे पास Sterling shows more strength than Loftus-Cheek. What an idiot, man. अरे I try to यार डेरिन. देखते हैं. होप सो यार, आई होप सो. बहुत दिन हो गया सेलिब्रेट किए हुए प्रॉपर. बहुत दिन हो गए. आई एम लॉन्गिंग फॉर अ गोल. लीव भाई जीत का सेलिब्रेशन, एक गोल कर दो यार. ओके जियेश ट्राई क्या कर रहा है भाई तू इतने सारे बंदों के साथ? बहुत डिफिकल्ट था यार, तू हजार थोड़ी है. प्राइम हजार्ड आई मीन, नॉट आज का हजार्ड. पीपल विल बी लाइक रियली. प्राइम हजार्ड इज लाइक अ गोटेड चेल्सी प्लेयर ब्रो. एनीवे, अगेन मडुएके होता तो मे बी फिजिकलिटी ज्यादा होता ऑन द राइट विंग. ये भी एक चीज बोलना चाहूंगा. जियेश का फिजिकलिटी इज नॉट एज मच. यार कमेंटेटर बोला केजी रहा है. आई डोंट थिंक द फर्स्ट 10 मिनट्स वाज केजी. लास्ट 15 मिनट्स हैव बीन केजी. मैं एग्री करता हूं. आज का हजार्ड इज बेटर देन जीएच. नहीं यार, कम ऑन. आई नो फॉर चेल्सी जीएच ने इतना नहीं किया, लेकिन स्पर्स के साथ लास्ट सीजन भाई 2 मैच में ही डिड वेल. हिम, कांटे, रूडिगर एंड हैवर्ट्स वर स्पर्स के साथ हमारे हीरोज इन 4 मैचेस, 4 ऑफ देम, इफ आई रिमेंबर राइट. हाँ भाई, अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीवन, मानव, थैंक्स फॉर सेइंग दैट ब्रो, बट आई एम वेरी शॉक्ड दैट वी डोंट इवन हैव 100 लाइक्स येट. कम ऑन, क्या हो रहा है आज? यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं दिए थे क्या बहुत लोगों को? गोल हो गया, बच गया मैन. हॉयबर्ग हिटिंग द पोस्ट. आई थिंक डिफ्लेक्शन था. रिचार्लिसन उठ जा, तू रो मत भाई. रिचार्लिसन उठ जा भाई.
रिचार्लिसन उठ जा, नाटक बंद कर अपना। साले हमारे तो तियागो सिल्वा को बाहर निकाल दिया, लेकिन व्हाट अ शॉट ब्रो फ्रॉम हॉयबर्ग। एक सेकंड, ये कमेंटेटर बोल रहा है केपा रूटेड टू द स्पॉट। भाई देयर वाज अ डिफ्लेक्शन मिस्टर कमेंटेटर, इट वाज नॉट एन इजी मोमेंट फॉर केपा। भाई वेस्ली फोफाना ओपी इन द चैट। Wesley Fofana got that extremely important tackle, extremely important tackle। मैं बोलता हूं रिचार्लिसन भाई साहब, तू ड्रामे कंपनी ज्वाइन कर ले यार मेरे। बट दिया है फ्री किक शायद सालों ने, कोई नहीं। हॉयबर्ग ऑलमोस्ट स्कोर्ड। No, Koba is not there. He cannot come. Yes, he cannot come. He's not on the bench even. Illness, I believe, right? That's what you guys said. Whole starting level has more goals than Richarlison. कॉर्नर है, नॉट अ फ्री किक। ओके, हाँ, क्योंकि वेस्ली फॉर्नर टच किया था। फेयर इनफ। रिचार्लिसन नौटंकी नंबर 1 ब्रो, नंबर 1 नौटंकी है वो। लेकिन वही चीज वी मिस यार एज अ चेल्सी स्क्वाड ना, वी मिस दैट। द शिट हाउसरी शुड बी दैट। रोमेरो रिचार्लिसन जो करते हैं ना, वी नीड दैट एक्चुअली। वी नीड मोर ऑफ इट। इतना धीरे क्यों चल रहा है रीस जेम्स, थोड़ा जल्दी चल यार। That is a yellow card. Now, if that is not a yellow card, this was an attack. भाई अटैक को ब्रेक किए है, that has to be a yellow card. रिचार्लिसन साले तुझे, भाई मैं usually I don't be like this. Richarlison is pissing me off big time. That is a yellow card, man. The guy was on a run. It was an attack. Clearly, it is the only clear. भाई really? I know it's just a yellow card, but things are against Chelsea, भाई। इतने पैसे स्पेंड कर दिए, we are not getting yellow cards against the opposition easily. That is what happens, and this will not be spoken about enough. Every match is happening. It's not the reason हम जो हार रहे, it's not the reason जो हमारा एकदम shit form है, but every match bloody opposition भाई सब लोग getting away with easy yellow cards, getting away. How is that not a yellow card यार? Reece James was on a run. हमारा एक run था proper onto the goal, and Richarlison had no intention to play the ball. That is a yellow card all day long. Muse bhai, welcome to the family, bro. Much love to you for coming on. Absolutely much love to you. Yeah, seriously, bro. And I know what, मैं रिचार्लिसन को भी ब्लेम नहीं करूंगा, मैं करूंगा ब्लेम साले इंग्लिश रेफरीज को। हर मैच में कुछ ना कुछ इश्यू आ रहा है यार। भाई कांट दे ब्लाइंड और व्हाट? आर दे ब्लाइंड? Seriously, man, I'm so pissed off right now with the refereeing, man. Every game. हाँ, लोग सोचेंगे कि मैं यहाँ पर क्रिप कर रहा हूँ रेफरी और that's a excuse. No, it's not an excuse. We are horrible. We are pathetic. लेकिन each game में it's not a coincidence. हर गेम में, every game there's an issue. Every game में। भाई देखिए, again, भाई Tottenham have got a game plan, भाई, to get that थोड़ा थोड़ा, you know, free kicks against etc. But कोई नहीं। या ऋषभ, आई हियर यू एब्सोल्युटली। सेम चीज टूकल ने किया था, लेकिन मे बी हमने जो साइनिंग्स किए ना, टू चेंज दैट ऋषभ, और उसके लिए वी हैव टू सफर, एंड दैट पार्ट आई एक्चुअली अग्री विद। बट हाँ, सर्टेन गेम्स में अभी भी 3 द बैक जाना चाहिए। आई अग्री विद दैट। कुलीबाली कंसीडिंग अ कॉर्नर, आई थिंक इट्स एन इंपॉर्टेंट कॉर्नर टू कंसीड, सच में बोलता तो। हाँ भाई, रिचार्लिसन को हर कोई गाली दो, मैं बहुत रेयर होता हूँ, लेकिन आई वुड अप्रूव दैट। इमर्सन इज फाउलिंग फेलिक्स। अच्छा, बाय द वे, जस्ट टू लेट यू ऑल नो, यूट्यूब का नया गाइडलाइंस है भाई, लाइव में अगर मैं गाली दूं ना ज्यादा तो मेरा स्ट्रीम टेकन डाउन हो सकता है। जस्ट सेइंग, डोंट दैट मी देता हूं एनीवे, बट आई एम जस्ट सेइंग। भाई मुसेब, आर वी कनेक्टेड ऑन इंस्टाग्राम? आप ट्विटर या इंस्टाग्राम में तो मुझे डीएम करिए यार प्लीज, मैं आपको ऐड करता हूं ऑन द मेंबर्स ग्रुप आफ्टर द स्ट्रीम, ठीक है? इंस्टाग्राम ग्रुप है अपना। भाई केन विद अ नाइस थ्रू बॉल अटेम्प्ट, लेकिन भाई वेस्ली फोफाना डूइंग वेरी वेल। हाँ, नॉट अ बैक पास, तो पकड़ ले भाई केपा, एब्सोल्युटली। टॉटनहम स्लोइंग चेल्सीज अटैक बाय कंसीडरिंग, बिल्कुल टैक्टिकल फाउल्स है। और वो रेफरी को क्यों नहीं दिख रहा मानव? Why isn't the referee seeing? Is he blind? Does he not know football? वो क्या भाई रग्बी खेल कर आया है क्या रेफरी? वेस्ली फोफाना गॉन। पीपल मार दो भाई पकड़ के सब लोग।
Don't tell me it's a hamstring. Oof. Question marks on his signing, bro. I have to say. हाँ, चैट में आई थिंक इट्स नॉट सीन. हिंदी में दो ताकि पकड़े नहीं यूट्यूब. नो, आई डोंट सजेस्ट इट, लेकिन इफ यू कैन नॉट कंट्रोल दैट इज ओनली देन. हाँ हाँ बिल्कुल यार. भाई देखिए, फॉर मी नो, ये जो वेस्ली फोफाना की इंजरी है ना भाई, दर्द देता हमेशा. मतलब वी हैव साइंड हिम फॉर व्हाट, 80 million. वेरी गुड प्लेयर, एक्सीलेंट प्लेयर, डोंट गेट मी रॉन्ग. If you know what, if Harry Kane does not get a yellow card here, I don't know what to say. भाई साहब, दिस इज हाउ, भाई जो 80s और 90s में जो मैराडोना अर्जेंटीना के अगेंस्ट खेलते थे, और अदर जो लेट 80s में भाई सिमियोने यूज्ड टू डू, वो कर रहे भाई. जो एंटोनियो कॉन्टे खुद एज अ प्लेयर यूज्ड टू डू, दैट इज व्हाट स्पर्स आर डूइंग. हाउ इज bloody this referee not giving a yellow card, man? I'm very pissed off. How the fuck is this, man? Has he lost it or what, is referee? वार्निंग दे रहा क्या भाई? तेरा सोता है क्या हैरी केन के साथ, हरामी साला? रियली, आई एम सो पिस्ड ऑफ भाई. दिस इज totally not acceptable, bro. Just because we have money, it really doesn't mean that opposition doesn't get yellow cards. Everyone is bloody doing fouls, man. Is he blind? Warning दे रहा है साला, हरामी साला रेफरी. Bhai, I know it's a derby, but come on, bro. It's happening from one side. It's clear. Good one, Sterling, bro. मारो यार भाई, मैं तो बोलता मारो, एक होना चाहिए, एक प्रॉपर. Show them that even we have balls. हाँ, कोई नहीं. समरी क्या भाई, पहले 10 मिनट में काउंटर पे चल रहा था. ऑन द ब्रेक बोथ द टीम्स आर गेटिंग बीटन. हाँ, लंदन डर्बी तो क्या भाई, मारोगे क्या? मारोगे क्या? मारने के लिए है क्या? फुटबॉल खेलने के लिए है? बाद में लंदन डर्बी है भाई. बाद में रग्बी चल रहा है यार, टाइगर बीच टॉटनम के साइड से. एंड रेफरी पैसे लिया है, लेट्स बी रियल. टॉड बॉली के पास पैसे, तो वो बोला भाई डैनियल लेवी तू भी दे मुझे पैसे यार. भाई अगेंस्ट चेल्सी कुछ ज्यादा ही नहीं है. इज इट अ कोइंसिडेंस और am I reading too much? The fact is everyone thinks we are again trying to buy the league. How has this game not had a yellow card? Remember, Thiago Silva is out injured. आई नो वो केन की गलती थी, नहीं थी उस मोमेंट में, लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉन्टैक्ट कुछ ज्यादा ही हो रहा है यार. दिस गेम डज नॉट हैव अ येलो कार्ड. आर यू सीरियस? स्पर्स का स्पेशली. भाई देखिए, अब इतना बैटल होगा, वी विल बी हैप्पी विद द ड्रॉ. वी आई एम नॉट गोना टेक दिस, ब्रो. वी हैव टू रेज आवर फिजिकल गेम एंड स्टैंडर्ड इन क्वालिटी एज वेल. एक सेकेंड, रूबन लॉफ्टस-चीक, तो बैक हील उस जगह पे मत कर भाई, तो डीएम खेल रहा आज. पता नहीं यार, पैसे लिया है, डायरेक्टली बोलता हूं. या भाई ठीक है डेरिन, काम डाउन, इट्स ओके ब्रो. This, as a Chelsea, we need to basically, maybe accept it. लेकिन साथ साथ में हमारे प्लेयर्स घेर क्यों नहीं रहे यार रेफरी को? मैं भाई घेर लेता भाई. इमेजिन अ माइकल बैलक, डीडियर ड्रॉगबा, जॉन टेरी ऑन द पिच ब्रो. अभी इमेजिन दैट, इमेजिन देम बीइंग ऑन द पिच. अगर भाई ऑपोजिशन ऐसे करती, इमेजिन जोसे मोरिन्यो बीइंग ऑन द साइडलाइंस. वेयर द हेक इज पॉटर ब्रो? वेयर द हेक इज पॉटर? When referee is bloody shitting in his pants, where the heck is Potter? Pissing off, man. Last 20 minutes में Tottenham have not really allowed us to play the game. Yes, tactical है, but they have crossed the line in my opinion.
बिल्कुल, दैट्स व्हाई वी मिस प्लेयर्स लाइक दैट. 100. एक सेकंड, फिलिक्स का रन नहीं, आई थिंक गोल किक है. कोई नहीं, वेल डन वहां पे बाय स्टर्लिंग एंड फिलिक्स. दिस इज व्हाई रुडिगर स्टेप्ड अप. ही वाज एन ass and he used to make great tactical fouls. In fact, भाई somewhere on the line you need to stop the game and you need to make a statement. जो एंजो फर्नांडिस कर रहा था लास्ट 2-3 गेम्स में, वो भी आज इस गेम में नहीं दिख रहा. यू हैव टू स्पीक टू द रेफरी. थियागो सिल्वा हमारा कैप्टन इज नॉट ऑन द पिच. हु इज द ब्लडी कैप्टन? दैट गाय नीड्स टू स्पीक टू द रेफरी. 15 मिनट के बाद में गेम हुआ ही नहीं यार. गेम हुआ क्या 15 मिनट के बाद में? यप यप. नहीं, फेयर इनफ मुसेब, यू हैव अ पॉइंट सर्टेनली. लेकिन हर एक गेम हो रहा है यहां पर. सी देखिए, 50-50 बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से मुसेब, डोंट गेट मी रॉन्ग. ऐसा नहीं है कि यार हम डिजर्व करते थे गोल्स, इतना मतलब बुरा रेफरिंग भी नहीं हुआ है. बट 50-50 जो भी डिसीजंस थे, 90% चेल्सी का अगेंस्ट गया यार. 90% मैं तो बोलता हूं इन द लास्ट फ्यू गेम्स आफ्टर द विंडो. नो यार, आई विल काम डाउन एब्सोल्युटली. इफ यू आर वाचिंग द मैच विद मी यू विल रियलाइज व्हाट ये क्यों हो रहा है. बट होपफुली भाई आप बने रहे एब्सोल्युटली. अगेन आई एम नॉट शाउटिंग एट यू ब्रो शाश्वत, shouting at the referee, shouting at our players not being showing that character. Maybe I'm not able to see on the mobile phone, लेकिन आप बैंड दिख नहीं रहा है मुझे. लेकिन I'm guessing it must be Loftus-Cheek or Reece James only. भाई चिलवेल कहाँ जा रहा है तू? हाँ नहीं, अच्छा चलो ठीक है, फिलिक्स है. एक सेकंड, लॉफ्टर-चीक पीछे जा थोड़ा. लॉफ्टर-चीक डोंट जॉग, इट्स नॉट अ पार्क ब्रो. रन रन जॉ लॉफ्टर-चीक रन. आई नो मैं बैठ कर तो ऐसे बोल रहा हूँ जैसे कि मैं भागूंगा, लेकिन द रियलिटी इज यार दे शुड बी डूइंग मोर इन दैट मोमेंट. आर वी बीइंग फिजिकल इनफ? नो इज द आंसर. या सिल्वा इज इंजर्ड, इज आउट. अब पता नहीं कितना लंबा के लिए आउट है. ही वाज वॉकिंग सो आई एम होपिंग इज नॉट सो बैड, बट लेट्स सी. यस, प्लीज लाइक द स्ट्रीम एवरीवन, हेल्प्स. ब्लेम हैज टू बी गिवन टू पॉटर. प्लेप, बिल्कुल बिल्कुल, यू हैव टू स्पीक. इवन पेप, यस आई एग्री 100%, 100%. एनीवन एंड एवरीवन. भाई वेयर इज पॉटर? मे बी कैमरा नहीं दिखा रहा है फॉर वॉट एवर रीजन, बट इट्स वेरी शॉकिंग दैट ही इज नॉट क्रिएटिंग अ सीन. ही शुड बी क्रिएटिंग अ न्यूसेंस रेफरी के मुंह पर. Richarlison with a shot. Richarlison, the flop of the season, hitting a sixer. Richarlison, bloody idiot. I'm pissed off, bro. I'm pissed off. Richarlison ने बहुत शिटहाउसरी किया है इस मैच में. बिल्डअप इंटेंसिटी सो लो. या इट इज. पहले 10 मिनट के बाद में इट हैज रियली गॉन लो. देखिए यार, देखो, पॉटर माइट बी अ ग्रेट मैन, ही माइट बी अ ग्रेट टैक्टिशियन, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, कल को ही विंस व्हाटएवर विद चेल्सी. और हाँ, मैं आप आज मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ यार, कल को लेट्स अज्यूम दैट ही गेट डज वेल. आई होप ही प्रूव्स मी रॉन्ग, ही विंस एवरीथिंग फॉर चेल्सी. ठीक है, एवरीथिंग पॉसिबल, नो मैटर व्हाट, बट ही विल नोवेयर गेट क्लोज टू जोसे टुकल एंड कॉन्टे फॉर चेल्सी. आई सी, आई एम सीरियस अबाउट दैट. यस, मैं कॉन्टे भी बोल रहा हूँ, डिस्पाइट जो हुआ था 2-2 उसमें कॉन्टे का जो रवैया था, उसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ, इमेजिन दैट. एंड एंचेलोटी इज वेल, इन फैक्ट. ये चारों, I don't think he's going to, because those guys cared, bro. Those guys cared. How has this game not had a yellow card? Not that I'm saying कि ये वाला yellow card होना चाहिए, लेकिन पॉटर, चलो आ गया भाई साइडलाइन में. हाय पॉटर, कैसे हो भाई? पॉटर बात कर रहे हैं. फाइनली कैमरा इज ऑन हिम. Tactically he's very aware though. Mudryk needed a half time. Yeah, 100% agreed. Mudryk has been a miss. पहले 10-15 मिनट में as much as Sterling बुरा नहीं किया है भाई, वो गेटिंग इन बिहाइंड वाला मुड्रिक के पास है, जो जिएश के साथ हम आपको चाहिए ऑन द अदर फ्लैंक. बिल्कुल. How has, please tell me, how has Harry Kane, Romero, Richarlison not got yellow cards? I have no bloody idea in that. I have no idea. Isn't the system looking more of a 5-2-3 for Chelsea? Ziyech has been playing deep. हाँ मतलब in possession versus not in possession वाला बात है मानो. So that is what he's doing. But
I think he attack maybe is needed, na. So I think it's more of fluid positioning by Ziyech. भाई इतना स्लो बिल्डअप क्यों कर दिया यार ऑल ऑफ सडन? व्हाई सो स्लो? आर वी लाइक हैप्पी टू गो टू हाफ टाइम विद द ड्रॉ? आर वी हैप्पी विद द ड्रॉ रियली? शॉट्स ऑन टारगेट अपना एक हुआ है, ओके। आई थिंक एक जाओ फिलिक्स का चांस था बस। नहीं यार अनमोल, आई डोंट थिंक सो। बारसा नीड्स अ प्रॉपर लेफ्ट विंगर। ही इज अ मोर लाइक अ कैम सेकंड स्ट्राइकर। वो खेल सकता है वहां पर, लेकिन एनीवे यू हैव टू बी, या बिल्कुल यू हैव टू बी दैट। बिल्कुल हरामी बनना पड़ता है। सिंपल सी बात है। Why Son not starting? Because it's a derby game और उनको चाहिए था shit housery from Richarlison, वो he's been successful in doing, and referee has been successful in not giving him yellow card for whatever reason. Sterling, oh nice shot bro, nice save by Foster. Sterling cutting inside and nice shot by him, but कोई नहीं। या ही शुड बी डूइंग इट बिल्कुल। हाँ एक बार हुआ था मुझसे, जब वो सुचेक का हैंडबॉल था ना, कि नाइस से वो सार्कास्टिक करता है, द वे ही सेज इज, गुस्से में नहीं बोलता, वो सार्काज्म यूज करता है पॉटर। आई थिंक हावर्ड डिड वेल टू डक डाउन बाय द वे। अच्छा बाय द वे सब लोग, अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीवन यार टू हिट दैट लाइक बटन। फॉर व्हाटएवर रीजन यूट्यूब हैज नॉट गिवन नोटिफिकेशंस आज तो बहुत पीपल ऑन माय सब्सक्राइबर लिस्ट आई बिलीव, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। तो भाई सब लोग लाइक बटन दबा दीजिए। फॉर वॉट एवर रीजन लाइक्स बहुत कम हुए आज। क्या हुआ भाई? आज सुबह वीडियो निकाला तो उसमें भी लाइक्स बहुत कम हुए। क्या क्या गलती कर दिया यार मैंने? एवरीवन डू लेट मी नो इन द चैट यार। व्यूज आए थे उसमें डिसेंट, नॉट ग्रेट बट अगेन नॉट टू बैड, लेकिन लाइक्स बहुत कम हुए थे। तो क्या रीजन है? डू लेट मी नो यार। लाइक्स जो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, व्हाई आर पीपल नॉट डूइंग इट? द मोमेंट आई से इट 5 पीपल ड्रॉप, यस मैं मांगूंगा यार लाइक्स। मेरा हक है मांगने का। यस मैं कोई एंटाइटलमेंट नहीं है कि यार मैं एक्सपेक्ट करूं फ्रॉम ऑल हु आर वाचिंग टू दैट, बट आई थिंक लेट्स बी ऑनेस्ट, वी काइंड ऑफ कवर so much content that I think we deserve it, and you guys are part of it. You guys deserve it as well. So let's have more likes, people. That certainly helps. हाँ एंजो हैज टू बी लिटिल बिट बिहाइंड, और थोड़ा सा सेफ्टी। चिलवेल थोड़ा सा एनर्जी दिखा यार, गेट सम एनर्जी, गेट सम भाई पॉजिटिविटी गोइंग। इतना धीरे से आजा बॉल ले ले डाल ले, व्हाट इज दिस ब्रो? दैट बॉडी लैंग्वेज इज मिसिंग। डाबी का जो टॉटनहम में दिख रहा है, चेल्सी प्लेयर्स में नहीं दिख रहा, सच में बोलता हूं तो। भाई एमरसन रॉयल ऑल ऑफ अ सडन क्यों बन गया यार इतना अच्छा राइट बैक 2 मैच के? ओ यार लूजिंग द फुटिंग। स्टर्लिंग आई गेस, कोई नहीं। Sterling is far better than Mudryk. Mudryk and Madueke is good as super sub. Okay, fair enough. Potter looks to be a great coach. Not sure about manager. He would be a great assistant manager, to be honest. Imagine him becoming the assistant manager of Chelsea. No, लेकिन हाँ, I hear you, bro. I hear you, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा स्लो कर रही है यार। आई थिंक यही ना। एम आई होपफुल ऑफ द सेकेंड हाफ थिंग्स टू चेंज, क्योंकि पॉटर हाफ टाइम में हेड राइट ट्रीटमेंट देगा। क्या पॉटर को आता है हेड राइट ट्रीटमेंट देना? कि भाई जाग जाओ, ये लंदन डार्बी है, वी आर इन 10th पोजीशन। जस्ट ए रिमाइंडर, वी माइट बी 11th कम नेक्स्ट वीक अगेंस्ट लीड्स जो होने वाला है उससे पहले, और आई माइट बी सैक्ड। डू यू वांट मी दैट? तो बात करो भाई पॉटर। या देखो हॉइबर्ग पकड़ लिया हैवर्ट्स को। हैवर्ट्स क्या कर रहा है भाई? रिटालिएट करिए यार। एक सेकंड, येलो कार्ड आया, डोंट टेल मी इज गिविंग अगेंस्ट जीएश। भाई रेफरी, आई एम गेटिंग पिस्ड ऑफ। वेल लेट मी सी हु इज ब्लडी गेटिंग द येलो कार्ड। हु इज गेटिंग द येलो कार्ड? आई स्वेयर रेफरी ब्लडी हैज टू बी सेंट ऑफ राइट नाउ। रेफरी, आर यू सीरियस? भाई 150 लाइक्स ब्रो, टाइगर बीज, लेट्स गो फॉर 150 लाइक्स ब्रो। हु इज बुकिंग? जीएश?
Havertz gets a yellow card. Okay. Referee, Saleh Harami. Man, I'm so worked up right now. No, I'm so worked up at his referee. Saleh Harami. सोया क्या हरिकेन के साथ? Sorry guys, I'm really sorry about this. I'm really sorry. This is so pissing off. It's literally match fixing, bro. Yes, हमने अच्छा नहीं खेला है. But referee giving a yellow card first to Havertz, now to Emerson, chalo, to balance the books. Referee has no balls. Referee has no balls. He's giving a red card, I feel. मिस्टेकन आइडेंटिटी बोल रहे हैं यहां पर. रेफरी, भाई रेफरी नीड्स टू गेट अ प्रॉपर ही नीड्स टू गेट. भाई जांच जा यार रेफरी. कर क्या रहा है तू? एक सेकेंड. हाउ द हेल डिड लॉन्गले नॉट गेट अ येलो कार्ड? And Ziyech did slap Emerson. It doesn't matter worst. That idiot commentator. Andha hai kya? Haan, he did slap. He gave a push. He just gave a push. It's not a slap. He just gave a push. Yeah, shoulder push kiya. It's not a yellow card. That idiot commentator. Fixer. Commentators. That entire world against Chelsea. It is not a yellow card. It is not a yellow card for Havertz and Ziyech. How the hell did Havertz get a yellow card? Someone please tell me. How the hell did... What red card? What idiot, man? Referee, man. It's not on the face. He pushed the shoulder. No way. No way. No bloody way. No way, man. This, I am losing it, man. By referee, Saleh Harami. Referee, man, get a life. It was a push of the shoulder, bloody idiot, blind. We are bloody assholes, blind assholes. Assholes, we are. Fuck off. I'm so worked up. Sorry, guys, I don't react this way, but this is how I feel. This is how I bloody feel. The entire bloody world against Chelsea. That is not a red card. एक सेकेंड. एमरसन आके पुश किया जियेश को, ठीक है, वो छाती से पुश किया, ठीक है, वो कुछ नहीं है. जियेश ऐसे करके धक्का मारा यार. इट वॉज नॉट अ स्लैप. इट वॉज नॉट अ स्लैप. ओके, लेट्स बी रियल. रेफरी हरामी. He's actually given half time. Really? Oh, I can't believe it. He's not overturning it. Is he? Okay, fuck off, man. Yes, referee, wash your face and come after half time. Referee idiot has changed the decision to a yellow. This referee has finished the game after 15 minutes. Referee is an idiot. He needs to be taken out from the referee union. This guy is an idiot. Absolutely idiot. Absolutely idiot. Number one asshole of the first order. This bloody referee is. Yes, sorry guys. मुझे नहीं करना चाहिए abuse, but this is what it is. This guy has spoiled the bloody derby. The referee has spoiled this derby, which was supposed to be a must win. आधा घंटा वेस्ट कर दिया रेफरी ने, साले ने. I'm so I need to drink some water, man. I need to drink some water. I lose it. I lose it today. Oof. Take a deep breath, Ankit. Bloody idiots. कितना करोगे यार चेल्सी के अगेंस्ट? कितना करोगे? भले फर्स्ट 50-50 decisions. Harry Kane not getting a yellow card. Richarlison not getting a yellow card. Romero not getting a yellow card. Idiots. और हैवर्ट्स को क्यों दिया था भाई येलो कार्ड? हाँ चलो, वो तो वो भी हैवर्ट्स का इज नॉट ओवरटर्न ना. हैवर्ट्स को येलो कार्ड है बाय द वे, जस्ट फॉर पीपल. इट्स कमिंग ऑन स्टार स्पोर्ट्स सेलेक्ट 1 HD ब्रो. Referee, man, seriously, man, why do they spoil these games?
यार रेफरी खेलने तब ना, खेलने नहीं दे रहा यार। टॉटनम ने बहुत टैक्टिकली फाउल किया है और करते जा रहे जब तक थिंग्स डोंट बॉयल ओवर। हाँ यार, डेफिनेटली Mikhail is welcome bro. Mikhail, if you're watching, do let me know bro if you want to come on. Again, I try and get as much panel as possible. आज थोड़ा मन था अकेले करने का यार, to be very honest. Sometimes I feel that because at some point I'm a fan. तो क्या होता है ना, with the panel being there, I cannot hear the commentary साथ में. तो I wanted to hear this commentary and साथ में I wanted to give commentary myself as well. I wanted to see exactly what's happening. It's a very important game. You know what? There will be changes at halftime for sure. Pretty sure Ziyech needs to be taken off क्योंकि I think Ziyech will lose it otherwise. लिंक नहीं देना यार, कोई भी लिंक मत देना. लिंक्स आर नॉट अलाउड इन द चैट ऋषभ, नहीं तो मेरा चैनल विल बी टेकन डाउन. डोंट ट्राई दैट इफ यू आर अ हेटर. ठीक है, तो लिंक शुड नॉट बी गिवन इन द चैट. तो मैं नहीं दे सकता, क्लियर सी बात है. स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट वन एचडी में आ रहा है, नहीं तो गो ऑन ट्विटर ब्रो ऋषभ. आप हमें फॉलो भी कर सकते हो ऑन ट्विटर, ऑलमाइटी ब्लूज एससी. रेफरी मैन, फर्स्ट ऑफ ऑल भाई दिस इज ओनली प्योरली फॉर द रेफरी. हाँ, हाफ टाइम हो रहा है यहाँ पर, और आई नो यहाँ पर मैं रीसेट कर रहा हूँ स्टॉप वॉच. व्हाट इडियट्स मैन. भाई रेफरी You serious? क्या बोलोगे यार. मतलब एक तो लेट मी टेक अ डीप ब्रेथ. लेट मी भाई, सब लोग जो भी यहाँ पर, सबसे पहले सांस ले लो. हाउ, प्लीज टेल मी समवन, प्लीज टेल मी. यस, चेल्सी हैज बीन हॉरिबल, यू कैन आर्ग्यू दैट. स्पर्स हैव बीन वेरी टैक्टिकल, यू कैन आर्ग्यू दैट भाई. लेकिन कोई बता दो, क्या रेफरी है मैच में? क्या रेफरी है कि इट्स अ 12th मैन ऑफ स्पर्स प्लेइंग? प्लीज टेल मी हु इज दिस रेफरी मैन. ये रेफरी है कौन भाई? अपने आप को समझता क्या है तू? रेफरी का आर भी पता है तुझे? डू यू नो रेफरिंग का आर बी? दिस रेफरी, व्हाट एन एसोल मैन, व्हाट एन इडियट, व्हाट अ फूल, यू नो, व्हाट अ फिक्सर दिस गाय. यस, चेल्सी ने स्कोर नहीं किया था, डोंट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट ट्राइंग टू पुट एक्सक्यूजेस यहां पर. यस, थियागो सिल्वा इज इंजर्ड बाय द वे. बहुत ही बड़ा न्यूज है ये फॉर चेल्सी फैंस, बहुत ही बैड न्यूज. बट लेट्स होप एंड प्रे दैट ही कम्स बैक सून. कैप्टन कोई है नहीं पिच पर, ठीक है. अपना एस्पिलिक्विटा ऑलरेडी इज आउट, ठीक है. कांटे इज नॉट फिट इनफ, यू ऑल नो दैट. तो भाई वी डोंट हैव कांटे, एस्पिलिक्विटा एंड सिल्वा, एंड दैट इज ह्यूज लॉस. हार्डली नहीं चेल्सी गेम्स हुए विद दैट इन द लास्ट व्हाट कपल ऑफ इयर्स. लेकिन अगेन हैरी केन भाई, नॉट जस्ट टू सिल्वा. हाँ, सिल्वा वाला मोमेंट यू कैन आर्ग्यू दैट ही वेंट फॉर द बॉल, डेफिनेटली मैं अग्री करता हूं. हैरी केन भाई क्लियरली केपा को पुश किया है आफ्टर केपा गॉट अ गोल किक, क्लियरली नेल्ड ऑन येलो कार्ड, ठीक है. रिचार्लिसन भाई एक बार नहीं, 2-3 बार किया है वो. रोमेरो वो 4 बार किया है भाई. हाउ हैव दे एस्केप्ड द येलो कार्ड? हॉयबर्ग पूरा मैच में 45 मिनट्स में ही हैज हैड दैट टैक्टिकल फाउल्स. भाई टैक्टिकल फाउल्स भी एक लिमिट होता है ना. आप 3 बार करो ठीक है, चौथी बार आपको येलो कार्ड मिलता है यूजुअली. हॉयबर्ग वो किया है भाई पूरा हैवर्ट्स को. यस, और हैवर्ट्स को येलो कार्ड मिला है, पता नहीं हुआ क्या वहां. यहां पर एमरसन आके पुश किया, उसको भी येलो कार्ड मिला, चलो ठीक है. जिएश पुश करता है उसको हाथ से, ये रेड कार्ड देता है रेफरी, और फिर रेफरी ने वीआर देखा, लकीली वीआर आस्क्ड हिम टू सी एंड देन ही चेंज्ड टू येलो कार्ड. बट आई, इन माय ओपिनियन, somewhere down the line we have not stood up for this derby. We have not understood what is the London derby, and when I say we, I'm meaning Chelsea Football Club. Graham Potter, मिस्टर ग्राहम पॉटर, रेफरी ने ऐसे किया है. मैं खाली एक फैन हूं भाई, एक तुच्छ सा फैन हूं, एक छोटा सा फैन हूं, वो खाली 25 ईयर से देख रहा हूं चेल्सी के मैचेस भाई. इफ आई कैन अंडरस्टैंड हाउ आई फील अबाउट दिस क्लब एंड द रेफरी इज डूइंग दिस शिट हाउसरी एंड टॉटनहम आर डूइंग दिस शिट हाउसरी, why can't bloody you? I know that we need some sensible heads to give tactical instructions. भाई उसके लिए तेरे पास है असिस्टेंट मैनेजर है कोई, तो भाई बोलो रेफरी को, घेर लो प्लेयर्स. We need to do more in the second half. पहले 15 मिनट में लग रहा था there was a lot of counter attacks going on either ways. हम काउंटर में ब्रेक हो जा रहे थे. Same चीज about Spurs, you can argue. Yes, we did miss Mudryk. To be very honest, 2 मोमेंट्स थे जहां पर फिलिक्स could have got Mudryk in अगर Mudryk का पेस होता, लेकिन because Sterling, we couldn't do that. Sterling की एक शॉट, I think he had one shot on target. फिलिक्स खुद एक शॉट था, एक टारगेट उसका, लेकिन not otherwise, right? Højbjerg got a shot which hit the post. By the way, Wesley Fofana again,
पॉसिबली वो भी इंजर्ड होता हुज कम ऑन राइट, लेकिन वेस्ली फोफाना गॉट अ टच लकीली और जो कॉर्नर चले गया. बट अगेन भाई रेफरी, द मैच इज ऑल अबाउट रेफरी. पहला 15 मिनट के बाद में आधी घंटा रेफरी ने अलाउ किया स्पर्स का टैक्टिकल फाउल्स बैक बैक. भाई डेरेन, मैं हाईलाइट नहीं करने वाला बिकॉज यूट्यूब विल टेक मी डाउन अदरवाइज ब्रो. डेरेन मच लव टू यू ब्रो, शाउट आउट आपको, लेकिन भाई प्लीज आई रिक्वेस्ट यू थोड़ा सा लैंग्वेज को आई नो मैं आप सुपर चैट करो फिर भी मैं बोल रहा हूँ ना, यू हैव ऑलवेज सपोर्टेड, यू विल सपोर्ट, आई नो दैट ब्रो, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज को आई रिक्वेस्ट डेरेन टू कंट्रोल हो सके तो. द रीजन बीइंग, आई नो मैं खुद नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ आज तो, लेकिन the reason being that somewhere down the line it also affects the people coming on chat, it also affects the people who are monitoring me on YouTube. So bhai thoda sa Darren, if you can, big up bro, absolutely big up. लेकिन I agree with you 100% Darren, I would like to say that as well. जो Darren बोल रहे हैं सच में बोलूं, मैं बहुत कम बार ऐसे होता हूं, people you know that very well, but this is unacceptable from Chelsea. The attitude, players are not fighting. Even Reece James, Ziyech ने दिखाया at least कुछ fight. I am happy about that. I'm happy. Havertz and Ziyech at least shown some fight. Others have not shown any fight. I want to see more fight. Reece James, Loftus-Cheek, मैं आपसे expect करता हूँ यार, आप लोग common boys हो. What is wrong with you all? Wake up, bro. Tottenham are playing with our head. Wake up. वहां पर Conte नहीं है, फिर भी they are this. यहाँ पर Graham Potter है, हम लोग क्या हग रहे हैं? Why are we bloody being so chickens? We have to fight. We have to fight. Referee is not giving us a chance. So you have to fight back. But will you make changes? I think I will sub Ziyech. 100% मैं गौरव से agree करता हूं. I think Ziyech, and yes, it was on a yellow card. Referee totally screwed it up big time. Enzo Fernandez, Ziyech ने दिखाया थोड़ा moment उस सेकंड में, चिलवेल ने दिखाया, लेकिन भाई बाकी 7-8 लोग कहाँ हैं? आप लोग you have to फाइट मोर ब्रो. बिल्कुल मुजाहिद, आपका भी कमेंट में नहीं कर रहा हाईलाइट, लेकिन मुजाहिद थैंक्स फॉर कमिंग ऑन ब्रो एज ऑलवेज. आई टोल्ड यू Ziyech doesn't care, he almost got this team is नहीं है अंशुल, with all due respect bro, I disagree with that. At least Ziyech ने दिखाया that basically he cares bro, और वो maybe he does not care about Chelsea, you're right, लेकिन at least he has एक ईगो है. We need people with ego. हमें चाहिए people who care about not being given a chance in a match. तो भाई आपकी फटनी चाहिए कि भाई how dare you don't allow us to play, how dare Spurs, how dare referee, go and bloody voice it out. आपको react करना है. Ziyech at least did that. I'm actually happy. Ankit, this fixture has lost all its charm and either team looks like playing for a draw. बिल्कुल, लेकिन नहीं, I think it's more about that. बहुत slow passing हो रहा है चेल्सी से after the first 15 minutes. वो क्यों हो रहा है? Because टॉटनम ने बहुत प्रेस किया, टॉटनम ने बहुत फिजिकल नेचर वाला गेम खेला है, बहुत सारे टैक्टिकल फाउल्स किए, तो कहीं ना कहीं वी वांट काइंड ऑफ से क्वालिटी में वी वांट बीट देम. आई डोंट अग्री विद दैट, लेकिन दैट इज द लॉजिक में अज्यूम करो ऋषभ. दैट लिवरपूल गाय, दर्शन कैसे हो? नाइस टू सी एज ऑलवेज. पीपल डू चेक आउट दैट लिवरपूल गाय. केन इज अनटचेबल जस्ट बिकॉज इज इंग्लिश. देखिए, दैट इज अ कमेंट. रेस्पेक्ट ब्रो, रेस्पेक्ट. हाउ डिड केन नॉट नेल्ड ऑन? भाई रिचार्लिसन, Reece James एक अटैक कर रहा था. You know what an attack is, right? Referee. I'm talking to referee here. Mr. Referee. भाई नाम कैसा लेगा? रेफरी का नाम क्या है भाई? नाम लेना नहीं चाहता. स्टुअर्ट एटवेल. हाँ भूल गया था. चलो स्टुअर्ट एटवेल जो है भाई, रीस जेम्स, और वो भाई प्रीमियर लीग का जो है ना, खाली एक मोमेंट दिखा रहे जो Ziyech का रेड कार्ड था, हैवर्ट्स को येलो कार्ड क्यों मिला पता नहीं, भगवान जाने. ठीक है, और रीस जेम्स वाज गोइंग ऑन अटैक कर रहा था, और आप as an opposition literally stop him, literally trip him. If that is not a yellow card, what is a yellow card? Richarlison, how the heck did he not get a yellow card? Kane, how did he not get a yellow card by pushing Kepa? And I know हम यहाँ बात करें उसके बारे में, rather हमें tactically बात करना है, because that is how pissed off the referee got us. Again, Romero, from the very first minute he was doing that. कोई नहीं, the ref is letting you play with 11 players, appreciate it. नहीं Luman, I disagree bro. What do you mean? What do you mean? Aluman, with all due respect, bro, I will not take it. Spurs should have had 4 people on yellow card by now. They don't. Spurs should have had 4 people on yellow card. Ziyech wasn't a red card. It is the right decision by VR. Thank goodness. It was a push. It was not a slap on the shoulder. Everyone saying red card. Why it's not red? Why it was overruled? Now people are so against Chelsea all the time. वो लोग फुटबॉल जानते नहीं है. With all due respect. The people who are saying that Ziyech was a red card and he escaped, भाई सॉरी ब्रो, या तो आप फुटबॉल नहीं जानते हो, या तो आपने आंख नहीं डाले, आपके चश्मे नहीं डाले आज, ये बोल सकता हूं. सिंपल एज दैट. इट वाज जस्ट अ
push on the shoulder. Same चीज एमरसन came and gave a chest push. तो आप चेस्ट पुश करते हो और शोल्डर से पुश, हाथ से पुश करते हो शोल्डर में, सेम ही चीज है. ही डिड नॉट स्लैप हिम. पहले लगा था स्लैप किया, लेकिन भाई रिप्ले एक चीज होती है. बट yeah, exactly. Who thinks it's a red card? My question as well. Please tell me. Please tell me who thinks it's a red card. Please tell me. In fact, Richarlison, Kane, Romero, Højbjerg should be on yellow cards apart from Emerson. 5 yellow cards होने चाहिए Spurs को अभी. As things slap is no, it's not. It's not a red. It's not a red, bro. He did not slap. He pushed onto the shoulder. Luman, please get an eye checker, bro. Much love to you. Sorry, I might come across wrong, but it is my view, bro. Just like it is your view. But कोई नहीं. सागनिक क्या हाल है? Nice to see you as well. Silva अगर होता तो भिड़ जाता रेफरी से. भाई that is the thing. We need to learn that. Now we have to get our heads. Somewhere down the line, Potter, yeah, इतना emotion नहीं दिखाता, but in a strange way, I would say that's not too bad either, because we need at least someone with a calm head. Or maybe he's that. Just saying. But hopefully, we do more, यार. We do more. We need to do more. Definitely. इतना slow build up हो रहा है. या हमें fight करना है, या तो हमें fast passing चाहिए. One of them. Yesterday there was red card on Rudiger. It's not a red card, but due to acting of Rudiger, red card was given. Today referee was brave to turn red card. Yes, Newton agreed. By again, Newton, everyone in the chat, मैंने एक वीडियो डाला है सुबह. आप लोग चेक करिए. I know a lot of people do not check it. It's fine, totally fine, but try and check it, because उसमें मैं these kind of moments cover करता हूँ entire Europe का. तो yeah, I did cover that as well, and I agree with Newton's comment यहाँ पर. These players are just employees who work for salary, missing the Lampard's cherries. By great comment, Museb. Great comment. Bhai Abhishek, kya haal hai bhai? At this point, I don't even care. What a shit soulless performance from the team. Season over for me. We are down to drain completely. Bhai ये देखिए, as much as मैं रेफरी पर चिल्ला रहा हूँ, अभिषेक has a point. उस टीम में, और मैं वापस से दिखाने वाला हूँ, आप इस 11 में, apart from maybe that one moment of Ziyech, जहां पर थोड़ा बहुत चिलवेल और एंजो फर्नांडिस थोड़ा बहुत लड़े थे, लग रहा है कि यार हम एक लंदन डार्बी खेल रहे हैं इन अ मस्ट विन सिचुएशन, in a 6-pointer, जहां पर Spurs Chelsea technically both are trying for top 4 and top 6. Like, is it even looking that way from Chelsea side? Spurs के साइड से looks like they are going for a 1-0 victory. उनका टारगेट ये है. सिंपल सा बात है. ठीक है. तो with Conte not being on the sidelines, और उनको पता है that Chelsea के पास क्वालिटी है, Spurs के पास basically has that quality from the bench. But again, आप देखो तो बेंच से बात करें तो भाई the fact is अब Ziyech येलो कार्ड पर है. Yes, we have made one change already. हम खाली 2 changes और कर सकते हैं in terms of 2 sets of changes. So would we make 2 changes each? Probably yes, मैं तो बोलता हूँ. If I am Graham Potter right now at half time, I am going to make a change. Honestly, मैं change करूंगा. I would take off Ziyech. ऐसे भी यार हमारा स्लो बिल्डअप हो रहा है, और I know Sterling has not done too bad, बोलना चाहूंगा, but get Sterling on the right hand side, get Mikhailo Mudryk, or maybe even Noni Madueke. I would say get them. One of them has to come on for sure. Madueke maybe हो सकता है because of his physicality. He gets physicality, तो वो is required. And I think Havertz, I would not say great, but at least he has been better, I would say, than uska form, but not enough for me. In midfield, Loftus-Cheek, sorry bro, Loftus-Cheek, हाथ जोड़ता हूँ यार भाई, प्लीज. चिलवेल हैज हैड अ बैड गेम, ये भी बोलना चाहूंगा. एक मोमेंट था अच्छा चिलवेल का, अपार्ट फ्रॉम दैट उसका कुछ नहीं हुआ. बट Loftus-Cheek ब्रो, आई थिंक आई चेंज हिम. आई थिंक मैं लाऊंगा यहाँ पर मे बी समवन हु हैज दैट पैशन फॉर चेल्सी, एंड दैट इज कॉनर गैलेगर. यस, आई माइट से डेनिस ज़कारिया, लेकिन आई वुड गो फॉर कॉनर गैलेगर. आई वांट सम फाइट ऑन द पिच. मुझे चाहिए some fight on the pitch and someone who understands what the derby is. Not Mason Mount. I want Conor Gallagher in midfield. I want one of Madueke or Mudryk to come on. आप लोग बोलिए whether you agree or not. Tottenham on the other hand, by they have Emerson on yellow card, so maybe Pedro Porro आए. ये मैं बोलना चाहूंगा definitely. उसके अलावा they are going well with their strategy. It's not a slap, bro. It's a push. There's a difference, Luman. It is not a slap. It is not a slap. It is not a slap. It is a push. Please watch it again, bro. It is a push. It is a push. ऐसा करके धक्का दिया. ऐसे करके धक्का दिया. ठीक है. ऐसे नहीं किया. He's gone nearby and then pushed him. That is a push. It's a push to the shoulder. Anyway, it doesn't matter. It is not a red. Simple. अगर वैसे देने लगे ना तो I'll count how many red cards we should have got or not got in the past. Why people are against Chelsea? बिल्कुल. By the rule book, red on Ziyech, but this intent was on shoulder and slapped his face. Fair play.
नहीं, बाय द रूल बुक इट्स नॉट रेड बिकॉज इट्स अ पुश. आई थिंक इट्स अ ग्रे एरिया. जहां पर ग्रे होता है आप देते हो बेनिफिट टू द प्लेयर एंड नॉट टू द रेड कार्ड. आई थिंक इट्स अ करेक्ट डिसीजन एट द एंड ऑफ द डे. जो अगर रॉन्ग होता आई वुड हैव लॉस्ट इट बिग टाइम एंड ऑलमोस्ट लॉस्ट इट यार उदय. बट कोई नहीं. केन रिचार्लिसन भाई 4. Richarlison literally stopping Reece James when he's on an attack. If that is not a definition of a yellow card, what is? Kane literally no intent to play the ball, getting Kepa down 100%. Højbjerg tactical fouls 4 times मैंने count किया. 4 tactical fouls doesn't get 1 yellow card. Warning भी नहीं मिला. ठीक है, ऑन हैवर्ट्स ऑल द टाइम. ठीक है, दैट वन. एंड रोमेरो सेम चीज, टैक्टिकल फाउल्स. आई थिंक दोनों का 4-5 टैक्टिकल फाउल्स हुए क्लियरली एंड दैट रिक्वायर्स अ येलो कार्ड फॉर मी. ही नीड्स टू बेसिकली लाइक मानव सेज दैट इज द रियलिटी. मैं बोलना नहीं चाह रहा था, दिस इज द रियलिटी. रियलिटी इज दिस. रियलिटी. बिल्कुल 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 अभिषेक, आई हियर यू ब्रो. Okay, it wasn't a slap, it was a push for heaven's sake. Bilkul, thanks Manav. Again, Manav is a City fan, Luman. By much love to both of you, but you guys know, I try and put as much a neutral, opinion as possible. It was not a slap, it was a push, definitely. How is that a red card, Ankit bhai? Sanitizer. I literally tried to break that Leicester player leg. Bhai, again, the bad part is Varun. By the way, thanks for coming on, bro. Shout out आपको absolutely. But don't you think so? एक second दीजिए. Don't you think so that basically speaking, Thiago Silva being out is a huge problem now. Is a huge problem for Chelsea. That is one thing that मैं देखता हूँ. Again, Kane had that moment as well, so you can argue that as well. Why not? हाँ, मैं agree नहीं करता कि Kane का challenge on Thiago Silva was yellow, but it counts. आप उसके बाद में केपा के साथ कर रहे हो तो definitely yellow था. Simple as that. But anyway, any other cold-blooded ref would have stuck. The impact was that the intent wasn't. नहीं. First, loudmouth football. I disagree with you, bro. I understand जब बोल रहे हो, जब आप VR को देखते हो, was it enough to turn? 100% yes. 100% it was enough. I disagree with you. So, firstly, referee screwed it up big time itself. First time, he shouldn't have given the red. Or why the heck did he give Havertz a yellow? Please, if anyone can tell me, it'll help. Why did Kai Havertz get a yellow card? Please tell me. Please tell me. It was a case of mistaken identity or भूल गया बाद में to overturn that as well. I think that was not a yellow card either. Big up to Emerson for not acting like Son and falling. By the way, Ziyech pushed on the shoulder and his hand went from his shoulder to his face. Okay, La Liga farmers barking comment section. Are nahi. Pudin, let's control, bro. It's okay. It happens. Don't worry. Again, everyone is welcome, but let's have that thoda sa control. I know referee पे गुस्सा करो करिए. Ziyech should be more wide and throw diagonals to Sterling. Ziyech, I will take him off, bro. Ziyech, I think losing it towards the end. I think he needs to be taken off. Romero's hair pull on Kukurea wasn't even yellow. Bilkul. Thanks, yaar, Abhishek, to bring it up. Thanks. Bhai, sab log bhul gaye hai. Everyone forgot. Yes, we should have done better in defending in that moment. But at the end of the day, that was a goal that shouldn't have stood. 2-2 jo hua tha at Stamford Bridge. We all know that, right? So that is something that is double standard from referee towards Chelsea, definitely. Lekin again, credit to Spurs, yeah. Spurs players have done the shithousery as a, क्या बोलते हैं, it as a proper strategy. तो वो strategy काम की है Spurs की, and Chelsea have failed to retaliate properly in a manner that we should have. और वहीं पर I think Graham Potter needs to come at half time. Will he be able to come and voice थोड़ा head right treatment दो यार. उनको realize करवाओ ये एक London derby है. Yes, we shouldn't lose our heads. We need calm heads as well. But come on. At some point, you need that in a London derby, especially in a must-win 6-pointer. अरे एक सेकंड, मैच शुरू हो गया क्या? मिस कर दिया. शिट मैन, आई मिस्ड इट. मैं भूल गया भाई, कोई बोला नहीं मैच शुरू हो गया. गोल हो गया. डोंट वरी. आई एम सो लो. आई वाज सो वर्कड अप दैट आई फॉरगॉट, मैन. आई एम जस्ट सीइंग ओलिवियर स्किप. टेरिबल, मैन. Man, sorry, man, I didn't react on this, but for some reason, man, I missed it totally. कोई नहीं. See, that is where now we need to come back. यार मैं comments लेना भूल गया यार, थोड़ा slow हो गया था. Then I forgot. I should have kept it on itself. Half time पे. मैं comments ले रहा हूँ आपका. Enzo did mistake, okay. मैं देखा गोल देखा. The moment I switched on again, I just saw Kepa kind of diving with the ball and skip का गोल चल गया. I just saw that. But कोई नहीं. Sorry guys, I may not have reacted to that one.
should have, but anyway, the bad part is now Chelsea is one behind. Maybe it's in a strange way good, मैं बोलता हूँ, at least हम जागेंगे. लेकिन again through ball था यहाँ पर, we should have tried. Have you made any changes half time? No. हाँ, मैं rant में ही थोड़ा busy हो गया देवेश, कोई नहीं. भाई Potter, man, seriously, he's not made a change. He's not made any changes. I just hope we don't get a red card. Ziyech trying a through ball. लेकिन नहीं, James not doing enough. And yes, there's no change at halftime. Again, I apologize, people. Usually होता नहीं. I got carried away with my so-called rant. लेकिन कोई नहीं. How no subs? Exactly. Oh, Potter, man, seriously, I can't believe it. With all that happened in first half, yeah, we have not had a single win against the top half this season. मैंने बोल के थक गया वो चीज. Potter out, no excuse. यार मैं रिप्ले देखूंगा. Sorry, I missed it, but Skip getting the goal. Oliver Skip out of all people. एक और on the break होने वाला है left side में. We are getting beaten. I'm losing it, bro. Literally losing it. Anyway, I think I hope that there's a change and there's something. यहाँ पर गोल होने वाला है लगता है टॉटनहम का एक और. Luckily we just escape. Chilwell clearing the ball. Okay, I'll look it up. Ayush, मैं स्टार करके रख रहा हूँ. Thanks for that, bro. टैक्टिक्स क्या है यार? टैक्टिक्स है भाई, होप फॉर द बेस्ट. डालो अपने 11 प्लेयर्स एंड होप फॉर द बेस्ट, ब्रो. दैट्स ऑल. कीप योर शेप. कोई पैशन नहीं है. फुटबॉल इज नॉट अबाउट पैशन, ब्रो. फुटबॉल इज अबाउट जस्ट कीपिंग शेप. हैरी केन नाटक क्या चीज का कर रहा है भाई? बोलिए प्लीज. नहीं, उत्कर्ष, कम ऑन. नहीं, उत्कर्ष, दैट आई वुडंट लाइक टू सी. Come on, it's well, again, it depends on whose fan you are, but honestly speaking, if I'm a Chelsea fan, I would never, in the worst moment, I would never pray that. All I said is it's good in a way, good that goal हुआ है कि at least हम जागेंगे. Whether I see us coming back and winning it, absolutely not. लेकिन I hope that happens for a change. अब देखो, चेंज नहीं किया पॉटर, डिस्पाइट हाफ टाइम के पहले जो हुआ था, डिस्पाइट गोल खाने के बाद में, लग भी नहीं रहा कि चेंज कर रहा है. ठीक है, मे बी इज लाइक बिलीव इन हिज सिस्टम. Felix with the ball. Felix on the left hand side to Chilwell. Chilwell is the cross on the far post to Ziyech. Ziyech क्या करेगा भाई? एक मस्त था. नहीं यार, Ziyech not enough. I think थोड़ा हाई रहा है, बट कोई नहीं. नहीं, केयर तो करना पड़ेगा. केयर करने से क्या होता है भाई? We have to care भाई. At the end of the day, we have to hope that there is something. यार एक तो चीज होती है कि यार आप सैक करो. एक होता है अगर है तो भाई ठीक से आप बैक करो. सिंपल सी बात है. ETH winning UCL or Premier League ever in life? I think ETH has a strong chance to win the Premier League, yeah, definitely. Not say इस साल or next year, but इस साल fight करेंगे. But I think in a couple of years I can see that happening. हाँ, मैं मिस कर दिया यार मानव, sorry about that. लेकिन thanks for sharing that again. Big up to Manav and everyone in the chat. Handball! Spurs का साले पूरे crowd अपील कर रहे हो. Handball थोड़ी था, कुछ भी. Sorry, bro. I'm acting like, बहुत ज़्यादा pissed off today. But that's how it is, to be honest. So Chilwell and Enzo have been stretched and Kepa, for heaven's sake, latch on to the shots. It was a similar deja vu, na? Tielemans against Kepa, वही moment था ना मानव. मैं वो देखा. The moment I switched on, ना वो exactly वो moment हुआ. I could see Skip taking the shot and Kepa diving and top corner. फाइट ही नहीं यार. एक्चुअली वेद, अब देखो पेप के जो रिचार्लिसन उठ जा यार साले. अब देखो शिट हाउस से शुरू हो गया वापस. दे नो दे आर 1-0 अप. उनका गेम वही था भाई. गोल दिखाओ यार एक बार, मैं मिस कर दिया था. ओके, दिखा रहे. आई थिंक दे आर शोइंग एमरसन रॉयल विद द बॉल. अच्छा, हैंडबॉल दिखा रहे साले. हैंडबॉल नहीं था यार. कमेंटेटर्स मैन एंड द मीडिया एज वेल, नोवेयर क्लोज टू हैंडबॉल. What do you mean by pampered, Luman? Please define it. What do you mean by pampered? Really, Luman, let's not. You support the channel all the time, I know, but I have very strong views against it. Yeah. Again, don't get me wrong, people. Fergie time is very shady, bro. Let me be very honest. मैं यहाँ score नहीं change किया हूँ.
अभी रियलाइज किया, कोई नहीं भाई. फर्गी टाइम इज वेरी शेडी. लेट्स नॉट लेट मी नॉट ओपन द माउथ. ठीक है. मैं I've seen literally every minute of football, bro. I'm sure you have as well. Let's be very honest about it. Michael Owen scoring the goal in the Manchester Derby. No one will talk about it. It was a bloody 98-minute goal in a 97-minute game. Okay, let me not open my mouth. ठीक है. तो आई एम पिस्ड ऑफ ब्रो. मैं दिखाऊंगा, मतलब आई नो वो रीजन नहीं है चेल्सी का हारने का, बट वी वर डेफिनेटली नॉट पैम्पर्ड बाय द रेफरी एटसेट्रा, इफ दैट्स व्हाट यू मीनिंग. Anyway, much love to you. I don't mean anything against you, but I am against your comment. Bring Oba. Will he get passion? No. I would want to see Gallagher right now. People are shocked. I am not shocked. Gallagher brings that energy. We need that energy. We need quality as well, definitely. Like, I would want Gallagher. I would want Mudryk. I want pace. I want passion. We want some pace and quick passing and passion. And that is what Mudryk and Gallagher would bring to this team. I want to see them right now in the team. बिल्कुल भाई. I love this comment bro मानव. देखिए, you मतलब again they have to keep their heads like me, but you have to be at least थोड़ा passionate bro, and that's where I'm missing Thiago Silva already after he got injured. Reminds me of a days under Ole. No, Ole, at least there were a lot of moments when you came back यार. मतलब I remember the PSG game for instance, uh, World Cup. Okay. No problem bro, much love, no problem. Shout out आपको absolutely. Okay, बिल्कुल to my fellow brothers well, Museb. Amit bhai, streak of yours will be over today. Let's see, yaar. Let's see. Had enough of Potter. Embarrassing how Silva is the only player who has passion in his team. Fergie time is shady as United fan. I maybe agree. Yes, see, देखिए, respect you, bro. Respect you, bro. मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ United won because of that. Don't get me wrong. But it was shady. Let's be honest. If anything, Man United fans are the most pampered with the refs. Take the example. Yeah, again, वो थोड़ा सा अलग conversation चल जाएगा मानव. I don't want to comment too much on that. But I made my point. I hope so. Giving a clear example. Do watch that match जो मैं बोल रहा हूँ, Michael Owen वाला. चुकुमे का है नहीं यार, बेंच पर नहीं है. कोई नहीं. Kai is not the person for center forward. यार वो तो हमें बहुत दिनों से मालूम है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यार हमें चाहिए मिडफील्ड और डिफेंस में ज्यादा पैशन. फर्स्टली वो नहीं दिख रहा. स्लो पासिंग, पेडेस्ट्रियन पासिंग चल रहा है. स्टर्लिंग बॉल रखा है अंदर क्या? नहीं, कोई नहीं. By the way, Spurs is traditionally a bigger club than Chelsea for majority of English football's history. Roman FC, your time is up. Vishal, bhai, first of all, thanks for coming on the stream, bro. You have the energy to subscribe, come and give us a hate comment. Fair enough. Nothing against you, your opinion. Sorry, bro. Bring it on. Do check out our Who Am I series season 1, season 2. Zakaria coming on. आपको पता लगेगा about history. Spurs, they might have a history in the old, but आप उसमें रहो ना, आप वहीं पर जाओ ना. आप मॉडर्न फुटबॉल में खेल क्यों रहे हो? And आप 25 साल नहीं बोल सकते just yesterday bro. 25 साल, and not 20 years, 25 years, because we started winning back in 97. If you know your history bro, Vishal. 97, 98, 2000. Okay, who won the most cups in England? Please answer my question. 97, 98, 2000. ये चार साल between 97 and 2000. Who won the most cups? Beat Cup Winners' Cup, beat count the cup. Just tell me कौन जीता था? Again, with what we had or did not have at that point, then we kind of definitely bought the league. Why not? करो यार, आप भी करो जैसा आप लोग ने नहीं किया है. Conte has got a lot of investment इस बार यार. People cannot say no. Can't qualify against RB Leipzig. Talk में success ये क्या है? नहीं ठीक है पुदिन, let's not go there. भाई, let's not have any hate comments to other clubs. Right now the focus is on Chelsea anyway. I just made my point. Okay. भाई again देखिए, it's a fan channel for all to see. I respect all the clubs, but viewpoint is viewpoint यार. Again, let's not cross it. Loftus-Cheek getting fouled यहाँ पर. Clap. Let's have a standing ovation for the referee. Let's have a standing ovation for the referee. Referee is giving a yellow card. Referee is giving a yellow card, bro. Dave is getting a yellow card. कैसे हो गया? For foul on Loftus-Cheek. Okay, fair enough, Vishal. No problem at that. Again, how many euro, bro? Just banter है, कोई नहीं.
Chelsea has no entertaining football in the DNA. Fact. Okay, fine, Luman. अगर आप बोलते हो कि football is all about just scoring goals and tricks and ponies, then fair enough, bro. It's your opinion. I don't see football that way. I see अगर pitch पर 11 लोग होते हैं ना, goalkeeper is there to defend, 4 defenders, 5 defenders sometimes are there to defend, a defensive midfielder is there to defend, and there are others who kind of do the job, who do the finishing aspect of things. Football मैं ज़्यादा देखता हूँ यार, to be honest. The way that I look at it is, I look at it from a larger perspective. लेकिन if you're telling that we just do that, don't have any DNA, that's something that we have been trying to, we are trying to build it, but doesn't mean that how Manchester United are, or for example any club example, yeah, that's how we have to be now. Anyway, let's not go there. Let's focus on the match, Luman and everyone in the chat. I don't think it makes sense to have this banter going on. This some unnecessary banter coming on. By 7,500 subscribers में से 30 लोग देख रहे हैं. I love every one of you. Okay, if you guys are coming here doing a watch along and having just banter clubs on the chat, man, come on, that's really discouraging for me. Okay, I made my point, you guys made your point, let's move on. Let's focus on the game right now. ठीक है, यहाँ पर we are not here to debate at who's had a better history. उसके लिए अलग से stream करेंगे. I promise we'll do that, and we have done that streams in the past as well. We'll do that. I'll bring on panel, हम discuss करेंगे, आप लोग से discuss करेंगे. Let's focus on the game right now. Everyone, mod and mom members, you help me out there. Absolutely. I hope I'm making sense while I'm talking, and I'm hoping it's not ignored. Kepa coming out. चलो कोई नहीं. एक second. How has Chelsea not made a change अभी तक? It's been 61st minute going on. बिल्कुल, let's like the stream. हाँ, नहीं बैन नहीं करना अनमोलदीप. I would not want them to ban. I'm Anmoldeep, thanks that you're concerned here. No ban. I have given a warning verbally. Let's not ban. Yeah, Darren, thanks for confirming that. I would allow this banter to go on, but there should be a lid. आप lid डालो उस पर end करो. Definitely. अच्छा चलो, फाइनली चेंजेस आ रहे हैं. जो मैंने बताया था वही आ रहे हैं, लेकिन मेसन माउंट कमिंग ऑन फॉर व्हाटएवर रीजन, एंड जकारिया कमिंग ऑन. चलो, तो रूबन लॉफ्टस-चीक इज गोइंग ऑफ, जकारिया कमिंग ऑन, इट्स अ लाइक फॉर लाइक, और मेसन माउंट कमिंग फॉर जीएच, जो बहुत सरप्राइजिंग है. हम लोग मुड्रिक को क्यों साइन किया यार? पॉटर मैन, I know Mount understands the derby, but come on, man. We need 2 goals. We need 2 goals. We need quality. We need a spark. Anyway, let's hope that he proves us wrong and Mason Mount does well. That's all मैं hope करता हूँ. नहीं banter, इसलिए मैं बोलता हूँ ना, मैं ban नहीं करना चाहता हूँ. Everyone, every mod here, listen out here. Until it crosses the line, I won't want anyone to ban any people. As it is, भाई, हमारे people unsubscribe very easily for whatever reason, क्योंकि मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगता है. But let's not do that, because I won't want to, भाई, बोलती बंद नहीं करना चाहता. Let them speak what they want to speak. ठीक है, but there is a line that I have in mind that I will definitely tell. I would really like to see that. No problem, Luman. Thanks a lot for that. No Mudryk, no Noni. Exactly. What is Potter doing? Questionable subs for me. Zakaria ठीक है. I wanted Gallagher in this moment. Zakaria start में चाहता था, लेकिन मुझे चाहिए passion अभी. मुझे चाहिए passion. I want that thing that by passion we come back along with quality. तो quality होता Mudryk और Madueke, और पैशन होता गैलेगर. बट मे बी ही इज लाइक, पैशन लाया हूं मैं मेसन माउंट, क्वालिटी जकारिया होगा, हु नोज. या एग्जैक्टली मानव. भाई लेट्स बी ऑनेस्ट, आई डोंट सी द प्लेयर्स आर प्लेइंग फॉर हिम रियली. मुझे लगता है प्लेयर्स आर नॉट प्लेइंग फॉर पॉटर यार. मतलब दे आर नॉट गिविंग द बेस्ट शॉट. मतलब आर यू सेइंग मी दैट अ टीम व्हिच हैज अ लॉट ऑफ चैंपियंस लीग विनर्स आर प्लेइंग लाइक दिस? Cup football we do well, and in Tottenham Chelsea also we cannot turn up? सच में? That's not happening, bro. That's not happening. Again, by people who might have not seen me react to the first goal, I don't know, I might have lost it अगर वो लाइव देखता, लेकिन मैं उस समय रैंट में थोड़ा बिजी था, तो मैं भूल गया था यार, मैच वापस रिस्टार्ट हो गया, इसलिए शायद टाइमर मैंने बंद कर दिया अभी के लिए. बट हम देख रहे हैं मैच एब्सोल्युटली. हाँ, कनिष्क अगेन, भाई कनिष्क, अनमोल, वेद,
I would request everyone to stop that banter, bro. There's no two ways about it. We'll have a different stream for that if need be. ठीक है? Yeah, please don't cross any line. Just Anmoldeep was saying absolutely. Ignore, bro, Darren. Ignore. Just ignore. I have banned people in the past, a couple of them, लेकिन that's because they really crossed the line. कोई नहीं. बिल्कुल संजीव भाई, संजीव का comment यार definitely worth highlighting यार, absolutely. Thanks a lot for meaning. भाई everyone in the chat, आप लोग ये आ रहे हो to watch the game. I'm hoping. So let's get there. ठीक है. Chelsea fan singing sacked in the morning to Potter. गौरव बोल रहे हैं. The only reason I see Zakaria coming on is Enzo can have freedom, ping the occasional diagonal, maybe take a long shot from outside the box. Mudryk needed ASAP to pin down Emerson. Good points, Manav as always. नहीं, I hear you. I see why Zakaria. इसलिए मैं हम बोल रहे थे ना, Zakaria को शुरू करना चाहिए था. That is a mistake. See, that is what Potter makes time and again. He makes a mistake in the starting 11 itself, I feel. But कोई नहीं. And remember, people, Thiago Silva was also off. So we can just make one set of substitutions more now. हाँ, मेरा पहला एक सेकंड गोल होने वाला लगता है. टॉटनहम का बचा लिया यार, जस्ट अबाउट. रीस जेम्स एंड केपा ने बचा लिया. टेरिबल मोमेंट फॉर चेल्सी. एनीवे भाई, पहला मैच चेल्सी का सबसे पहला मैच आई थिंक दैट आई वॉच्ड लाइव, आई थिंक वाज द, मैंने बोला है बहुत बार मिस, बार्सिलोना वर्सेस चेल्सी था यार, चैंपियंस लीग 99-2000. दैट वाज द फर्स्ट चेल्सी मैच आई रिमेंबर वाचिंग लाइव ऑन टीवी. तो वो था बार्सिलोना चेल्सी चैंपियंस लीग. हमने फर्स्ट लेग जीता था, सेकंड लेग बार्सिलोना केम बैक. इट वाज हाई स्कोरिंग टू लेग्ड अफेयर. वी वर बैक इन द चैंपियंस लीग आफ्टर अ व्हाइल. तो वो था मेरा. बट हाँ, उसके बाद में मैंने बहुत मैचेस देखे, लाइक यू नो से जो भी टीवी में दिखाते थे वापस, और लेटर ऑन इंटरनेट गेम. लेकिन हाँ, प्रीमियर लीग में तो आई थिंक आई स्टार्टेड वाचिंग वीक इन वीक आउट फुटबॉल आफ्टर 2000 ओनली. कनिष्क लाइक ओके भाई, प्लीज वन लास्ट रिप्लाई. क्या यार कनिष्क, कम ऑन भाई. आई अंडरस्टैंड, वो कभी कभी वो अंदर सा यू वांट टू एक्सप्रेस योर व्यूज, आई अंडरस्टैंड, बट ठीक है यार, बिग डील. चलो कोई नहीं. Mikhail, bro, big up, bro. Mikhail, what's up? Mikhail, let me know if you're free, man. I lost it, bro, today. I lost it. Big up. Mikhail, मैंने ना स्ट्रीम बहुत लेट सेटअप किया था एक्चुअली. बाय द टाइम आई थॉट दैट इज रियली शॉर्ट नोटिस, तो इसलिए आई डिडंट सेंड द लिंक टू यू. बट डू लेट मी नो, ब्रो, अगर आप फ्री हो तो डू लेट मी नो. बिग अप टू मिकाइल अगेन, ऑलमाइटी कोच. एक गोल होने वाला है चेल्सी का. नाइस थ्रू बॉल, लेकिन नहीं. फॉस्टर कमिंग ऑन एंड टेकिंग द बॉल. हैवर्ट स्लाइटली लेट हो गया, बट आई थिंक अ बेटर मोमेंट फ्रॉम चेल्सी. फिलिक्स का बॉल था क्या? फिलिक्स का बॉल था, और टच किसका था? मेसन माउंट का टच था. फिलिक्स का बॉल एंड टच मेसन माउंट का, बट वेल डन बाय फॉस्टर इन दैट मोमेंट. बट कोई नहीं. नहीं यार, फिलिक्स हैज टू बी मोर इन्वॉल्व्ड. गौरव, आई डिसएग्री विद दिस. हाँ, मैं कुछ नहीं यार भाई, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन चल रही है. फर्स्ट टाइम में तो रेफरी और टॉटनहम ने खेलने नहीं दिया अपने को, ठीक है. और सेकंड हाफ में वी डिडंट कम आउट ऑफ द ब्लॉक्स द वे दैट वी शुड हैव. पॉटर का हेड राइट ट्रीटमेंट जो चाहिए था हमें. वी आर नॉट प्लेइंग लाइक अ डार्बी. सिंपल एज दैट. आई होप यू वॉच द फर्स्ट हाफ, ब्रो. But do let me know in the chat or in the Twitter DM if you are available, bro. Mikhail Mount again on the left. What? He's not a winger. यार पॉटर, लेट्स बी ऑनेस्ट, ज्यादा ट्रस्ट कर रहा है माउंट के फॉर्म को. या प्लीज स्टॉप विद बैंटर्स नाउ. हो गया, अब लेट्स फोकस ऑन द गेम पीपल. एब्सोल्युटली. वेद को तो लग रहा है बोरिंग गेम है. नहीं, विल कम बैक, ब्रो, विल कम बैक. हैव सम पैशन. चेल्सी प्लेयर्स, दिखाओ यार कुछ. वी नीड टू कम बैक. We need to do something about this. Felix playing on the left hand side, by the way. क्या हो रहा है यार भाई? 150 लाइक्स कैसे नहीं हुआ अभी तक? रियली क्या हुआ यार? लाइक्स बहुत कम हो रहे हैं आज भाई. लास्ट 2 दिन से लाइक्स बहुत कम हो रहे हैं स्ट्रीम को. ऐसा क्या गलत मैंने बोल दिया यार लास्ट 48 आवर्स में? और बहुत लोग अनसब्सक्राइब भी किए थे इन द लास्ट 72 आवर्स. डू लेट मी नो, ब्रो, व्हाट इज द इशू? What is the issue? Has someone told against me? I'm just wondering. I don't know if it's true or not. Do let me know, bro. क्या हुआ ऐसा यार? People, why aren't you guys liking the stream? Why are people unsubscribing? Is it a coincidence? Am I overthinking?
Do let me know, bro. I always try and cover content from the as much as possible. मेरा bandwidth करता है from the top 5 leagues to top games. But of course, I'm a Chelsea fan. I'm an AC Milan fan. तो थोड़ा बहुत वो perspective आएगा आपको. That is part and parcel of how you're a content creator, right? लेकिन feedback is always welcome, bro. Absolutely, सब लोग. No problem. बिल्कुल बिल्कुल मिकाइल को मैं लिंक भेजता हूँ. मिकाइल लास्ट में फ्री हो तो आ जाइए डेफिनेटली. मिकाइल को भेजने दो लिंक. एक सेकंड. मिकाइल आई हैव जस्ट डीएमड यू द लिंक यार. लास्ट में जब भी फ्री हो डू कम ऑन. दिस इज लाइक माय बीपी इज रेजिंग यार टुडे. आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रीथ. आप लोग सोचो मैं इतना शांत कैसे हूँ फ्रॉम द लास्ट फ्यू मिनट्स, क्योंकि आई हैव लाइक रियली रेज माय बीपी बिफोर हाफ टाइम एंड ड्यूरिंग हाफ टाइम. चलो स्टर्लिंग नाइस मूवमेंट बट वी नीड मोर. पता नहीं यार Mikhail, I'm hoping that is the case. But even the likes, etc., I just noticed from the last 72 hours. So I'm asking for feedback, nothing else. Otherwise, yeah, the show must go on always, bro. Very much. And much love to all the players. Bhai, एक second! How has that challenge not gone with a yellow card to Felix? What a challenge, man! मैं देखना चाहूंगा वापस. Really? See, that is what Spurs are playing like a derby. Thanks, man. I'm glad Chelsea. This way we are definitely competing for relegation. We are. Nice clearance by Wesley Fofana, much needed. पता नहीं यार. Anyway, bhai, we are 4 away from 100 likes. It pains me to say it, like despite being with you guys and so many people watching, over 2 hours we have still not had 100 likes. But let's have 100 likes, people. Referee कहाँ गया है? Referee को पेशाब आ गई यार. नहीं नहीं. अच्छा चलो, उसका माइक सिस्टम नहीं काम कर रहा. भाई रेफरी तेरा दिमाग नहीं चल रहा. रेफरी दिमाग चेंज करिए. गेट अ ब्रेन ट्रांसप्लांट ब्रो. रेफरी. रेफरी भाई तो आप शर्ट चेंज कर रहे हैं, क्या क्या चेंज कर रहे हैं. आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी फनी मैन. सर चेल्सी हैज अ वर्ल्ड क्लास. बिल्कुल. नो टीम वर्क, नो पैशन. चलो मैं गोल वापस जाऊँ भाई. नो वन शोड दैट चैलेंज जो हुआ था ना फ्यू मिनट्स अगो. रिप्ले मत दिखाओ यार. वो व्हाट अ शॉट यार. आई मस्ट से स्किप का गोल. इट वाज अ गुड शॉट. केपा को यू कैन क्वेश्चन, बट यू हैव टू गिव स्किप द क्रेडिट वहां पर. अगेन should Joao Felix have done better? Arguably yes, but why wasn't anyone closing down skip? जैसे आई थिंक मानव ने बोला था पहले that why wasn't Chilwell there, why wasn't Enzo Fernandez there? Seriously man, referees really got me. Again, it's not the point. The point is like the Tottenham are in top 4 right now and Chelsea aren't, and Chelsea are bhai will be out of the top 10 soon. Mark my words. देखिए यार विशाल, आप बैंटर कर सकते हो, लेकिन भाई यहाँ पर मैं ब्लेम करता हूँ पॉटर को. ही इज नॉट प्लेइंग मुड्रिक. ही इज डन अ मिस्टेक. मुड्रिक की कोई गलती नहीं है भाई वहां पर. यस, बैड फर्स्ट टच था, लेकिन out of the 3-4 games that he's played, he's had one good game, one so-so game, and two bad games. Does that make you a bad signing in just 4 games? No, it doesn't. Again, Kovacic ill है, so he's not playing. अच्छा, इसके कितना स्टॉपेज टाइम मिलेगा देखें. याद रखिए भाई, रेफरी ने आराम से जाकर क्या पता नहीं क्या किया, स्पर्स का जर्सी पहना जैसे देवेश बोल रहे, प्लस जाकर पेशाब विशाब किया होगा, पता नहीं क्या किया होगा. भाई रेफरी इज लाइक टेकिंग हिज ओन स्वीट टाइम. व्हाई? बिकॉज भाई स्पर्स आर 1-0 up. No, time wasting tactics bro. That's called time wasting tactics. I know I'm very salty आज. बहुत ज्यादा सॉल्टी हूँ मैं. मे बी फ्रस्ट्रेशन है विद चेल्सी नॉन परफॉर्मिंग, लेकिन मोर सो रेफरी आई वुड से. बिल्कुल बिल्कुल, ही शुड हैव बीन. उसको फाउल ही कर देना चाहिए था इन दैट मोमेंट. मेसन माउंट गेटिंग अ येलो कार्ड. रेफरी
Okay, how did Romero not bloody get anything for the challenge? Bhai, he got the ball, but isn't that dangerous? And why did Mason Mount get a yellow card? Come on. बिल्कुल, he needs that, लेकिन he needs backing as well, Anmoldeep. It's not the right thing that Potter is doing with him. I don't think he's doing the right thing. Romero, यार, भाई breaking news of the game, भाई breaking news that Christian Romero has not got a yellow card till now. कैसे? भाई रहस्य है वो, आज का रहस्य ये है. आज का शो हम करेंगे. How the hell has Christian Romero and Harry Kane not get a yellow card in this game after 75 minutes? In fact, Richarlison भी. Anyway. शॉट ऑलमोस्ट एक और गोल सिमिलरली रिचार्लिसन का होता है इस बार, लेकिन नहीं, जस्ट अबाउट वी एस्केप्ड इट. भाई अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीवन यहाँ टू हिट दैट लाइक बटन. आई नो वी आर इन अ शिट सिचुएशन एज चेल्सी. आई नो ऑपोजिशन यार जो बैंटर्स आ रहे हैं भाई, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ वी डिजर्व इट, बट लेट्स नॉट अफेक्ट दैट टू द चैनल. भाई लेट्स हैव मोर लाइक, सर्टेनली हेल्प्स. इट्स पार्ट ऑफ द ऑलमाइटी फैम. मैं ज्यादा वर्क टू पू देन यूजुअल आज, बट लेट्स प्लीज definitely support me and support yourself, because it's your channel as much as mine. Especially members boards, get us going, bro. Let's share it, let's like it. All subscribers, everyone is welcome to join the membership. Definitely. और नहीं कर सकते हो भाई, like कर दीजिए stream को and do comment. Banters चलता है but keep it controllable. एक सेकंड, गोल होना चाहिए था. Havertz यार on his heel. भाई okay, I'm seeing a lot of people who have watched this stream, लेकिन for whatever reason we have not got likes. Do let me know why, but anyway. जबार भाई, क्रिस्टियन रोमेरो डूइंग वेल इन दैट मोमेंट, सच में बोलता हूं तो. चिलवेल यार, शो दिस पैशन इन द फर्स्ट मिनट, नॉट नाउ. डोंट पिस मी ऑफ. डेस्परेट सिचुएशन होता है तब हम दिखाते हैं पैशन. दैट्स नॉट डन मैन, दैट्स नॉट डन. Oh man, people, come on. Yes, Devesh, thanks bro. यार कौन गिर गया बॉक्स में? नहीं नहीं, बॉक्स में नहीं, बाहर है. मेसन माउंट. मेसन माउंट, बी केयरफुल ब्रो, यू माइट जस्ट गेट अ येलो कार्ड. People, will you actually do that? Yeah, I agree. बिल्कुल, I agree with this. 100% agree with Messi's goat. Potter के tactics have been terrible, bro. Terrible. Let's be honest. Mason Mount coming on in a derby, I can understand to some extent. लेकिन why would you not bring on a striker जब Havertz has done decent at best? लेकिन आपको नहीं आ रहा तो अभी लाना चाहिए, in my opinion. Felix offside है शायद. Havertz, sorry. अरे नहीं यार, man, that was a chance. Havertz wasn't offside. 1-2 अच्छा 1-2 हुआ यार by Chelsea. आई एग्री. माना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, स्टर्लिंग को ऑन द विंग्स हम जो खिला रहे हैं ना, इट्स नॉट द राइट टैक्टिक. वी नीड टू हैव मोर फ्रॉम स्टर्लिंग, बिकॉज हाँ, उस पर डिपेंड करना भी अच्छा चीज नहीं है, बट दैट्स हाउ द रियलिटी इज. ही इज अ बेटर फिनिशर देन मोस्ट ऑफ आवर अदर फॉरवर्ड्स. तो यू ब्रिंग ऑन मडुएके और मुड्रिक, गेट हिम मोर सेंट्रली, और मे बी गेट ओबामा, जैसे मेसी गुड बोल रहे थे. चिलवेल कॉर्नर, रीस जेम्स शॉट, कैचिंग प्रैक्टिस फॉर फॉस्टर. कोई नहीं, स्टर्लिंग विल स्कोर, देखते होपफुली. बिल्कुल, I no, I agree with you, Anmoldeep, that it should be Sterling or Aubameyang playing up top right now. क्योंकि we have tried for 75 minutes. Havertz has had couple of good moments and energy दिखाया था first half में थोड़ा सा, but that's it. Is that good enough right now when we want to win the game? Nowhere close to even drawing the game, bro. Son is coming up. Mshe likes, nice to see you, bro. Mshe, long time. क्या हाल है भाई? बिल्कुल, agree with this comment. Agree. मेरा तो जॉ हुआ दुख रहा है यार, आज इतना रैंट कर लिया मैं. Mikhail bro, come man. I'm like losing it now. This is not my Chelsea, man. This is not my Chelsea. Seriously, man. I feel like crying, man. Terrible. Oof.
Pains me to see. No, you see, the matter is not about losing. The matter is not showing heart, not showing passion in a London derby. जहां पर एक जो 6 पॉइंटर और आप कैसे देख सकते हो स्पर्स बीटिंग अस एंड गोइंग टू टॉप 4. I actually prefer Zidane as much as Zidane भी passion merchant नहीं है, but he will command that respect that maybe Potter is not commanding, if I'm being really honest. Again, Potter की गलती ज्यादा है नहीं, लेकिन he's not that man for me. Felix playing on the left hand side, it doesn't make sense. Why aren't we getting Mudryk? Please Potter भाई 80 मिनट्स होने लगे, अब तो लाओ यार. वापस लड़ाई शुरू. भाई स्पर्स का गेम प्ले क्या हुआ है कि हम करेंगे शिट हाउसरी, हमने जीतना है 1-0. I don't care. And how has Christian Romero not been booked till now? Christian Romero, Richarlison and Kane. एक किक था चिलवेल का नॉर्मल और पुश किया, इसमें कुछ है नहीं. ये वाला मोमेंट आई डोंट थिंक आई रीड टू मच इनटू इट, बट अगेन I don't know how these guys have just gotten away with just 2 yellow cards by Ben Davis or Emerson Royal. चलो कोई नहीं. No intent, yeah. This could be a turning point. Chilwell is going forward. Son will have some space. Don't be surprised if you see counters from the left now. भाई मानव right now tactic तो भूल जाओ यार. मैं चाहता हूँ यार by hook or by crook we just get it, man. We just get it. Enrique again doesn't excite me much, सच में बोलूँ तो. रोमेरो ओवर कर रहा है. Just Todd Bowley thinks Chelsea are in top 4 because they are playing in UCL. कोई बताओ भाई. देवेश पता नहीं यार. अरे Graham Potter, man. But Graham Potter, you need to do better, man. You need to inspire a team more. भाई again मानव, man. Big shout out आपको. भाई Aubameyang coming on finally. Aubameyang looks like he, I don't know, Arsenal days याद करके कुछ कर दे भाई Aubameyang. Mudryk also coming on. Aubameyang and Mudryk coming on. भाई 82nd मिनट में एटलीस्ट आ जाएंगे गेस्ट अपीयरेंस के लिए. आ रहे वो गोल हो गया. चलो भाई कल्याण Harry Kane, the guy who should have been yellow carded, scored the goal. It's Tottenham 2 and we are totally screwed. Chelsea over, Graham Potter out, and I'm not having any other thing right now. I don't care. Yes, Graham Potter की गलती नहीं है. These guys are not playing for Chelsea. Terrible defending over set piece. 100% terrible. और Graham Potter साले हरामी. अभी आएगा तू मुड्रिक को क्या कर लेगा मुड्रिक. अभी 2 गोल डाउन है हम. Sorry guys, I'm really sorry for people who don't see me this way, but this is not acceptable for me. This is not acceptable. Where is the bloody physicality in the box? But is it not a free kick? Eric Dyer literally climbing over Mason Mount. नहीं यार, it's a goal. I'll be honest, it's a goal. I don't think it'll be overturned. Very late, bro. It's very late. Very late. I think it's Graham Potter out. Graham Potter out, bro. Graham Potter out. Sorry, he may not be the cause आज के लिए, लेकिन he is not getting enough from our players. Joao Felix, भाई, the only guy who looks a little bit interested is out. Or Sterling, who had a decent game but not enough for me. Again, mistake at first. आपको जो पहले स्टार्ट करना चाहिए था, आप करो 82nd मिनट में. आप लाए हो जकारिया को इन द 61st मिनट में, आप ला रहे हो 81st मिनट को मुड्रिक को. And when we are what 1-0 down and 2-0 down respectively, you should have started with Zakaria. You should have started with Mudryk. Vishal Haslo, yaar. We deserve this, man. We deserve this. We deserve this. In the mud. Yes, we are in the mud, bro. We are in the mud. But abhi yaar, you know, very honest. See, that is what. This is not my Chelsea. अगर ये बोलते भाई, again people going off, that I don't agree. ये जो crowd है which are going off, well, I understand that they're so pissed off. But how can fans not support your team when you're 2-0 down also? How can you not? I don't understand. Are these fans really? I can't blame them, yes, but मैं question करूंगा यार. I'm different. भाई जब mid 2000s में when this used to happen and it has happened, we have come back from 2-0 down. हुआ है. Why don't we bloody think that way? Mudryk with a great cross
And that is what Mudryk does. Fantastic cross by Mudryk. We need more of that. बिल्कुल, I agree. I'm sure I agree. Again, अब तो हम will put balls in the box. इतना slow pedestrian passing of the first half. Bhai, we will get relegated, man. Potter out. We will get relegated. It's serious shit, man. It's serious shit. Potter is not Chelsea level. Or these players are not playing for Potter. One of the two. That means the manager is out. And that is why I'm clear right now. No sugarcoating anymore. If we don't get back at least to a draw, if not a win, he is out no matter what. नहीं ठीक है मतलब at least we were not without trophies for the last 25 years, bro. It's not too bad, and we will come back to it. Don't worry, Tanish. We'll come back to it. We have second leg in against Dortmund, bro. वो बाकी है, रुकिए. It's not finished. मैं तो support करूंगा अपने टीम को लास्ट तक. Yes, agreed 100%. बहुत late substitutions. In fact, जैसे मैंने बोला ना, he should have started with them. Mudryk with a shot, लेकिन हाई का कोई नहीं. बिल्कुल agree. Yes, we cannot accept Spurs के साथ this lack of fight. It was clear. And referees helped. I'll be honest. Yes, excuse, but referee has helped. भाई एरिक डायर लिटरली चढ़ा यार माउंट के ऊपर. या अंशुल agreed bro. Agreed. Yeah, now I agree with this as well. मैंने खुद बोला था maybe if we lose 2 out of the next 3 games he's out. लेकिन now the way that we lose is important. Or not just that, lack of fight despite जो Tottenham shithousery करी थी, we did not show enough. So that tells me that these players are not playing as though it's a derby. These players are not playing for the badge. These players are not playing for Potter. हम 11 players अभी change नहीं कर पाएंगे. Or as it is, we have made so many changes. So the solution only thing is left is Potter out. Romero tackle on Mudryk, but I think थ्रो ही नहीं मिला अपने को, कोई नहीं. बिल्कुल स्पिरिट दिखाओ यार. क्वालिटी तो बात की बात है. डिएगो सिमेने भाई, आई वुड नॉट अग्री अनूप, लेकिन एटलीस्ट विद हिम बीइंग देयर वी शो स्पिरिट. क्या चेक कर रहा है रेफरी अब. रिचार्लिसन और फोफाना. दैट इज अ येलो कार्ड मैन एट बेस्ट. जो दिया नहीं रेफरी है. नाउ वीआर तो येलो कार्ड देता नहीं है, बट कोई नहीं. हाँ मतलब वो बंदे खेल नहीं रहे मानव. स्पिरिट नहीं दिख रही. हाफ टाइम में हेड राइट ट्रीटमेंट. कैन यू एक्सपेक्ट पॉटर टू गिव व्हेन इट्स नीडेड इन अ लंदन डर्बी इन अ 6 पॉइंटर? नहीं. दैट्स माय होल पॉइंट. बिल्कुल. व्हाई आर पीपल ऑन द पिच अगेन? मतलब क्वेश्चनेबल है. मैं ओनली रीजन मैं सोच सकता हूँ बिकॉज ऑफ अस नीडिंग गोल्स. तो वी फाइनली रियलाइजिंग ओके वी नीड एटलीस्ट 2-3 पीपल ऑन द गो पिच हु कैन स्कोर गोल्स. लेकिन अगेन थोड़ा सा सरप्राइजिंग जरूर था कि यार ही वाज नॉट हैविंग स्टर्लिंग फॉर दैट मोमेंट. लेकिन स्टर्लिंग याद रखिए इज बैक फ्रॉम इंजरी. ये भी एक रीजन हो सकता है. लेकिन फिलिक्स आल्सो ही प्ले लिटरली एवरी मिनट. Sterling was marking Kane mismatch and he lost his man. Okay, maybe that is also a reason. Musib, thanks for sharing that. Potter is for sure getting sacked, so bad decisions, and late getting Mudryk and Oba. And I need to check my BP, bro. It's going mad. I hear you, Anshul. लेकिन again, let's hope for the best. भाई कोई रहता ही नहीं यार फार पोस्ट में. Mudryk wins the ball. No, gives a free kick away. कोई नहीं. Yeah, Sanjeev, I hear you 100%. We just don't need a coach. We need a manager. He is not a manager. I respect his experience पूरा. Pedro Porro coming on for Richarlison, जो बचा है. भाई Richarlison not getting a yellow card in this game is the most shocking thing. Weghorst ball, yeah. Difference between David Moyes and Man United and Potter and Chelsea. I told Bhaiya Potter will lead to relegation. या 100%. भाई अनिकेत मैंने देखा है सीजन 2001 2002 सीजन 2002 2003 2003 2004. वो 3 सीजन ना बहुत डिफिकल्ट था सच में बोलूं तो इन द प्रीमियर लीग टू वॉच.
बट एट द सेम टाइम हमारे पास थे प्लेयर्स हु प्लेड फॉर द बैच यार, वो क्लियर था। अभी वो नहीं दिख रहा। अगेन सीजन 2015-2016, बट एटलीस्ट वी हैड पीपल हु हैड वन स्टफ, पीपल हु वांटेड टू विन स्टफ। यहाँ पर वो दिख ही नहीं रहा है। मे बी कंफ्यूज। वो ये कहीं ना कहीं यू कैन नॉट ब्लेम हिम ऑल्सो, बट इतने सारे ऑप्शन है तो मे बी इज कंफ्यूज। लेकिन वही सी दैट इज द मैनेजर जॉब यार। आपने नहीं किया अपना जॉब ठीक से, इन माय ओपिनियन। ओले टू चेल्सी, कम ऑन रैंट पैन अंकित। भाई मिकाइल, आई एम लूजिंग इट ब्रो टुडे। आई डोंट नो इफ यू वॉच्ड मी हाफ टाइम। मैंने फर्स्ट गोल आई ना टॉटनहम का, उस समय मैं रैंट ही कंटिन्यू कर रहा था हाफ टाइम टॉक का। आई फॉरगॉट टू स्विच ऑन द मैच अगेन। आई वाज लाइक 2 मिनट्स लेट, इसलिए मैंने टाइमर नहीं डाला है सेकंड हाफ का। या अगेन से देखिए, आई फील सैड फॉर हिम एट द सेम टाइम, ये भी बोलना चाहूंगा। लेकिन द रियलिटी ऑफ सिचुएशन इज द जॉब इज टू बिग फॉर हिम। आई बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। We are losing ground every match. Say we are losing ground. We have built a legacy. We cannot lose a mentality. DNA of the club is going. We have a DNA. Mudryk with a nice cross, लेकिन well cleared. Why crosses will not help now, yaar. Mudryk should be getting in behind. We don't even play to Mudryk's strength. Now, this I don't agree, Aniket. This I don't agree. Still, I will not agree. ये क्या है? हाँ, आई हियर यू यार, मेरे पैसे नहीं है आई मीन। लेकिन देखिए यार, प्लेयर्स आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड कि नहीं इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट एनीवे। हम लोग को भी 7-8 साल के लिए साइन किया गया है। वो दिख रहा है यार, दिख रहा है। तो आई डोंट थिंक दे प्लेइंग एवरी मिनट ऑफ एवरी गेम द वे दे शुड, स्पेशली हमारे डेस्परेट सिचुएशन में। बाय द वे, नाइस क्रॉस ऑफ द फार पोस्ट। हैवर्ट्स क्या करेगा भाई, इतना स्लो क्यों कर रहा है यार हैवर्ट्स? नहीं यार, मुझे चाहिए anyone who brings passion, bro. Right now, we just need passion. Be it even John Terry for that sake. एक तो भाई टॉटनम आर प्लेइंग विद 8-9 people at the back अभी। Anyway, the way we have lost as well, यार। They played like a derby, we did not. क्या हुआ भाई डेरेन को? डेरेन सब ठीक है? I'm losing it, man. Thanks, man, Manav. Always. जोजे इन, लूचो इन, पता नहीं, देखते यार। I'm not too excited about new manager coming in right now. I'm excited about just some ex Chelsea man coming in for time being. मुझे चाहिए केयर टेकर विच काइंड ऑफ जस्ट बोलते हैं ना, संभाल ले शिप को थोड़ा, और हमारा डीएनए लाए थोड़ा, हेड ड्राई ट्रीटमेंट दे उनको। दिस प्लेयर्स दे डिजर्व शिट, सीरियसली मैन। पॉटर को कितना भी गाली दो, प्लेयर्स व्हाट हैव दे डन? व्हाट आर दिस प्लेयर्स डन यार? मतलब दे आर नॉट स्कूल किड्स ब्रो। आप जो भी टैक्टिक्स खेलो एट द एंड ऑफ द डे दे आर प्रोफेशनल्स प्लेइंग फॉर चेल्सी फुटबॉल क्लब। व्हाट हैव दे डन यार? डज एनीवन नीड टू ब्लडी टेल यू ओ इट्स अ लंदन डर्बी, आपको थोड़ा फाइट से खेलना है, आपको बेसिकली रेफरी को घेरना है, आपको बोलना पड़ेगा? साले प्लेयर्स को गुस्सा, मैं प्लेयर से भी गुस्सा हूं यार। कौन है भाई? चार लोग बता दो जो खेले आज। भाई रीस जेम्स भी यार, ही हैज नॉट बीन हिमसेल्फ। आई बी वेरी ऑनेस्ट टुडे, रीस जेम्स हैज नॉट बीन हिमसेल्फ। सो देयर इज अ प्रॉब्लम। आई नो द मैनेजर, क्लियर है कि मैनेजर दे आर नॉट प्लेइंग फॉर द मैनेजर, बट एट द एंड ऑफ द डे आप खेल रहे हो फॉर चेल्सी फुटबॉल क्लब। हाउ कैन यू लूज टू स्पर्स दिस वे? रोमेरो भाई, स्पर्स तो आज फैंस विल बी वर्शिपिंग रोमेरो एंड एमरसन रॉयल बाय द वे। हाँ हाँ, डेफिनेटली गौरव, सॉरी अनूप, आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड जो आप बोल रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द डे देयर इज इनफ क्वालिटी ऑन द पिच टू डू मोर। वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दैट्स इट। चेल्सी क्लब स्टेटमेंट कमिंग, अनिकेत बोल रहे हैं। हाँ यार भाई, एटलीस्ट 2016 में आई सॉ सम ब्राइट यंगस्टर्स कम ऑन, लाइक आई रिमेंबर ट्रायोरे, केनेडी, रूबन लॉफ्टस चीक।
उन लोगों को चांस मिला था एंड समथिंग एलेक्स पैटो सब लोग याद होगा, तो समथिंग मैं थोड़ा सा एक्साइटेड रहता था उस समय मैचेस देखने के लिए। अभी भी यार टू बी ऑनेस्ट चेल्सी है तो मैं हमेशा बैक तो करूंगा ही अपनी टीम को, देखूंगा ही, लेकिन पेनफुल तो डेफिनेटली एट टाइम्स, आई वुड अग्री देयर। शुभंकर आई हियर यू एज वेल। बिल्कुल मैसेज कोड आपको याद है तो भाई एवरीवन द चैट आल्सो रिमेंबर्स। याद है बहुत लोग मुझे नेगेटिव बोल रहे थे, याद है सब लोग को, जो भी लोग फॉलो करते हैं मुझे गुड वाइल। पॉटर डिड नॉट गिव मी दोस वाइब्स, आई हैव जूरी आउट, मैं या तो जूरी आउट बोला या तो ही इज नॉट गिवन मी पॉजिटिव वाइब्स। भाई आई एम इंक्लाइन टुवर्ड्स पॉटर आउट, मैंने कभी भी बोला नहीं पॉटर इन बैक हिम, ट्रस्ट द प्रोसेस, मैंने कितने बार बोला है, didn't give me those vibes. लेकिन again, can you blame only Potter? No, you cannot blame only Potter. You cannot blame only Potter. These players are absolutely shit. They are playing as bloody, जैसे किसने बोला था, they are playing like employees. They are not playing as players. Hmm. Yeah, we were 10th. From 16th, we came back to 10th. When Jose Mourinho was sacked, it was 16th. When we lost to Leicester. Yeah, Willian has a fantastic season. By Skip has been terrific. By generally na Spurs na, as much as they've done a lot of shithousery and all that, you have to give credit to them that they have actually gotten up. Okay, Mikhail is there in the background. Mikhail, आप कैमरा ऑन कर सकते हैं क्या एक सेकंड के लिए, just to kind of make sure it's you. Okay, yeah. Okay, great. Let me add Mikhail. At least I can have a breather now. Mikhail, bro. एक सेकंड होल्ड ऑन, मैं ईयरफोन्स डालता हूँ. Give me a second. I'll just एक second. Hold on. Big up, Ankit. Can you hear me? Now I can hear you. I just put the earphone now. Mikhail. Sorry यार मैं भी थोड़ा distracted था, मगर did not miss much. Final whistle has gone 2-0 Tottenham. Yeah. Nothing surprising. मैं तो सिर्फ I tuned in to see कि manager कौन है आज, तो manager Potter था, तो then I knew I didn't have to really get too worked up. It's coming to the point where वो rant सी हो सकती हैं इस वक्त, क्योंकि for me nothing surprising here. आपका जो परफॉर्मेंस रहा है आज पिच पे, इट वाज द सेम एज प्रीवियस गेम्स, कि कोई डायरेक्शन नजर नहीं आ रहा टीम के प्ले में. जब आपके पास बॉल आती है तो यू डोंट लुक डेंजरस, और midfield was being run over the whole game. Midfield, they would just walk through the midfield. It's like an open goal. Agreed. So बात वहीं पे आ जाती है कि जब सारे पिच पे everybody is looking bad, so then I blame the manager always. Now, I'm not going to turn this into a Potter out rant. I'm just saying I'm resigned to the fact that these are the results we're going to get when we have this kind of leadership. The other thing is, name me some of the smartest people in the world. Name me, in history, like who are the smartest people in the world? Confucius, Einstein. These are very smart people. That doesn't make them motivators. So Potter might be a very intelligent person, right? Nothing against him. He might be a very intelligent football coach too. Nothing against that. But is he a motivator? Is he a general? Will people go out there willing to die for him on the pitch? And I'm not seeing that. I haven't seen that from the beginning. तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस कह लें आप उसको, ओपन डोर पॉलिसी कह लें आप उसको, फ्रेंडलीनेस कह लें आप उसको, जो भी कह लें, वो इट्स नॉट कन्वेइंग व्हाट वी नीड ऑन मैच डे, व्हिच इज अ स्पिरिट, सम पैशन, सम एनर्जी. वो नहीं नजर आ रही. तो जब वो नजर नहीं आएगी तो फिर आप रिजल्ट दूसरा मांगेंगे, तो मेरे ख्याल में गलती फिर हमारी साइड पे है. वो उसको पॉटर तो वही कर रहा है जो वो शुरू से कर रहा है, कंसिस्टेंट है वो उसमें. नहीं आई हियर यू एब्सोल्युटली. और देखिए यार टैक्टिक्स की बात हम जितना भी करें ना, बॉटम लाइन ये है कि द प्लेयर्स व्हेन वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल, हम शुरू नहीं कर रहे इन अ लंडन डर्बी अवे इन अ 6 पॉइंटर, जहां पर इट इज अ डायरेक्ट कॉन्टेस्ट एज टू हु फिनिशेस टॉप 4 और टॉप 6, और वहां पर forget the geography and history between Spurs and Chelsea. Bottom line, we should have started with that effort. Yes, बहुत सारा मैंने खुद रैंट किया था अगेंस्ट द रेफरी, बट द बॉटम लाइन इज स्पर्स ने खेला एज अ derby. Spurs were giving it all, those tactical fouls, that shithousery that they were doing. Again, that is down to somewhere basically the team
प्लेयर का कैरेक्टर, अगर कैरेक्टर टीम में नहीं है तो दैट कम्स फ्रॉम द कोचिंग, द स्टाफ, राइट? हाउ दे रिएक्ट, अगेन हाउ दे रिएक्ट टू द रेफरिंग इन मोमेंट्स जहां पर आप बेसिकली व्हेन थिंग्स आर गोइंग अगेंस्ट यू, यू स्टॉप द गेम, यू चेंज समथिंग. आपने एज अ स्टार्ट, इवन फ्रॉम अ टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक यू हैव स्टार्टेड लॉफ्टस चीक, चलो ठीक है, I understand कि हॉयबर्ग के साथ he has more physicality, Kovacic was ill, but when you see that he's not working, why hesitate till basically 61st minute जब आप already 1-0 down हो to get on a Zakaria, जब आपको पता है that should have been your first thing first. And then Mudryk, भाई for me, let's be honest, Mudryk ने जो 10 मिनट में दिखाया, I think entire team did not show it in the entire 80 minutes. तो that is telling for me कि आप बंदे को साइन कर रहे हो, is he first of all not clear किया वो पॉटर साइनिंग नहीं है, right, Mikhail? Like why is he not trusting the players that basically that he himself has signed? That means that he's not signed them. और अगर आप ला रहे हो तो why are you getting Aubameyang and Mudryk in the 81st minute when we are 2-0 down? I don't know, man. मतलब logic defy करता है, और again his character is out of question. But again कहते हैं ना, coming to yeah, Mikhail, please. वो कहते हैं ना कि वो थोड़ा सा लैग करता है, वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा लैग करता है, लेकिन फिर स्टार्टिंग लाइनअप भी इसके गलत होते हैं. तो वो पहले जो पहला चेंज होता है, इट इज जस्ट टू करेक्ट द प्रॉब्लम विद द स्टार्टिंग लाइनअप. ये एक थीम है रेगुलर हमारी गेम्स की. आई वुड से कि वो तो लकीली वी हैव 5 चेंजेस दीस डेज, सो यू नो वो काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ गेट्स लॉस्ट in all the substitutions. कि पहली substitution is always to correct the starting lineup. तो उसके बाद बाकी सारी जो substitutions होती हैं वो होती तो ठीक है, लेकिन लैग कर रही होती हैं by 5, 10, 15 minutes. So then it begs the question कि you know what's the point, right? A little too late हो जाता है फिर, right? Instead of taking the game to the opposition, you're just trying to react to the whatever is going on the pitch. तो बात फिर सर्कल बैक वहीं पे आती है मैनेजर पे. अब मैं कितनी बुराइयां दूं मैनेजर को, मैं कितना, तो मेरी तरफ से तो मैं तो ठंडा हूं, आपकी रैंट मैंने देख ली, राइट? लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आप अभी भी पैशनेट हो, लेकिन मैं तो ठंडा हूं इस वक्त, क्योंकि मुझे तो पता है कि जब तक ये मैनेजर है, आई एम सपोर्टिंग माई क्लब का जो भी डिसीजन है, इसको रखो, इसको फायर करो, आई एम सपोर्टिंग देम, बट आई डोंट हैव एक्सपेक्टेशंस इन द मीन टाइम. ये मेरे ख्याल से कि दैट्स समथिंग आई कंट्रोल. तो मेरे लिहाज से एक्सपेक्टेशन, मिकाइल, माय एक्सपेक्टेशन इज नॉट टू सडनली स्टार्ट विनिंग गेम्स, ठीक है? मेरा सिंपल एक्सपेक्टेशन है दैट एटलीस्ट गेट टू अ पॉइंट कि यहाँ पर हमें दिख रहा है जस्ट एज फैंस दैट यू आर मेकिंग सम बेसिक एरर्स टैक्टिकली, एंड देन व्हेन टैक्टिक्स फाइनली करेक्ट होता है, दैट इज टू लेट. एंड इवन इन बिटवीन जब आपको चाहिए फॉर यू टू वॉइस एंड यू नो जस्ट डू समथिंग मोर, that is where you basically are not doing it. So for me, it's about the spirit, the Chelsea spirit being so far off. It is so far off, Mikhail. Like it didn't even look like Ziyech का moment था खाली, ठीक है? और उस moment के, and that's why my rant came about, because the referee, to be honest, that's how it started, ठीक है? और Ziyech का moment था, उस second में people kind of okay, चलो हम लड़ते हैं. Why aren't we fighting for the ball every second? And that is where I see that comes from the manager. यार जब हमारे पास बॉल होती भी है ना, तो वी आर नॉट, इट्स नॉट कि 50-50s वी आर नॉट विनिंग, वी आर प्रॉब्ली नॉट विनिंग द 50-50s, बट ठीक है, व्हाटएवर. बट आई सॉ कि इट वाज एंड टू एंड गेम. यूजुअली उनके पास बॉल आती थी, वो हमारे बॉक्स में पहुंच जाते थे, हमारे पास बॉल आती थी, क्योंकि वो हमारे बॉक्स में होते थे, तो वी वुड ऑलमोस्ट लाइक अ ब्रेक टू देयर बॉक्स. नॉट कि हम बहुत अच्छा खेल रहे थे, बट बिकॉज वो ओवर कमिटेड होते थे थोड़े से, तो वी वुड ब्रेक, बट देन वी वुड ऑल्सो होल्ड अप द प्ले, बिकॉज हमारा भी कोई बंदा नहीं होता वहां पे. सो इट वाज पॉइंटलेस. In the end, we were just, you know, going through the motions. जहाँ पे Tottenham was dictating the play, more or less, throughout the game. ठीक है, अब आप आर्ग्यू कर सकते हो कि पता नहीं, मुझे तो पता नहीं Conte was even at the match or not. No, he wasn't. तो अगर एक मैनेजर, वो तो अलग प्रॉब्लम है, ठीक है. Like my sympathies to him, my well wishes to anybody that, you know, they're showing the passion without him. That's what I'm saying. हाँ, नहीं, तो वही चेंज है ना कि when they were on the ball, they look dangerous invariably. जब हमारे पास बॉल आती है तो everybody's calm, उनकी डिफेंस भी is calm, वो भी, उनको भी पता है हम संभाल लेंगे, जो भी होगा हम संभाल लेंगे, right? Like, so there's so many pieces where we lack intensity कि I have to blame the manager. अगर आप एक जनरल को फौज में फील्ड ऑफ बैटल में भेजोगे that cannot motivate his फौज, तो फौज क्या करेगी? वही फौज में अगर आप कोई अच्छा जनरल भेज दोगे तो वो मार काट देगी सबको आगे से, Genghis Khan कर लो या whatever. Not to say कि I'm condoning violence, I'm just saying कि you have to have the ability to get a reaction from your team. वो उसमें है ही नहीं. तो अब उसमें है ही नहीं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो प्लेयर्स दें. प्लेयर्स कहाँ से दें? प्लेयर तो सारे नहीं हैं.
There is nobody old. Thiago Silva is old. Thiago Silva is not a Chelsea player. He is a AC Milan player and a PSG player before he's a Chelsea player. तो वो आप उसको expect कर रहे हैं कि वो आपका पूरा club लेके आगे चले, ठीक है. He has a personality, he has a presence, he has a work ethic, he has that leadership, that drive. लेकिन और तो कोई है ही नहीं. अब आप ये उसको अब आप थियागो सिल्वा को ब्लेम करना शुरू करते हैं कि जी आपने टीम मोटिवेट नहीं की, तो उसकी तो जॉब नहीं है वो. नहीं, लेकिन देखो, आई एम एक्चुअली पिस्ड ऑफ विद द प्लेयर्स एज वेल, इफ आई एम बीइंग रियली ऑनेस्ट, क्योंकि ऐसा नहीं कि यार मतलब देखो रीस जेम्स, आई लव द गाय यार, he didn't look himself, that is why I'm connecting to the manager also. लेकिन somewhere down the line, if you are playing for Chelsea, you're playing against Spurs, you have Reece James, you have Mason Mount who came on, थोड़ा सा फाइट दिखाया उसने, चलो ठीक है. लेकिन what about say people like say Chilwell first half में he was really bad in my opinion, और वो लग रहा था that physicality में getting beaten is a clear sign that basically they are बोलते ना on the heel. Players are not, मतलब mentally they were not playing as a derby, you know what I mean. तो Ruben Loftus-Cheek, मतलब I'm very surprised with these guys. I'm बहुत pissed to be very honest, because for me the players have to do more by as just as professionals. मतलब that is very clear for everyone to see. I know it's easy for me to say it, but आप नहीं बोल सकते हो that everything is on Potter as well. Like it's a bit of both. लेकिन आप players को तो निकाल नहीं सकते हो इतने सारे. तो that is why it comes down to the manager, because they're not playing for him. Maybe that yeah, people are saying Mason Mount is not doing that. It doesn't want to basically sign a contract while Potter is at the club. That might be a possibility. But again, I'm shocked with these players. I'm really shocked. आप first time में देख रहे थे, how the hell did Harry Kane, Richarlison, Romero, by Højbjerg, how did they walk out of the game without a yellow card? Please tell me. And players did not surround the referee like the way they should have. ये तो पुरानी बातें हैं. चेल्सी को पहली बात ये रेफरिंग का एडवांटेज कभी नहीं मिलता. सेकंडली टॉटनहम वर द होम साइड, तो अगर थोड़ा बहुत वो राउडीनेस या रफ प्ले का एडवांटेज देना था रेफरी ने, तो वो उनको मिल रहा था. So again, I'm not surprised. You can argue each and every time it happens, but you will be arguing the whole season long. अंकित, उससे कुछ बदलने वाला नहीं है. जो होम टीम होती है उसको रफनेस का एडवांटेज मिलता है, क्योंकि आपका क्राउड जो होता है वो देख रहा होता है. So you don't want to create a situation जहाँ पे क्राउड में रेस्टलेसनेस शुरू हो जाए, तो वो थोड़ा सा पी जाते हैं. That's more a public safety approach. Then you don't want the crowd getting into some sort of वो क्या कहते हैं उसको, रायट हो जाए या कुछ इस तरह हो जाए, क्योंकि रेफरी ने फाउल बाहर फाउल दे देता है. तो वो थोड़ा सा एडवांटेज देते हैं. लेकिन चेल्सी को तो डिसीजन मेकिंग होती नहीं है. जब ब्रेक पे मैच होता है तो हमें कोई एडवांटेज नहीं मिलता ब्रेक पे, राइट. तो वो एक अलग कहानी है कि चेल्सी एंड रेफरिंग इज इट गोज बैक टू द 90s एंड प्रोबब्ली द 80s बिफोर दैट इवन. तो वो एक लंबी कहानी है. लेकिन मैं अगेन, if you're going to depend on the referee for your results, so I think that's defeatist. नहीं, that's not my point. मेरा point ये है कि यार आप first of all, वो तो है ही, हमेशा से हुआ है that refereeing is an issue against us, but it's a clear case. यहाँ पर there was it was almost like meant to be that way. Almost referee is like making sure that it goes that way, not once, twice, thrice, 4 times. Plus at the same time, after you get those decisions against you, I want us to react as a team, not in a bad way. I'm not saying कि go violent. लेकिन एटलीस्ट भाई घेर लो रेफरी को, एटलीस्ट स्टॉप द मोमेंट, लेट इट नॉट गो द वे इट इज गोइंग ऑन. एट दैट पॉइंट, यस आई नो Thiago Silva was off the pitch, and that is where if they are not doing it, that Potter should do from the sidelines, like either one or the other. कोई नहीं कर रहा था यार, apart from maybe in that moment of Ziyech. नहीं, बिल्कुल सही है. Big up to Terrain. That's a very apt comment. Madueke ने जो physicality लाता है. Fofana किधर गया? Like Fofana puts in a great gutsy performance. And the next thing I hear is Fofana's Fabrizio Romano gets on the internet and says Fofana is being sent away in summer. So this is the situation of our club. Anybody that's showing a little bit of drive, a little bit of determination, passion on the pitch, we can't seem to get them to play 2 games together. It's so shocking. Again, Fofana was not even on the bench. Yes, people, Kovacic तो इल थे भाई, Fofana not even on the bench is telling, especially after that first half performance. मतलब ऐसा क्या गलत कर दिया था, मुझे आज तक पता नहीं. What we all are scratching our heads वहां पर. लेकिन चेंज मैनेजर हो सकता है टैक्टिकली कोई उसको इंस्ट्रक्शन मिली हो जो उसने ना फॉलो की हो. दैट इज पॉसिबल, बट ही इज यंग, दैट्स वन थिंग. द अदर थिंग इज कि वो आपको एक एनर्जी दे रहा है जो कि आपकी बाकी टीम में नजर कम आ रही है. तो आपको इस तरह की एनर्जी पिच में चाहिए होती है ताकि दे बिल्ड अप एवरीबॉडी एल्सेस एनर्जी अराउंड देम. सेकेंडली, आपकी ऑपोजिशन की जो डिफेंस है थोड़ी बैकफुट पे हो जाती है कि यार ये बंदा थोड़ा सा अग्रेसिव है,
थोड़ा सा ट्रिकी है, तो वो भी थोड़ा सा बैकफुट पे खेलना शुरू हो जाते हैं, राइट। सो ये आपको सारी चीजें कंट्रोल करनी होती हैं पिच पे। आज जिस तरह उनकी डिफेंस डिफेंड कर रही थी, दे वर नॉट बॉदर्ड कि बॉल इज इन द बॉक्स, दे न्यू दे वुड क्लियर इट। कोई पैनिक नहीं था उनके रैंक्स में, कोई वो नहीं थी, वरी नहीं थी। एवरीबडी वाज जस्ट डीलिंग, क्योंकि वो इतनी स्लो पेस पे अटैक हमारा बिल्ड होता है कि वो को पता होता है कि ठीक है हमारे 7-8 लोग आगे हैं, we're going to cover it. Or physically, I felt that they were a little more physical on the in tight spaces compared to our players. You can track that back to Madueke and Datro Fofana were not on the pitch. They seem to be more physical. ये जो आपका मुड्रिक है, मुड्रिक needs a certain type of football, right? क्योंकि वो pace merchant है, तो वो give and go type गेम खेलता है, तो गिव एंड गो वाला उसके साथ कोई था ही नहीं मेरे ख्याल में पिच पे। तो आई डोंट नो, बात ये है कि हमने प्लेयर तो खरीद लिए हैं सारे अटैकिंग टाइप, लेकिन उसके बाद हम खेलते वही पुरानी फुटबॉल है कि बस बॉल पीछे बैक पास करी जाओ, पोजीशन रखो और क्रॉस इनटू द बॉक्स एंड इंशाल्लाह, राइट। तो वो फिर आपको लंबे प्लेयर चाहिए। अगर आपने क्रॉसिंग वाली फुटबॉल खेलनी है तो यू नीड नंबर 9 टारगेट मैन, उसके पीछे यू नीड समबडी एल्स that can do a late run. यार मुड्रिक आके क्रॉस डाल रहा है, मुड्रिक should be the one who should get in behind and people need to supply to him. वो एक अलग बात है कि आप यू हैव टू, मैं तो हर मैच में ये कहता हूँ, मैं घिस गया हूँ मैं कह के कि आपके जो विंगर्स होते हैं दे हैव टू ड्राइव टू द बाय लाइन एंड देन कट बैक, ये दैट्स अ विंगर फॉर मी। बाकी जो क्रॉसिंग वगैरह होती है दैट इज अपॉर्चुनिस्टिक फुटबॉल, कि अगर आपको लगता है कि यू कैन गेट अ बॉल इन बिहाइंड द डिफेंस तो यू ट्राई दैट एज वेल, अर्ली क्रॉस कर दिया, या जिस तरह वो करता है एज पेलाक्वेटा यूज्ड टू डू फॉर वो कौन सा स्पेनिश जीता था हमारा, मोराटा साहब। तो वो जिस तरह करता था कि ही वुड जस्ट गो क्रॉस फील्ड, टारगेट हिम विद ओवरहेड बॉल, लॉन्ग बॉल कह लो, व्हाटएवर यू कॉल इट, लेकिन वो इट यूज्ड टू वर्क, राइट। तो वो आपके पास टैक्टिक्स होने चाहिए। अब जब हैवर्ट्स आ गया पिच पे, और सॉरी नॉट हैवर्ट्स, आपका जियेक वाज ऑन द पिच, तो देन यू नीडेड समबडी टू गोस्ट इन on the far post, and Ziyech could, you have to give the instruction कि just keep pinging the ball there. But you cannot just do that. You have to also have something else, some other dimension, right? वो एक ही चीज करते रहोगे तो वो डबल अप कर लेंगे आपके बंदे को, जो whoever's trying to make that run. It's not going to work. So again, I felt like we were always a trick behind, an idea behind, and 5 minutes too late on everything in terms of tactics. तो बात तो वही है कि पिछली, if you rewind to last week हम यही बात कर रहे थे, you rewind to the week before हम यही बात कर रहे थे, वही बात कर रहे थे, चेंज नहीं हो रहा। अब आज टॉटनहम डर्बी है तो ऑब्वियसली हमें थोड़ी सी फील हो रहा है, पैशन ऑटोमेटिकली आ जाता है यार, I'll be very honest, ठीक है, आना चाहिए, लेकिन you do the same things, you expect different results. तो मेरा वही बात है कि end of the day मेरी expectation तो है ही कोई, I'm supporting my club, if they feel like they want to invest in Potter, that's fine, they can invest in Potter, but I don't expect results now. ठीक है, I will still support them. अगर हम championship में भी चले जाते हैं, I will still support. हाँ, मतलब उसका तो लेकिन मेरी expectation कोई नहीं है for trophies or for results or for table positions or anything. It's just ठीक है, it's my club. बात ये है कि to be honest, we're not playing football that's easy on the eyes either. We don't tune in to watch a player play football anymore. वो वाले दिन पता नहीं, I haven't seen in I don't know. There used to always be at least a couple of players that you were like, एक आधा player होता था that you would Hazard हो गया, Lampard to some extent in his heyday. There was always that spark, that was always. Yeah, कोई ना कोई एक player होता था that you would actually tune in to just watch them play, right? अभी आजकल कोई ऐसा है ही नहीं, कोई player हमारे पास। You can argue कि अब ये Joao Felix can be that guy, लेकिन वो it's too sporadic right now. We're not playing cohesively in an attack. We are not looking dangerous in possession. थोड़ा सा off pace है. I'm happy कि Sterling is coming back and he's trying to put in a shift. लेकिन थोड़ा सा he also looks a little off the Man City level जहाँ से वो आ रहा था। जो कि हमें पता नहीं होगा। Sterling को we are trying to use him on the wing. Now Sterling is not the Liverpool Sterling anymore. He's the Man City वाला बाद का Sterling. So he needs to be more central. Man City में Sorry. We should have used Mudryk in this game from minute one. Man City में जो उनकी midfield है, Kevin De Bruyne and company, they are a very different type of midfield, right? तो उधर Sterling चल जाता है, वहाँ पे Sterling can even do a bit part player role, and क्योंकि पूरी वो machine उनकी चल रही होती है in an attacking focused manner, intensity बहुत ज्यादा होती है, passing का जो speed है बहुत ज्यादा होती है, लॉन्ग पैसेस भी बहुत तेज देते हैं, वो बॉल कंट्रोल बहुत अच्छा होता है उनका कि दे कैन टेक द बॉल ऑन द टर्न इवन अगर वो जोर से मारा गया तो वो हाफ लाइन से पास आता है गोली की तरह, एंड दे आर एबल टू अरेस्ट इट आउटसाइड द बॉक्स। एक आधा पास दिया, गिव एंड गो किया, यूर इन द बॉक्स एंड हियर कम्स द गोल।
तो वो एक डेंजर होता है एलिमेंट कि यू हैव टू गेट द डिफेंस ऑन देयर बैक फुट अ लिटिल बिट, कि थोड़ा सा आप पेस से अगर आप अटैक करोगे तो दे आर गोना स्टार्ट मूविंग बैकवर्ड्स. That's where you can get some physicality and put in a shoulder, get through the block and create something. हमारे प्लेयर्स जो हैं वो इतना स्लो बिल्डअप करते हैं कि हमारे अपने फॉरवर्ड्स आर ऑन द बैक with their backs to goal. जब बॉल आता है तो they don't know what to do क्योंकि वो इतनी स्लो आता है. They're already even the goal which came, skip the moment he had. Joao Felix was there. Ideally, arguably, he should have also done better, to be honest. लेकिन again, where was the other people showing that endurance? You know, जो अगस्त्या बोल रहे हैं यहाँ पर, he has lost his and it has reached it, limit. लेकिन are the players showing enough who are on the pitch? Are they right? The personal यार, again, personal की बात करें, Todd Burley पर comments आ रहे हैं यहाँ पर कि Burley going and getting all these players, अभी again that वो scrutinize करना थोड़ा बनता है यार. मतलब with Mudryk not playing again, Mikhail, with Madueke not playing आज, again, yeah, not even being used, Madueke was shocking था. बात वही है, टैक्टिक्स की बात है कि आप जिसको मर्जी प्लेयर पिच पे डाल रहे हो वो अच्छा नहीं खेल रहा. तो मैं तो फिर वही बात करूंगा. Sorry, I'm kind of, I don't know what else to tell you and what else to say, how else to respond, because आप जिस मर्जी प्लेयर को खिला लो, जिस मर्जी पोजीशन में खिला लो, everybody is underperforming. मतलब no one, नहीं, I think for me, would you say that Mudryk has underperformed till now? Yes, because उसको कोई synergy मिली नहीं है to play the kind of game he plays. अगर यही Mudryk अगर आज या इस weekend मैन सिटी की टीम में खेल रहा हो तो he would have a different impact on the game than in Chelsea game. हमारी game is just not supporting that kind of player right now. वो उसके साथ वही हो रहा है जो रहीम स्टर्लिंग के साथ हो रहा है, जो arguably Aubameyang कह लो, but Aubameyang is not a good example. Like in Ziyech, you can argue Ziyech of Ajax was a different player than Ziyech. तो वो हमारा जो build-up play होता है वो थोड़ा सा different होता है. We don't have that kind of speed, pace about our build-up. Secondly, Premier League is not the kind of league जहाँ पे you can play like Ajax में game होती थी. So he's also learned कि Premier League में you have to be more defensively present off the ball. आपका work rate has to be much higher. लेकिन वो in the end he ends up with all said and done, he becomes a villain, which is he's underperforming in that position always. Consistently underperforming. मेरा वही आर्गुमेंट है कि जब बंदा आपको लग रहा है कि he has not done well as per your expectations, especially when he's your big money signing, especially thinking or assuming he's your player that you have signed, you play him even more to make sure that the team kind of gets more his player, he gets the team's play. Or for me, I rather lose that way than doing this. आप बेसिकली पूरा हम चौचौ बात बुलाते हैं यहाँ पर, आप बेसिकली you just keep chopping and changing, don't get an identity, don't get clarity on the players, no chemistry. What would be the difference अगर आप मुद्रिक की जगह एम्बापे खिला लेते हैं? What would be the difference? The only difference I'll tell you, the only difference would have been Mbappe himself would have driven with the ball into the byline or into the box, right? Team की तरफ से कोई फर्क नहीं पड़ना था, right? So थोड़ा सा इनको भी बहादुर होना पड़ेगा. They will have to start making those runs. एक बीच में पॉइंट था जहाँ पे I think Chilwell के पास बॉल आई and Chilwell was sitting 10 yards into infield from the sideline and he was at he was about 25 yards out of the box and पूरी जो left flank थी was open. Correct. And he just turned around and back passed. So अगर आपके players में there is no will to drive forward with the ball into space to take up the space, तो फिर आप क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हो बाकियों से, राइट? मैनेजर से भी क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते? मैनेजर की हो सकता है इंस्ट्रक्शन हो कि तूने नहीं जाना आगे, तो देन द पॉइंट इज क्योंकि किसने जाना है आगे और वो किधर था उस वक्त, राइट? सो राउंड वी गो इन सर्कल्स, बट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से इज कि इवन एन एम्बापे, इवन ईडन हैजर्ड इन दोस मोमेंट्स हैड टू शो सम इंडिविजुअल ब्रिलियंस ऑन द बॉल, ड्राइव विद द बॉल, एंड वो एक दफा करता था, दो दफा करता था, तीसरी दफा रूबन लॉफ्टस-चीक भी करता था उसके साथ, राइट? इट बिकम्स इन्फेक्शियस कि वो अच्छा ये करेगा तो वी हैव टू आल्सो सपोर्ट द रन, वी हैव टू आल्सो मेक श्योर वी आर देयर टू काइंड ऑफ मेक दैट मूव हैपन. अब वो इस वक्त कोई है ही नहीं फ्रंट लाइन में दैट्स टेकिंग दैट इनिशिएटिव. मुड्रिक वाज डबल टीम द होल टाइम, एवरी टाइम ही गेट्स द बॉल. एक्चुअली मुड्रिक सिंस ही इज मेड डेब्यू फॉर चेल्सी, एवरी टाइम ही गेट्स द बॉल ही इज डबल टीम. सो वो क्या करे? या तो he needs to find a burst of pace and just go blow past them and cut into the box, या फिर somebody needs to help him कि भाई वो जब डबल टीम हो रहा है तो उसके साथ एक बंदा और आ जाए ताकि takes a little bit of the attention away. And that could have been Chilwell today. That's what I'm saying. वो tandem runs होती हैं या क्या उसको कहते हैं जो आपका Chilwell जो would make the overlapping run. Thank you.
So वो overlapping runs आपके वो that guy has to be in and around and very near about you to kind of take that heat off you to give you that little bit of extra space maybe over one step that you need to create some room. तो वो भी नहीं है. So अब ये बात I don't like blaming players unless it's the anomaly. Right now, all the players are not playing well, Ankit. So you cannot say कि जी आज मुद्रिक अच्छा नहीं खेला या आज जाओ फिलिक्स अच्छा नहीं खेला या आज हावर्ट्स अच्छा नहीं खेला या आज माउंट अच्छा नहीं खेला. ये chronically underperform कर रहे हैं. They are chronically not performing, and that becomes जो कर रहे थे वो भी बेकार हो गए. अभी you can argue Felix has kind of regressed. हाँ, तो सब regressed है भाई. Everybody, क्योंकि आपकी कुछ कोई cohesion है ही नहीं अटैक में. Everybody is just trying to understand कि हो क्या रहा है. और बॉल आती है मेरे पास और मेरे आगे तीन बंदे आके खड़े रहते हैं ऑपोजिशन के, तो मैं क्या करूं बॉल के साथ, राइट? ओवर एंड ओवर एंड ओवर इट्स प्लेइंग आउट. He cannot consistently pick the same team because of the squad size we have. That is the reality. वो एक ठीक है, if he's strong enough Potter to actually just the players that show the energy, हम एनर्जी चाह रहे हैं ना, तो अगर players that show the energy are taking off at half time और उनकी जगह Havertz is playing the whole 90 minutes, तो Havertz we know Havertz का जो डायनामिक है कि Havertz is fine, but Havertz is not going to be the one that gives you energy on the pitch. He is the one that looks like he's not trying at all, लेकिन फिर भी he's able to keep up with the game, right? तो वो एक सिल्की कह लो आप उसको, या आप उसको डिसेप्टिव कह लो कि वो ठीक है, वो लगता है कि वो लैकलस्टर है, लेकिन वो एक्चुअली वो क्योंकि इतना लंबा चौड़ा है वो पहुंच जाता है हर जगह. तो that's a different thing. लेकिन what you need is hustle आपको मडुएके दे रहा था, hustle आपको डेविड आर्टर दे रहा था, आपने उनको खिलाया नहीं. तो आप क्या बिहेवियर्स प्रोजेक्ट कर रहे हो फिर अपनी टीम बाकी स्क्वाड के लिए कि आप क्या कर रहे, उनको क्या मैसेज मिल रहा है? उनको मैसेज ये मिल रहा है कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है क्योंकि हमें तो हर दफा खिला लेता है. करेक्ट. और ज़कारिया इज अ ग्रेट एग्जांपल. ज़कारिया बिफोर इंजरी, मतलब आप कोई आर्ग्यू भी नहीं कर सकते. फॉर मी ही वाज फर्स्ट नेम ऑन द टीम शीट वेरी सरप्राइजिंगली. वो था, आपको याद है तो एक महीना क्वेश्चन मार्क है कि मे बी ही इज नॉट फिट स्टिल, लेकिन क्वेश्चन मार्क है. आई डिडंट अंडरस्टैंड कि लॉफ्टस-चीक ने आज क्या कंट्रीब्यूट किया गेम में. I love Loftus-Cheek. I want him to succeed. लेकिन he was missing in the whole game. So I don't know क्या expectation थी हमारी. लेकिन जो भी थी वो एंड में आया थोड़ा सा मेरे ख्याल में उसने खेला. I wasn't watching in the end too much. नहीं, Loftus-Cheek मतलब if I was a manager I would have taken him off even before half time if I'm being really honest. So that's what I'm saying, right? कि that kind of substitution makes sense. कि आप, it's not nothing against the player sometimes. If you're not having an impact on the pitch, if you're not having an impact on the pace of the game or the way the opposition is playing, then it's a tactical change. You change it, right? वो भी बाद में लेट होता है. अगर होना भी है तो वो with 10 minutes left in the game he is going to bring on Zakaria. तो वो थोड़ा सा लैग कर रहा है अपनी डिसीजन मेकिंग में भी. डिसीजन सही होता है लेकिन it comes too little too late, right? तो वो वाली बात है कि again गोल वो जितने की होती अंकल होती, right? To me it's a managerial problem. आप जितना मर्जी उसको सपोर्ट कर लें, उसमें नहीं नजर आ रही मुझे कैपेबिलिटी टैक्टिकली ऑन मैच डे टू एक्चुअली विन योर गेम्स. वो he is fine in a lower level club जहां पे just competing is enough. You get the odd win, you get the odd draw, and that's not Chelsea. लेकिन वो आपके जो ओनर्स हैं उनको वो नहीं चाहिए, उनको रिजल्ट्स नहीं चाहिए नेसेसरीली. उनको बंदा ऐसा चाहिए जो उनके साथ काम करे, जो उनके साथ उनका जो प्रोजेक्ट जो उन्होंने शुरू किया है 2030 व्हाटएवर, वो उसमें उनकी हेल्प करे कि भाई हम ये प्लेयर देख रहे हैं, हम वो प्लेयर देख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है ये वो तो वो आगे से वो अपनी फीडबैक दे देता है. प्लेयर आ जाते हैं, अब वो एवरी टाइम ही टर्न्स अराउंड देयर आर 5 न्यू प्लेयर्स स्टैंडिंग. अब वो किसको खिलाए, कहाँ पे खिलाए? अभी कोई प्री सीजन तो है नहीं. मैं ये नहीं कह रहा कि उसने प्री सीजन के साथ भी कुछ पोर्ट लेना है, उसने फिर भी कुछ नहीं करना, लेकिन उसके पास एक्सक्यूजेस हैं कि मेरे पास इंजरीज हैं, मेरे पास प्री सीजन नहीं था, मेरे पास नया स्क्वाड है, उसके पास सारे एक्सक्यूजेस हैं. तो भाई ठीक है, फिर आप एक्सपेक्टेशन ना रखें. फिर उसको अगर आपने परसिस्ट करना है उसके साथ तो फिर आप एक्सपेक्टेशन अपनी पार्ट कर दें. अगर इस सीजन हम रेलेगेट ना हुए तो आई थिंक दैट्स अ गुड इनफ सिचुएशन. अगर हम रेलेगेट होने लगे, दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर मी, दैट्स अ प्रॉब्लम. क्योंकि देन फाइनेंशियली देयर आर बिग इम्पैक्ट टू द क्लब, राइट? बिकॉज आपको टेलीविजन राइट्स को आई डोंट नो, वो मेरे ख्याल में यो पेमेंट होती है थोड़ी सी. If you drop down into the but I don't think it's the same level as definitely not. तो ये मेरे ख्याल में वो डिजास्टर हो जाएगा and they have to cut. अभी इस वक्त हमारी टेबल पोजीशन क्या है आज के बाद? 10th ही है, लेकिन वो बिकॉज तो ये देखो ना कि ये भी एक अजीब मामला है, माजरा है कि हमने पिछले 16 मैचेस 17 मैचेस में हमने 2 जीते हैं, लेकिन टेबल पोजीशन हमारी 10th से चेंज ही नहीं हो रही. नहीं, अभी एस्टन विला
So abhi it's going to change next month. Well, we are waiting for going to bottom half मैं वैसे almost. बात कर रहा हूँ कि वो circumstances are also colluding in a way where it could be worse, but somehow it's not. So वो player, the management, the owners are also kind of observing how bad is it really, right? We're not losing ground necessarily in mathematical terms. Yes, we are, I guess, but table position wise, we're 9th, 10th, we're hovering in there. So you could argue with the change in fortunes and a change in results, we can very quickly jump into the European spots, hopefully. राइट, यही होप है इस वक्त कि आप किसी तरह वो कॉन्फ्रेंस लीग में आ जाएं या आप यूरोपा लीग में किसी तरह आ जाएं, या अगर आप कोई बहुत ही लंबी रन ऑफ विंस पे चले जाएंगे तो मे बी यू कैन टारगेट टॉप 4, लेकिन आई थिंक इट्स टू फार राइट नाउ. जो हमारे it goes from bad to worse. कल with the Liverpool dropping 2 points में थोड़ा सा ray of hope आया था कि यार एटलीस्ट यूरोपा लीग हम कर सकते हैं ट्राई, but then again it goes from bad to worse, simple as that. यार again Fulham, Liverpool, Brighton, Brentford, Aston Villa, भाई they are there or thereabouts better than Chelsea, मैं तो बोलता हूँ. But generally speaking, if you look at the whole game today, Tottenham look like the better side. ठीक है, आप रेफरिंग साइड पे कर दें, आप रेफरिंग ठीक है, थोड़ी टैक्टिकली एप्लीकेशन, फिनिशिंग, भाई be shithousery, all the things that you tick mark in a derby is what they had. Yeah, and we didn't. तो अब पता नहीं, अब I don't understand, man. I don't understand क्या चाहते हैं, मुझे नहीं समझ आ रही, क्योंकि अगर हम ये सारी चीजें चाहते हैं जो हमें नहीं दिख रही, तो फिर हमें मैनेजर बदलना पड़ेगा. तो वो हम नहीं चाहते मेरे ख्याल में. वो जो ओनरशिप, मैंने से वी आई मीन ओनर्स, तो वो ओनर्स जो हैं वो दे आर लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, जो कि उनको मिल रहा है. आई डोंट नो क्या मिल रहा है उनको, लेकिन कुछ है और है जो कि उनको मिलता है. और नहीं, मेरे ख्याल से इट्स अबाउट ऑलमोस्ट लाइक ईगो नहीं बोलूंगा, इट्स अबाउट, आई नो दे आर नॉट फूल्स जस्ट टू बी ऑन ईगो, बट इट्स मोर अबाउट, मेरे को लगता है क्योंकि यार उन्होंने आधा ब्राइटन खरीद लिया ना, तो दे आर लाइक, दे आर सो इन्वेस्टेड इन दैट प्रोजेक्ट नाउ कि दे आर लाइक ठीक है, मतलब दिस इज व्हाट वी सेट आवर रिवाइज्ड एक्सपेक्टेशंस, और इफ यू आर नॉट getting that, then we'll probably speak. नहीं तो भाई just continue what it is. It's been a big misstep. Actually इनको ब्राइटन खरीदना चाहिए था. इनके साथ ये बहुत बड़ी गलती हुई है इनसे, क्योंकि that's exactly the kind of club these guys mentally are in the mindset to buy to enjoy, right? क्योंकि everything is an experiment. So they should have bought a Brighton, and they should have gone and bought all these players for Brighton, right? And Brighton would have overperformed and become a European team, right? And they would have got it for pennies on the dollar compared to Chelsea. But that was maybe a hard sell for their investors. Who is Brighton and why are we buying them, right? But Chelsea was a big name club, so they went in for Chelsea. लेकिन बात ये है कि they don't know football. उनको तो they are baseball people, I think. I could be wrong. Owners are not too deep in this. They cannot afford to sack Potter. वही है. It's about the money plus the fact that entire team वापस से restructuring करना है. मतलब it's not easy to do. And I think the other thing is any good manager right now will stay away from Chelsea, क्योंकि इस वक्त जो हमारी table position है और जो situation है with players. Most difficult job in European football, I think Potter admitted. I know it comes across wrong, लेकिन वो reality है, सच में बोलूँ तो. मतलब ठीक है, तो फिर क्यों ली? वो तो आने के बाद उसको रियलाइज हो ना. नहीं, पैसे मिल रहे हैं उसको, पैसे उसको मिलेंगे, चाहे वो 6 गुना पैसे, चाहे he fails, चाहे he succeeds, he will get the money. So for him there is no risk, right? So but problem ये है कि I think it's a necessary phase we're going through, जहाँ पे owners को बंदा ऐसे चाहिए था मैनेजमेंट में जो कि उनको that is friendly towards them. Tuchel जो था वो was a different mindset. वो जिसे कहते हैं ना, जो वो फौजी general on the pitch and off the pitch. So he was too much of a personality for them to kind of confide in, and at the same time वो yes man type role उनको चाहिए था, तो वो he was not going to be that guy. तो ठीक है, तो आपको yes man चाहिए था, तो yes man आपको मिल गया, perfect yes man मिल गया. So अब they will have to correct the situation in the summer. तब तक Chelsea fans have to kind of while keeping our expectations reasonable, at the same time we have to also calm down. I'm preaching calm because आपके मेरे करने से इस वक्त कुछ नहीं हो रहा. ओनर्स को जब तक नहीं समझ आएगा कि ये बंदा इनको रिजल्ट्स लिमिटेड ही दे सकता है. मेरा तो मुश्किल है, लेकिन I'll try my best. That's what I can say. But we have to. This is the thing, right? कि आपके viewers भी take cues from you. So if you need to, if you lose your cool, then everybody else starts losing their cool, and that's not going to happen. See, मेरा यही point है Mikhail, कि यार वो बंदा, I understand the entire project that they have taken, etc. I understand that, लेकिन
every time we are regressing and regressing and regressing. I rather have a caretaker manager right now. हाँ, Admit we'll take an L and we'll move on. 100%। मैं तो यही कह रहा हूँ भाई कि जब तक ये मैनेजर Exactly. है, you keep doing the same things, you expect बहुत different मुश्किल से हमने results। अचीव किया यार, मतलब we have seen us not even performing well in the early 2000s. Then for so long we did so Yeah, well. I don't yeah. know. Luis Enrique is jobless। उसको कोई दे दो, उसको थोड़ा बहुत केयरटेकर Zidane, रोल दे दो। केयरटेकर Luis रोल दे दो कि Enrique. आजा भी कर ले। पॉटर को भी रख लो, उसको भी रख लो, सबको कहो कि इकट्ठा मिलजुल के काम कर लें। नहीं, मैं तो बोलता हूँ यार, मैं ऑनेस्ट, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन यही है। मिकाइल, आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू भाई, मेरा तो यही है, चैट आप भी बोलिए कि यार आई वुड से राइट नाउ आई एम क्लियर पॉटर आउट। अभी तक वो क्लियर बोला नहीं था, आज पहली बार बोला क्लियर पॉटर आउट है मेरे लिए गेट अ केयरटेकर मैनेजर, इट कुड बी जॉन टेरी, इट कुड बी एनीवन, पेटर चेक ला दो हु डज नॉट हैव प्रॉपर कोचिंग एक्सपीरियंस, जस्ट गेट देम, carry on with the season. If it's going shit, but at least you'll have someone with the Chelsea DNA, someone who cares for the club being there, तो थोड़ा सा ज्यादा इफेक्ट होता है, और just a change sometimes brings about that. हम देखे as Chelsea fans, we have seen that. तो just get that, take an L, 60 मिलियन कर रहे हैं, दे दो जो भी है, but at the same time आप at least you can do something that नहीं, you can work for next season. अभी right now वो hope against hope वाला मामला हो रहा है, week in week out, or we are going from bad to worse. We are not having any mentality, no identity, nothing. We just need to go back to square one, go back to the drawing board with what Chelsea is about. That's what मेरा है, simple सा बात है। He doesn't fit the project in the short term or the long term, Potter, तो why keep him? मेरा ये सिंपल सा फंड है बस। देखो, जो इम्पैक्ट जिस कोच ने करना होता, we have seen enough football। We are quote unquote new fans of the game। We've only followed it for 20 odd years, but we have seen enough football that if the manager is going to have an impact, usually you can start seeing the impact right from the beginning. Usually, it's not always the case, but usually 3 out of 4 times you can see immediately. Potter के case में I don't immediately see anything. So then that means that you have to be okay with having no good results for multiple seasons for him to build slowly and be that other 25% of managers that over time are able to deliver results or show an impact, but may not be able to deliver immediately. So then this is why I'm saying I'm supporting my club. अगर वो चाह रहे हैं कि they will persist with him and eventually he will come through graft and consistency and continuous the continuation of management and philosophy and practices and tactics. तो ठीक है, मैं यहाँ पे I'm not ranting because I'm trying to show my support for my club कि ठीक है, if this is the direction they want to go, but I 100% agree with you कि for me it's a lost cause because you cannot afford to not have results for 2 or 3 years. It's not the kind of players are almost accepting it, और entire spaces नहीं, it's a trust the process वाला चीज, वो winning mediocrity is mentality okay. है, वो खत्म हो गई है। You're not looking for wins, you're not looking 3 points देखे हुए अरसा हो गया। I don't even remember कि 3 points मिकाइल गोल गोल देखे हुए अरसे हो गए। हाँ, वो जिस तरह आज उसने गोल किया है टॉटनहम के बंदे ने, हमारी टीम ने कब किया लास्ट गोल इस तरह का, लाइक फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स। ठीक है, वो एक हुआ था, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, नहीं वो भी जॉर्जिनो ने किया था फॉर आर्सेनल, वो हमारा गोल नहीं था। अच्छा, उसको भी ओन गोल करार दिया गया था, राइटली सो, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट वी आर मे बी कर्स्ड इन अ वे। जोसे मैंने फ्रैंक लैम्पार्ड कोई भी लाओ, डेरेन इज सेइंग भाई यहाँ पर जीके का बोला कैरिक, मेरा ये है एक चीज, हाँ someone with English experience helps, but after seeing Potter ka maybe not, but I would say that definitely Chelsea experience is required, more DNA of Chelsea. जोसे का प्रॉब्लम ये है कि जोसे आई थिंक will probably eventually come in for a third stint at some point. I just don't think कि this team right now जो कि इन्होंने इकट्ठी की हुई है, this is not a Jose profile team. आप attacking players लेके आ रहे हो, young players लेके आ रहे हो. Jose usually doesn't do that. Jose will usually get Thiago Silva types in the club and try to win something the same season, right? वो ये आपके Koulibaly and Thiago Silva and all these old people who are Azpilicuetas, वो इनको लेके he will try to win something. वो उसकी philosophy वो है. So I don't think that falls in line with the project, the way the owners are trying to build a new team, a new era. Jose may not be the right person for that because Jose is too far gone in his own mentality and in his own ways. कि आप उसको नहीं, you cannot say कि जनाब अब he will change his ways and become a different type of footballer, so a different type of coach. तो आप वो ठीक है, sentimentality है वहाँ पे, I agree, but
I don't think that's the answer. Answer आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए who comes in with some fresh ideas, but at the same time there is a challenge कि आप in the Premier League you have to know the oppositions. अगर आप एक बाहर से कोच लेके आते हो who doesn't know the opposition, so then it has to be a very technically astute coach, right? कि वो it doesn't matter इसलिए who मैंने the सैम ने opposition. यहाँ पर बोला ना एटलांटा मैनेजर फॉर मी राइट नाउ इज नॉट द राइट टाइम, मे बी इज द राइट पर्सन, बट राइट नाउ इज नॉट द राइट टाइम टू एक्सपेरिमेंट. हमने किया एक्सपेरिमेंट बहुत. तो लेकिन मैं जिडान से आई एम एक्चुअली फॉर जिडान एज मच एज लुइस एनरिके नहीं. आई एम सेइंग यस फॉर जिडान अगर अगर आता है तो. Yes, I know, totally different Premier League experience नहीं है, but I need someone who inspires our players. You know what I mean, Michael? With all due respect to Potter, वो inspire नहीं करता. एक वो भी होता है ना कभी-कभी that But you kind of play for a manager. right there, I'm sorry, but you've already full stop your own argument because he doesn't speak English. So how is he going to inspire anybody? नहीं, you get Terry along as an assistant. Terry तो है ही assistant. Terry should be the new assistant manager, and you have Zidane. मतलब two legends basically. आप I think that's a good combo. Again, it depends on them, of course. जहाँ तक टेरी की बात है कि वो टेरी लैम्पार्ड या ऑनरी ये सारे वो सेम उसमें हैं कि दे आर ऑल नाइस पर्सनालिटीज, बट आई डोंट थिंक देयर टेक्निकली देयर मैनेजमेंट. टेरी एस्टन विला के लिए असिस्टेंट मैनेजर रहा हुआ है. आई नो डूइंग इट एस्टन विला इज डिफरेंट. और फिर उसके बाद नहीं रहा ना, तो बात यही है कि वो he did a good job, bro, Michael, but he did a very good job. नहीं, I think he was more a dressing room voice. I don't think he was deciding the tactics correct. on match day. वो दूसरा ही उनका कर रहा था, वो चला गया. But so I like Terry. I like the idea of Terry being around the club and involved because he has a role to play probably that we need right now, which is have that personality. But tactically, अगर आप then you can also bring Lampard back and Zola back because वही बात है कि personality तो सबकी है. They will all motivate. Between Lampard and Zola, in my opinion, is like Lampard and Zola have already are like first team managers. They won't. I don't think it's right to make them an assistant. So, lekin Terry, I think, can become an assistant manager, in my opinion. Or then you get a main man. I'm not disagreeing, but what I'm trying to say is कि Terry Zola को ले आओ, ठीक है, आप Zola को मैनेजर बना दो. That is also not too bad actually. Terry को असिस्टेंट बना दो, तो I think that will work. But दोनों में से personality Terry की ज्यादा है. So coaching can be Zola and personality can be. I know it's easy for us to say. But it cannot be that way because Zola, Terry is very junior to Zola. Zola was doing his thing when Terry was a boy, just entering the team, right? So वो dynamic है कि I don't know if that will work because you cannot have somebody who जो छोटा होता था, polishing Zola's boots and then he's done that. He's actually said that. I'm not saying this derogatory. I'm saying this from a respect point of view. कि it's very hard to then change roles and now you're my boss, right? So then I don't know if that's fair to Zola even because Zola in my mind was probably arguably one of the top 3 best players of the club or 4 best players. Yeah, he was voted the best player in Chelsea's history. Yeah, he's under appreciated in this era because वो जिस era में था उस era में इतना success नहीं था, लेकिन he was part of trophy winning runs and उसका जो level था खेलने का वो I would probably say कि Hazard के अलावा कोई उस level पे नहीं खेला हमारे लिए lately. Agreed. Right, so agreed. And I would argue that between the two he was probably better. He was actually better. He was actually better. So the set pieces. So the thing is that then we're taking something away. कि अगर आप उसको तो I would bring back Zola, I would bring back Terry. लेकिन I don't know if they'll work together or not. That's a different thing. लेकिन only as caretakers. While the owners try to go find an astute tactician that can actually come and build an army, build a dynasty, build a way of playing football. जिस तरह Tuchel ने create किया था कि it didn't matter who we were facing, we had enough tactics nailed down and enough energy, passion, dedication, direction, instruction that we would deliver on the pitch, and it didn't matter who we were playing against. So that's a different level of manager जो कि आपको हर दफा नहीं मिलता. So you have to go find somebody. Hopefully, you find somebody that's that good. But in the meantime, आपको caretaker चाहिए मेरे ख्याल में just to get a new manager bounce, just to get a few points and just start creeping back up the table instead of losing ground to everybody around us in the table right now. So ये hopefully आज के बाद कोई, again, I don't want to take it into that territory, but लेकिन it's one more result, one more bad result. अब आप उसको रेफरी को ब्लेम कर लें, प्लेयर्स को ब्लेम कर लें,
मेरे हिसाब से तो it only comes back to one person, that's Graham Potter. Agreed. मतलब you have to take responsibility. Again, आप मतलब last जो press conference था for me it was very telling that the guy is giving excuses after excuses. He spoke facts. मैं deny नहीं करता हूँ, but लेकिन वो एक wrong impression देता है to the players who are, remember, very young squad right now, except for Thiago Silva, Aspilicueta who's unwell as well. Thiago Silva बाहर गए. Come on, Kante is injured. The first team which is playing is actually very very young आज के दिन में. So if you are saying all those points, कहीं ना कहीं players को भी they are using it as excuses at the back of the mind subconsciously. प्लेयर्स को पता है मैच नहीं जीतेंगे तो क्या हो जाएगा, Exactly. पिछला भी नहीं जीते थे, उससे पिछला भी नहीं जीते थे, उससे पिछला भी, इज वन मोर. बिल्कुल. अगेन बहुत सारे नाम दिए मैन सिटी ग्लोबल सिटीजंस ने. अगेन पोचेटिनो, मानव वाज आस्किंग अबाउट पोचेटिनो. पॉच, आई नो दैट लॉट ऑफ पीपल हैव सेड दैट पॉच आल्सो मैं ले लूं अभी. पॉच का यार अब पता नहीं, मे बी आई एम बिट टू चेल्सी इन दैट ओपिनियन. एंड द गाय हैजंट रियली वन स्टफ फॉर मी, तो बट ही इज डन वेल, बट is he a man manager really? मतलब I have my question marks on Poch. I don't know. No, Yeah, right? I don't like the whole Yeah, conversation. even me, I'm not for Poch. Like, I know I'm मतलब अपने कम्युनिटी में बहुत लोग बोल रहे हैं Poch should actually work. नहीं मतलब did he win Premier League? No. Did he win anything? No. और PSG में he was a flop. Let's be honest. So I think I doesn't don't tick. think he has what Correct. we need. ठीक है, I'm not saying he's a bad option, but he's not a good option. I would keep looking. Correct. And I would say the same for Marcelo Bielsa. The guy is a superb tactician, but we don't need a tactician right now. We need that, but I think a lot more. हमें चाहिए package. Rafa Benitez can be your वो बोलते हैं rich man Sam Allardyce. He's one of those managers, but again, Rafa Benitez. We all remember the time that he had at Chelsea. वो You ओबी know, मैकेल ने उसका भांडा फोड़ दिया ना सारा, कि भाई वो nobody liked him in the dressing room, तो बस. yeah, it's a fact. Well, again, Musab, we need to do that. We are lucky that Aston Villa or आप क्या भाई Crystal Palace are not doing well. Otherwise, we would have actually been at maybe 13th position right now. By again, वही हम बात करते टीमो वर्नर, एंजो फर्नांडेज, जाओ फिलिक्स, जो दो लोग जो अच्छे लगे थे बहुत in the last few weeks, कहीं ना कहीं even they are regressing, and that is where we are kind of saying that maybe it's a manager or it's just the fact that हम mediocrity को बोल रहे हैं चलो ठीक है boys are playing good वाला चीज मामला, where we need to question them. Are they being questioned? So they are maybe regressing as well, and that is where choice for caretaker manager he didn't really impress me in his second caretaker stint, if I'm being honest. Dean Smith, not a bad option. Lekin again, Big Sam, the players we have, I think we need someone with a little bit flair at least, नहीं Mikhail? So Yep. I think that's why Zola की बात हम कर रहे थे, क्योंकि Zola has that kind of mentality. Zola का criticism था as a manager that he plays the team with a little bit more flair than what is required. Pragmatism नहीं है, लेकिन I think this team might actually need that with a voice like a Terry. I think that is something which makes sense to be, which Mikhail has suggested. Benitez nahi, Gaurav, again no. Hansi Flick, I know he was seeing a lot of games, but again, between Hansi Flick and Zidane, if you're going for an abroad manager, I personally would want Zidane because of the एक होता है ना, players will okay fine, it's Zinedine Zidane we're playing under, वो वाला चीज होगा versus Hansi Flick. लेकिन Hansi Flick might be a better tactician is what I'm assuming, but again, it's anyone's pick. Such way it's anyone's pick right now. क्या लेकिन what about the lone players यार, what will they be thinking Mikhail अभी? Zakaria, Felix, man, are we even signing them? Yeah, it's in the air, yeah. That's a big Contracts. that's a big question mark, कि इतने सारे पैसे खर्च लिए हैं और जो प्लेयर एक्चुअली साइन करने चाहिए वो तो अभी तक साइन नहीं हुए. नए प्लेयर ले आते हैं हम, हर 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 मैच में एक नया प्लेयर ले आते हैं, लेकिन जो एक्चुअल प्लेयर्स हमें जो नजर आ रहा है कि जो एक्चुअली आर वर्थ नेलिंग डाउन लॉन्ग टर्म फ्रॉम व्हाट वी हैव सीन सो फार, वो हमने किया नहीं है. सो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क. समर में इफ जाओ फिलिक्स गोज अवे, इस टीम में कुछ नहीं बचा, because he's probably the man you have to build around, क्योंकि वो he अच्छा, has आज ऑलमोस्ट एक और मोमेंट हुआ था. डिड यू सी दैट? आई नो बहुत कम पॉजिटिव्स के आज के गेम में, बट एंजो एंड जाओ फिलिक्स आल्सो हैड अ मोमेंट अगेन, ऑलमोस्ट रेप्लिका ऑफ द गोल दैट दे स्कोर्ड ना, ऑलमोस्ट वो मोमेंट हो गया था आज मिस वापस कर से. दिया. Yeah. ये पहले हाफ में हुआ था, लेकिन अगेन पहले हाफ में क्या किया ना, तो स्पर्स को हम इतना बात चेल्सी के बारे, लेकिन कहीं ना कहीं वी हैव मिस्ड आउट. द स्पर्स हैव एक्चुअली प्लेड exactly to the script. Spurs have actually played that game, or that is where पहले 15 मिनट में I would argue that Chelsea were slightly the better team in the first 15 minutes, but that's it. After that, it was all referee first, obviously helping the Spurs, tactical fouling, and
Spurs themselves, went for it, or again just scoring after halftime helped. But kahin na kahin, I think okay, Manav is saying Flair. Yeah, Flair alone nahi chahiye Manav. That's the thing. We need a combination. But we Arguably, have to say, arguably, Kepa should have stopped that goal. थोड़ी सी उस पे deflection हुई थी. Maybe that threw him off a little bit. Lekin he got his hand to it, and if goalie gets your the hand to the ball, expectation is कि you're able to palm it away. palm it If over. you palmed it away, maybe you should have punched it. लेकिन वो I think थोड़ा सा back foot पे था because of the deflection. लेकिन it is what it is. अब second goal जो हुआ, that was just bad organization defensively. क्या कर सकते हैं, but the thing is कि वो scrappy goal कह लो, आप उसको जो भी कह लो, they put it in the back of the net, and sometimes that's what you need to seal a result. वो हमारे आगे, I would argue कि टॉटनहम ने वो जो second goal किया है, वो चेल्सी में है ही नहीं आजकल. कि you can get one goal, but you don't know how to close out a game with the second goal and kind of put the game to bed. वो है ही नहीं हमारे में ability आजकल, as a team, as a unit, to go find that scrappy goal and get the job done. हमारा पहला गोल ही हम चेज करते रहते हैं, वो भी हम चेज नहीं करते, वो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि खुद ही हो जाएगा, तो वो खुद ही तो कभी भी नहीं हुआ. You have to put something in there. I don't know. To me, it goes back to starting lineups. Starting lineup was less than perfect, less than ideal. I think Madueke. टीमो वनर बोल रहे हैं ना यहाँ पर. टीमो वनर आपको तो हम निकाल दिए, लेकिन आई थिंक Zakaria or Mudryk were two people who were like, oh, chalo, yaar, in a game like this, I think we needed like that. We need some pace, we need some height, physicality, and Zakaria brings that as well. So I was very Madueke, I think Mikhail is a fan. Bhai, मैं agree करता हूँ. Madueke brings a lot of strength. People forget. वो एक थोड़ा सा physical है, थोड़ा सा obviously उसमें भी अभी time लगेगा उसको to learn the tactics and understand instruction क्या है coaching staff से. अब आप देखो कि कोचिंग स्टाफ, खैर मेडुएके जो है ही स्पीक्स इंग्लिश एक्चुअली, सो देयर इज नो इंग्लिशमैन ना, इंग्लिश. हाँ, उसमें वो नाम ही मुश्किल है उसका, ही स्पीक्स परफेक्ट इंग्लिश, वो इंग्लिशमैन है, बाकी इंग्लिश एक्सेंट से बोलता है इंग्लिश, सो वो देयर इज नो कम्युनिकेशन इशू देयर. सो एक्चुअली आई एक्सपेक्ट हिम टू गेट मोर गेम टाइम, लेकिन वो थोड़ा सा भी है बैलेंसिंग एक्ट के, जियाक को भी आपने एलिनेट नहीं करना. Right, so but that's fine. I think both can coexist. आप एक को start कराओ, दूसरे को bring off the bench. I think we can still make it work. But you would argue कि in a derby, maybe, I don't know, like I don't want to say that Ziyech is not able to impact a derby. Ziyech has played the big games. He has played the Champions League games. He knows what. So exactly. So I think उस basis पे Ziyech got a start, but was he able to impact the game? No, he was not. So I would say that was more down to tactics, because जब तक हमारे पास वो right wing पे ball आती थी, तो they would hold up the ball कि और कोई आए, आगे आए, क्योंकि वो usually we were driving out from our box. तो I would argue कि वो बात वहीं पे है कि we were giving up the ball a little too easily in our midfield. एक दो जगह पे ball we had the ability to take the ball out, but we gave it away. और फिर अटैक हुआ हमारे पे. तो even जो गोल हुआ पहला, the first goal, that was a clearance from our side. We could have kicked it outside for a throw in, but no, he kicked it back into play to keep the ball in play. उसी पे गोल कर दिया उसने. So that's a good point. So वो थोड़े से ये little things start adding up here and there in terms of behaviors. कितना प्रेशर ऑब्जॉर्ब करोगे ऑपोजिशन का, राइट? तो वो बार बार आ रहे थे, एंड हैरी केन इज नो जोक, दैट्स गोना बी अ हैंडफुल. सॉन खेला नहीं आज, नजर नहीं आया मुझे. नहीं आया था सब्स्टिट्यूट से. रिचार्लिसन वाज डूइंग शिटहाउसरी ना. दे हैड गॉट शिटहाउसरी टू स्टार्ट बिकॉज़ ऑफ द रीजन. आई कॉल हिम शिटहाउसरी ओनली. मैन, आई एम रियली पिस्ड ऑफ. उन्होंने सही किया. फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव वाज द राइट थिंग. रेफरिंग वाज हॉरिड. इवन मैं कमेंट्री सुन रहा था उस पे, जो भी कमेंट्री कर रहा था इडियट, वो पूरा वो जो सीक्वेंस था जिसमें जियेक को रेड कार्ड मिला, जियेक को उसमें उसको 3 दफा धक्का दिया. 3 दफा टॉटनहम के प्लेयर ने धक्का दिया. एक दफा कमेंटेटर ने नहीं बोला कि उसको धक्का लगाया किसी ने. ऑल द कमेंटेटर सेड वाज, देखो इसने उसके मुंह पे मारा है हाथ. और हैवर्ट्स को येलो कार्ड मिला क्यों लास्ट तक दिखाया भी नहीं रिप्ले. वो तो जब वो मुश्ती हो रही थी, आई थिंक उसमें ही, या आई थिंक ही क्लिप्ड द प्लेयर बिफोर, जस्ट राइट बिफोर. See, that's the thing. If you're talking about clipping, bhai, Richarlison literally stopped. I know यहाँ पर वो reasons नहीं, people before people judge me here. It's not the reason why Chelsea lost. But that really matters to the game and the momentum of the game. आप basically Richarlison, Reece James is going on an attack. You clearly clip him. That's the definition of a yellow card. When the guy is actually going on an attack, you clip him so he doesn't go, and that's a clear foul. It's a
tactical foul. He didn't want to play the ball. Richarlison missed out. Harry Kane. Kepa, first, chalo, Thiago Silva ka injury, I don't blame Harry Kane. Any striker would have gone for it. Contact sport hai. But Kepa collected the ball and Harry Kane went and, barged him. It was a clear case of yellow card. Højbjerg, tactical fouls, kitna karega banda? 2, 3. Generally in football, what I have seen from last 25 years, I know that उनको you have to give free yellow hand card at मिला some हुआ point. था. Romero. They were playing open. They knew कि उनकी physicality would not be called. तो उनको वो idea मिल गया था पहले ही कि इनको लताड़ो. The problem I would argue was कि हमारा जो midfield में जो physical presence होनी चाहिए थी, Ruben Loftus-Cheek, he was absent. He was not interested in being physical. In fact, in first half, Chilwell also had a very poor first half. सच में बोलो तो, he had a very poor Chilwell first half. यार, he's nursing an injury. Fofana आया था, वो भी एक clearance की अच्छी की. Actually, I'm liking Fofana. What I've noticed is कि Wesley Fofana जितना भी खेला है, he's always able to catch my eye. कुछ ना कुछ अच्छा करता है वो कहीं ना कहीं. He's an excellent player, Mikhail. That's why we went for him, right? He was an excellent player. उसमें है individual quality नजर आती है. उसने वो जो clearance की, जितने आराम से की और जितने आराम से वो खड़ा हो गया उसके बाद, वो it tells you कि ये this is something your other defenders don't do or can't do. थोड़ा सा उसमें physicality element है. A young Koulibaly used to do that. If you notice, a young Koulibaly used to do that. Koulibaly थोड़ा सा भारी है. I don't know. He can, I guess. But I'm comparing him to, let's say, Chalobah and Azpilicueta on that side. He offers a little more than they do, or something different than what they do. Chalobah probably, arguably, can be, as acrobatic or whatever. Lekin Fofana seems to kind of catch my eye in a good way. लेकिन वो उसने क्लियरेंस की, लेकिन साथ ही वो गिरा रह गया. वो साथ ही गिरा रह गया और मुझे साथ ही ये पहला ख्याल आया कि इसकी नींद तो नहीं गई फिर से. So, that's the problem. That's the question mark. That's the question mark with Chilwell. That's the question mark with Reece James. That's the question mark with Wesley Fofana. Zakaria, right? कि ये आए हैं, कितनी देर के लिए आए हैं? Are they going to get injured and go back again? So we have our own problems in the back room, right? With the medical situation. इतने players injured हैं that are coming back. कि I am willing to be patient for the sake of them not getting injured. For them not to have put in 110% every game, because they are trying to build some game momentum, right? कि भाई put a string of 5, 6, 7 starts together, कि थोड़ी match fitness बन जाए ना, उसके बाद then you can argue. Starting level again you would question now, because Koulibaly has been better in recent weeks, but how would you not have Badiashile or Fofana over him? Anyone could argue. Potter, man, again going back to the same thing. Like, why would you start Ruben Loftus-Cheek over Zakaria? Why would you start Koulibaly over Badiashile or Fofana? It's like उन्होंने वो 2-3 टीमें बनाई हुई हैं कि भाई रोटेशन करनी है सारी टीम्स की ताकि सबको बारियां मिलती रहें. तो वो वो तुक बनता है नहीं बनता, वो नेक्स्ट बैच आ जाता है प्लेयर्स का, फिर अगले मैच में वो बिल्कुल बदल देगा यार. पता नहीं यार, वो हम करते थे. मैं पहले ना, जब when I used to not do YouTube and all, वो रहता था मन में कि यार ये गेम में ये होगा, स्टार्टिंग लेवल, नेक्स्ट गेम में ये होगा. बट फुटबॉल इज नॉट अबाउट दैट. ऑन आप you are training with them, you are seeing how they are performing. So it's clear कि Fofana, like Mikhail said, has actually stood out in the last performance. Same with Badiashile ने बहुत ज्यादा impress किया है actually. तो ऐसा नहीं कि Koulibaly has really overtaken them all of a sudden. पता नहीं यार, these are questions. David, they are for different things, right? Wesley Fofana is one for the future. Koulibaly is one for the present. लेकिन वो in the present Premier League में he's struggling. आज उसको येलो कार्ड नहीं मिला, बड़ी अजीब सी बात है, बड़ा अजीब सी फीलिंग है कि उसको येलो कार्ड नहीं मिला. लेकिन आमतौर पे वो 5 मिनट में येलो कार्ड ले चुका होता है पहले. So that's पहले हाफ में एटलीस्ट ले लेता है येलो कार्ड usually. So hopefully he's learning and he's trying to understand, able to work on those areas जहाँ पे वो थोड़ा सा lag करता है. लेकिन he's the experienced guy. Champions League में he put in a good showing against Dortmund as well. So there is a player there. So one understand. And Badiashile again is one for the future as well, in that other position. So Fofana and Badiashile could be your future pairing. So I'm liking that prospect. If we just be patient with these two guys, present में Thiago Silva and Koulibaly can give us the depth in those positions, or these guys can be the depth, and those guys can be the starters. लेकिन वो obviously एक उनमें से Badiashile is not in Champions League, तो उसको अगर आप Premier League में नहीं खिलाओगे तो कब खिलाओगे, right? So वो थोड़ा सा question mark है, yes. I don't know कि वो are they trying to appease Koulibaly a little bit maybe,
यही प्रॉब्लम्स है ना कि अब समझ नहीं आती जब आप मैच सिलेक्शन देखते हो तो आर दीज पॉलिटिकल डिसीजंस कि भाई इसको खुश रखना है, इसको गेम खिला दी, इसको साइड पे कर दो। अब इज इट बर्ली पॉटर, पता हो नहीं यार सकता है कि इन मतलब। पे प्रेशर्स हो ना कि भाई हमने इसको रिन्यू करना है, इसको जरा गेम टाइम दो थोड़ा, या इसको हमें नहीं चाहिए तो फॉरगेट अबाउट हिम, इस पे टाइम जाया ना करो। तो यू डोंट नो, आज लगा था मुझे कि ओबामा यंग आ रहा है, डिड ही कम ऑन द पिच? या ही केम 82nd मिनट में आया ना वो और मुड्रिक। भाई एक सेकंड मैं थोड़े कमेंट्स ले लेता हूँ क्विकली बिफोर यू एंड। आफ्टर बाय द वे ये लाइनअप दिखा रहा है भाई, किक ऑफ हो रहा है मैनचेस्टर एंड न्यूकासल का कैराबाओ कप फाइनल। पीपल हु आर न्यूट्रल्स यार डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट द लाइनअप एंड स्कोर लाइन। सॉरी मैं रिएक्ट नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ व्हाट हैपेंड टू चेल्सी टुडे, बट डू लेट मी नो प्रेडिक्शंस। जब्बार भाई बोल रहे हैं आफ्टर लास्ट प्रीमियर लीग टाइटल वी हैव स्पेंट टोटल 1.5 billion, still not have won the Premier League till now. What was the reason? Jabbar bhai, you don't actually win Premier League just by spending. In fact, it has never been that way. Never been. मैं clearly बोलता हूँ. Yes, it certainly helps. You eventually build that team, and money obviously helps. मैं नहीं बोलूँगा it doesn't help. But what has been lacking for the Premier League is what you need, that week in week out mentality, and that is exactly what we don't have for a while. Cup mentality we have got that, but we don't have that doggedness of week in week out. जो used to be with Conte, Jose Mourinho, or even Ancelotti to some extent. Even I would say like Ranieri kind of got us kind of close in the season that he was sacked just before that. लेकिन वो week in week out वाला चीज नहीं दिखा था हमें for थोड़ा the सा last few. टुकल में भी देखा था थोड़ा सा शुरू में, when he took over. हाँ We स्ट्रक्चर played well. रखना and all those We, things. we played well in the Premier League as well. But we never figured out how to score goals under Tuchel. वो एक गोल करके, दो गोल करके मैक्सिमम, दो गोल भी कभी कभी होते थे, एक गोल ही यूजुअली होता था. So otherwise clean sheet and one goal, clean sheet and one goal was how we were playing. लेकिन वो they were not able to come back in the new season under Tuchel and show any of that. बिल्कुल भी वो एनर्जी नजर नहीं आई. तो अब ठीक है, you can argue कि there was so much going on around the club, and there were people got distracted. इतनी highs देखे कि you went and won the Champions League with a bunch of new kids and a manager that was 5 months old to at the club 5 months old. So वो एक अजीब circumstance था कि अब you have all these players who have gone and won the biggest trophies that players dream of. तो अब उनको अपने how do you get them motivated again? It was a challenge. अब बीच में new ownership आई हुई है, उनके साथ बैकरूम में जो भी उसकी behind the scenes टुकल की लड़ाइयाँ हो रही हैं या ठंडी गर्मी हो रही है, that was not obviously helping the situation either. But Conte के अंडर we were week in week out, we knew what we were doing, how we were going to play. उस वक्त तो लीग को समझ भी नहीं आ रही थी. I think Fabregas भी था, तो थोड़ा सा वो एक मैजिक टच था between Hazard and Fabregas कि we had the ability to unlock games. वो अभी नजर नहीं आती आजकल हमें. थोड़ा सा I must be honest, Enzo Fernandez, I know big words, लेकिन Enzo Fernandez gives me a lot of Fabregas, young Fabregas vibes. अभी He can do the dirty work. early है. He's one for the future. No rush. No rush. We did the right thing to go find a player that gives us something more in midfield than what we had. ठीक है, अगर हम जकरिया को tie down कर लें और जकरिया can stay fit, I think those two can do good together over the years, right? लेकिन I still feel that we need one more signing in that area, somebody physical again. क्योंकि जकरिया in my mind fitness wise question mark है थोड़ा सा मुझे कि I don't know if he's going to be fit consistently. तो Kovacic को रख लो, लेकिन Kovacic, you know what you're going to get from Kovacic, right? So I'm almost looking like somebody in a Zakaria profile जो कि थोड़ा Enzo or Kovacic will not work together. It's either one or the other. They're more similar than complementary, right? तो वो दोनों में एक ही tactic है. I would argue कि Enzo की जो ceiling है वो Kovacic से शायद ज्यादा है, right? Exactly. क्योंकि उसकी passing is better. तो but Kovacic currently ठीक है, immediate performances aside, क्योंकि वो वापस आ रहा है from injury, तो उसकी भी performances अच्छी नहीं है. लेकिन generally speaking, currently he is more press resistant than Enzo. He doesn't give the ball away like Enzo does. Enzo जो है वो थोड़ा सा अभी rash है अपनी pass selection में कि वो he tries passes जो कि in a Chelsea team you know better, you should know better कि भाई ये वाला pass try करोगे तो intercept होने का chance है, don't do it. But that doesn't mean don't do high risk passes. It means just pick जो safe pass होता है उसमें भी अगर आप अपनी possession lose कर जाओ तो then that's irresponsible, right? कि आप यहाँ पे you didn't have to lose the ball. Why did you lose the ball? अगर आप एक long ball try कर रहे हो या एक through ball try कर रहे हो और वो intercept हो जाए, that's different. लेकिन जब आप एक east west pass देने की कोशिश कर रहे थे और वो या एक diagonal pass देने की कोशिश कर रहे थे वो भी intercept हो जाए,
So then that's a little bit, that's something that I expect he will learn not to do. Enzo will learn not to do in the future. There are moments when he's showing his inexperience as well. Not just That is where you need someone next to him who's like having that physicality and coverage. and somebody that can show him, okay, yeah, this is how we do it here, Correct. right? ये वाला नहीं, but try this one next time, yeah, try that one. तो वो थोड़ी सी synergy भी चाहिए होती है, थोड़ा सा manager has to be on the touchline. Imagine having a Casemiro next to him, bro. I know बोलना नहीं चाह रहा, but that's the reality. That kind of profile is what he needed. हाँ, तो he had an immediate impact, right? So वो ठीक है, मगर is he one for the future? Casemiro, no, he's one for the current, present 1 season, 2 season के लिए he's a solution. लेकिन वही मैं वहां पर I don't agree with Burley project यार. इतना future कर रहे हैं भाई. What about the current? Are we spoiling our future because of that? Too much future. You cannot be thinking 5 years ahead or 3 years ahead. The stakes are too high. You have to, and the thing is, it was doable. We could have stayed in Europe this league. मेरा नहीं ख्याल होगा. I don't think we will go to Europe this year or next season. But not to say that I don't want our team to. I do want us to reach Europe. लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि होगा. I just don't see it coming together unless they fire to Potter. वो देखी जाएगी. That's a different scenario. New manager bounce आएगा, थोड़ी fresh tactics आएंगी, तो हो सकता है फर्क पड़ जाए. We are able to climb back up the table. अभी मुझे नहीं दिख रहा कुछ. Honestly, Ankit, I don't see us putting a string of 3 points together. कितनी गेमें रह गई हैं in the season? How many games? What was the match date? 13 games और है. 25th match day था आज. So games तो हैं अभी. We have a lot of games still. 1/3 of the season left. लेकिन it's going to be tough because we're going to play the big six. I think still. Well, आज हमने एक को खेल लिया. Tottenham को खेल लिया. हार गए. उनको भी top 4 बना दिया. वो तो खैर यार. The thing is कि they are doing what they do normally, which is be there or thereabouts in contention for top 4. We are the ones that are the anomaly right now. Liverpool are the ones that are the anomaly right now. Tottenham are just doing what Tottenham do. They're kind of in that mix between Europa League and 3rd, 4th spot. It comes down to the final few games of the season. Who's able to put points together towards the end. लेकिन अभी gap बहुत ज़्यादा है between Chelsea and even Tottenham. Tottenham are like 41 points. या आज 44 points पे चले गए शायद. So we are stuck at it becomes a 6-point swing in that sense. If they are 4th and we are chasing them, then that's a big swing today. It's from a table perspective, we took a big hit today. Absolutely. But anyway, yaar, Mikhail, thanks for coming on. Yaar, mera to I lost it at one point because of the referee starting with, and then our own performance, and of course, then conceding and not coming back, and Potter's tactics. Yaar, but take a chill pill, Rahul. क्योंकि मैं बता रहा हूँ क्यों it's not worth it to take it on your own health. You haven't Chelsea था ना, इसलिए हो जाता है यार. बहुत सारे सब्सक्राइबर्स यही बोल रहे थे ना, मतलब I know maybe I overdo at times in certain situations, but उसका आधा भी अगर प्लेयर सोचे ना भाई, if they feel for the club, and that is what hurts me the most. यार अगर तो आप प्राइम ड्रॉगबा और प्राइम लैम्पार्ड को इस तरह की या प्राइम टेरी को इस तरह की परफॉर्मेंस डालते देख रहे हो, फिर तो मैं भी एग्री करता हूँ कि बनता है रैंट. लेकिन ये इन्होंने तो आज तक कुछ दिखाया नहीं, तो इनसे नाराज होने की क्या जरूरत है भाई. बट वही मैं बोल रहा हूँ ना, आई एक्चुअली से दे नॉट प्राइम देयर, लेकिन रीस जेम्स, लॉफ्टस चीक, इवन टू सम एक्सटेंट चिलवेल, स्टर्लिंग, दीस आर पीपल हु वुड अंडरस्टैंड व्हाट इट मींस टू प्ले इन अ स्पर्स चेल्सी मैच इन अ 6-pointer. उन्होंने नहीं दिखाया. कोई एक प्लेयर आपने ऐसा नेम नहीं किया जो कि इज अ होल प्लेयर. They are all either half players right now due to injury or due to skill or tactics or whatever you want to say. So, Ruben Loftus-Cheek, Chilwell, Reece James, they are all suffering from injuries, coming back from injuries. You cannot expect them to play at 100% right now. Thiago Silva got injured. The only man who was caring, he got injured and he went off. We know what we get from Thiago Silva, and hopefully he's going to be fine. ज़्यादा बुरी ना लगी उसको. Actually, when he fell, तो एक तरफ से उसको कुलिबाली ने एक घुटने पे नी मारा, दूसरी तरफ से when he fell, तो हैरी केन fell on top of him and Harry Kane fell on his boot. तो जब when he fell down, तो the boot was already stuck under Harry Kane and उस नी को पकड़ा उसने फिर. So that means कि वो ligament में कहीं strain हुआ है कोई. So hopefully it's not too serious and he's able to rest a little bit and recover. लेकिन वो commentators कह रहे थे कि कुलिबाली ने injure किया उसको. So Koulibaly did hit him, but it was the other knee. जो knee Harry Kane, यार, I thought.
जो नी उसने पकड़ी हुई थी उस पे हैरी केन फेल ऑन हिज फुट एंड commentators so यार that is another day we can speak यार, but seriously man I was listening to it यार, अकेला जब कर रहा था ना I was listening to it, that ZH moment itself, मतलब they made sure that they didn't even speak about what has happened throughout the first half. बात ही नहीं की कि उसको लगातार 3 लोगों ने धक्के दिए, उसको आके किसी ने चू भी नहीं की. The minute he put his hand out, oh, this should be a red card. This should be a red card. Right away, this should be a red card. तो ये आपकी कमेंट्री है. मैं तो सुनता ही नहीं हूँ कमेंट्री, आमतौर पे हम वॉच अलॉन्ग ही कर रहे होते हैं. I don't bother listening. Because नहीं, मैं आज अकेला था तो बोला चलो आज कमेंट्री सुनते साथ साथ में हम रिएक्ट करेंगे. थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन. मैंने सुबह मेरी आंख खुल गई एंटिसिपेशन में कि गेम है आज. So then I was looking, मैंने कहा अंकित ने कुछ स्ट्रीम का एडवर्टाइज भी नहीं किया हुआ. नहीं मैं खुद एक्चुअली थिंग इज आई हैव बीन अनवेल ना लास्ट फ्यू डेज, सो आई सेट अप द स्ट्रीम वेरी लेट, सो बाय दैट टाइम आई थिंक इट वाज लाइक वेरी अर्ली मॉर्निंग फॉर यू, सो मैंने मैसेज नहीं किया, बोला मैं उसके बाद एक्चुअली देन आई वाज स्टार्टेड वाचिंग द गेम, तो मेरी भी नजर नहीं थी YouTube पे उस वक्त, बट आई वुड हैव कम ऑन अर्लियर. But I feel better soonest. We all appreciate that you come on even when you're not up to it. So hats off. ये determination चाहिए हमें from our players. Right guys? That is what I want. like इसका आधा भी कर दे तो I'm okay यार. But anyway, thanks a lot यार भाई. Everyone I know हम हंस रहे. We try to be positive again. You guys try to be positive. But whoever you are who are neutrals, again thanks for being there. भाई मुझे मालूम है इंडिया में कैराबाओ कप फाइनल टीवी में शायद नहीं आ रहा. फैन कोड में आ रहा for people who are wanting to watch it. 8 minutes are down on that. अगेन आप लोग बोले उसमें क्या हो रहा है. आई थिंक दैट विल आल्सो बी अ बैटल फॉर मी, मैनचेस्टर एंड न्यूकासल. क्या बोलते हो यार, मतलब डू यू वांट टू सी न्यूकासल विनिंग और मैनचेस्टर विनिंग, और यू डोंट केयर मिकाइल? I honestly don't care. honestly, I'll tell you, मेरी टीम अच्छा नहीं खेल रही. I'm not watching football. So I don't care कि कौन जीतता है Premier League. I don't care कौन जीतता है Champions League, unless we are in there still, which we are still. So hopefully, we win it. But I think it's a bridge too far right now. लेकिन I honestly don't care. मुझे पता है कि like table में there is a good title race forming up. So just for that sake, one is interested. लेकिन यकीन करो कि जी नहीं चाहता फुटबॉल देखने का, क्योंकि अपनी टीम नहीं अच्छा खेल रही आज. I hear you absolutely. But कोई नहीं, अपन तो यार करेंगे. It's a big game. It's a big game. 100%. It's a big game. And Man United Ten Hag seems to have given some life support to Man United as a club after many years. So it's a good storyline to follow. Just from a footballing perspective, not as a Chelsea fan, but as a football fan, it's nice to see a big club starting to, two big clubs actually. I would argue Arsenal have been, kind of in the doldrums for 10 years or so since they moved the stadium. So it's nice to see some of the traditional big clubs starting to compete again, right? I would still say we are good enough to beat them once we get our own house in order. लेकिन it's nice to see that they're back in the conversation again, क्योंकि काफी जलालत हुई है इन दोनों clubs की over the years. So it's good to see them. Or Newcastle, speaking of old clubs that haven't performed, Newcastle to be in the conversation is I think 15-20 years के बाद Newcastle का नाम आना शुरू. वो 90s में था बस, उसके बाद थोड़ा सा they've gone down and come back again. Early 2000s में like Jose का जो era था, Roman के era में, Newcastle against Chelsea so they should always do well. Newcastle were almost like a bogey team for us. They always used to be a good game. But now they are back up there in the Europa League and Champions League spots, competing for. So it's an exciting time for the Premier League, 100%. So from that perspective, maybe the match will be on today. But or bhai, everyone watching, I will do a review on it. So I'll drop a review video tomorrow morning. Of course, if you're expecting me to rant a little bit about Chelsea, I think rather what Mikhail said, I'd rather take a break for tonight and then come back on this tomorrow. Rest up, save your energy, Ankit. The one thing I want to request you is you need to do a scouting episode for managers for Chelsea. Actually you need to do that. We'll have a entire stream on that. Certainly we'll do that. Again, big up to Mikhail OP in the chat, everyone. And again, big up भाई सब लोग जो भी यहाँ पर आए, definitely like करना मत भूलना. Yes, it's not a good day, but again, like is what keeps us going. That's the YouTube algorithm. But again, we'll be back. Always a fan channel for all to see. All the best for you Manchester United fans in the chat, as well as Newcastle fans, if any. But by Chelsea, just try and stay positive. मैं बोलता हूँ watch a movie tonight. Watch a comedy movie is what I always suggest these days. So go with that. चलो, up the Chelsea no matter what.